to kindly let your friends know that we have an amazing session planned for you. Please let them know that their attendance is mandatory and their presence here is highly appreciated. The 13th Bharatiya Chhatra Sansad is indeed a pivotal step in the journey of involving the youth, that is you, in our democratic processes. Though as we are all well aware that since all of you cannot come to the stage to discuss issues, we do have something formulated for you, the Youth to Youth Connect. It is one of the biggest highlights of Bharatiya Chhatra Sansad, where our youth can gather in smaller rooms and discuss solutions to issues of national matter and interest. I request the technical team to kindly display the schedule of the Youth to Youth Connect. Here, as you can see, 6 various issues will be addressed in rooms of the Maitriya building, which is right behind this main stage. I request you all to kindly take a photograph of the same. As you can see, for room number 101 and 102, higher education in the era of AI and ChatGPT will be discussed. Substance abuse and its impact on youth in room number 112 and 113. Carbon neutral environment in room number 201 and 202. Social media, facts or fakes in room number 212 and 213. Waste management in 301 and 302. And urban transportation in room number 312 and 313 of the Maitriya building, which is right behind this main stage. It is also instructed that after the session ends today, we have 3 sessions planned, so after all the 3 sessions are over today, you all are instructed to kindly immediately report to these rooms for the Youth to Youth Connect. So to all the student leaders sitting here, kindly select one of the given topics and be a part of formulating solutions to these national issues and engage in integral discussions of the Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much, everyone. And once again, it is a humble request to all of you to enthusiastically participate in the Youth to Youth Connect. अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर
भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा। सानी पम ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ग रि ग रि सा नि प नि सा रि सा नि सा ग ग रि ग रि म म ग रि ग म प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सानी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा सा नि सा ग ग नि ग म ग नि ग नि सा नि ग नि सा नि प नि सा नि सा नि सा ग ग नि सा नि प म ग नि ग प प म ग म ग नि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना 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 चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा सनी पम ग म नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ध रि ध नि सा नि प नि सा रि ध नि सा ग ग रि ध रि म म ग रि ग प प म ग म ग रि म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद। Second session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to request all of you to quickly be seated. I'm going to request all of you to rise in your seats and welcome the dignitaries as they arrive.
I request all the dignitaries to join hands for ringing the bell of democracy, an important tradition of the platform of Bharatiya Chhatra Sansad. I request all the student leaders to rise in their seats as we welcome the dignitaries on the dais. I request all the dignitaries to join hands for ringing the bell of democracy. It is indeed our honor and privilege to have as the chairman of the session, Shri Basavaraj Horati ji, spiritual leader, author, Vedic scholar, Swami Mukundanand ji, Dr. Vikram Sampad ji, and Dr. Suresh Garimala ji. My friends, this session, I request all of you to be seated, please. This session is Yugantar, Youth in Transition. The concept of Yugantar, Youth in Transition, encapsulates the dynamic shift in the lives of young individuals from the end of 20th century to the present day. And to discuss some of the important and interesting aspects of this transition, we have tall personalities here present. As we can see, the founder of Bharatiya Chhatra Sansad, Shri Rahul V. Karad, has arrived, and everybody, all the dignitaries are joining hands for ringing the bell of democracy. An important tradition of every session of Bharatiya Chhatra Sansad. A big round of applause, my friends. The first bell of the day is ringing, giving a loud and clear message of strengthening the democratic fabric of our nation. Youth in Transition, Yugantar, second day, second session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I request all the dignitaries to kindly come up stage for lighting the traditional lamp. I request the chairman of the session, Shri Basavaraj Horati ji, Shri Rahul V. Karad sir, Swami Mukundanand ji, Dr. Vikram Sampad ji, Dr. Suresh Garimala ji, Shri Chetan Anand, Dr. Santosh Kumar ji, Dr. Purnima Inamdar, Dr. Neeraj Mahindru, Dr. Surbhi Razdan, Dr. Shiv Prakash Barve, Dr. Rohini Kale, and all the student speakers to kindly come on stage. I request all the dignitaries to join hands for lighting the traditional lamp, a very important tradition of our country. जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जो भी कमी है हम भर देंगे जो न हुआ है हम कर देंगे भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र. A big round of applause, my friends. The lamp for the first session of the day is being lit, indicating that it will show us the path to the future. It will guide us in our journey forward. All the dignitaries are joining hands for lighting the lamp. Student speakers are requested to accept the chairs. Student speakers. Thank you very much. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs. My friends, at the close of the 20th century, global youth faced challenges arising from the political unrest, economic inequalities, and limited educational opportunities. In Bharat, the youth population grappled with the high unemployment rates,
by the skilled job market mismatch and confronted multifaceted challenges such as inadequate infrastructure and social inequalities. Today, we all have gathered here to discuss some of the pertinent issues of these times where students are going through a great transition. And the name of this session is also very, very indicative, which is Yugantar. My friends, before we start with this session formally, as per the traditions of this platform, I would like to request all the dignitaries on the dais and all the student friends of the dais to please rise in your seats for national song Vande Mataram, which would be followed by the World Peace Prayer. So I would like to request all of you to rise in your seats for national song Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram. Shubhra-jyotsna pulakitayaminim Pullakusumita drumadala shobhinim Suhasinim sumadhura bhashinim Sukhadam varadam mataram Vande Mataram Vande Mataram. I request everyone to fold their hands, close their eyes. I request all of you, please calm down, fold your hands, close your eyes, and wholeheartedly participate in World Peace Prayer. नमो जीयाद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातूति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you very much. ॐ My friends, we all are student leaders. We all are participating in Bharatiya Chhatra Sansad to shape the future political landscape of our country. Friends, let us imagine a leader who wasn't the tallest in the crowd, but whose heart was as big as sky. That was Lal Bahadur Shastri Ji.
A man who showed young folks that the greatness comes in all shapes and sizes. Shastriji wasn't born with a silver spoon. He fought for India's freedom, joining the Salt Satyagraha as a teenager. I hope you remember from the books of history the March to Sea. Shastriji was there, his young feet kicking up the dust for freedom. Shastriji wasn't a show-off. He lived very simply, proving that leader doesn't need fancy clothes, a big house to win hearts. He was honest, kind, and always ready to help. So my friends, today, on the occasion of his death anniversary, let us remember Shastriji, but learn from him. Be like him, brave, honest, and ready to fight for what's right. Even you are small, your actions can make a big difference. Just like Shastriji, a simple man who can cast a giant shadow on India's history. And I would like to say 2 lines in his honor. भारत के सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, भारत के सपूतों हिम्मत दिखाए जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ. My friends, on this occasion of the death anniversary of Shri Lal Bahadur Shastriji, I would like to once again request all of you to rise in your seats for a few moments as we pay homage to late Shri Lal Bahadur Shastriji. Thank you. And now, my friends, let us start with the second session of day 2 of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, Yugantar, the Youth in Transition. And to begin with this session, I would like to request the Dean of School of Liberal Arts, MIT World Peace University, Dr. Santosh Kumarji, to kindly propose the welcome address. Good morning. I, on behalf of the founder president of this esteemed institution, Professor Dr. Vishwanath Karad, our very dynamic executive president, Shri Rahulji Karad, the management, the vice chancellor, the leadership of this university, I extend a very hearty welcome to all of you, dignitaries on the dais and off the dais. It's my proud privilege to extend this welcome to Shri Basavaraj Horati sir. He is Honorable Chairman, Karnataka Legislative Council. Shri Vikram Sampath, renowned historian and columnist, Swami Mukundananji, Professor Dr. Shri Suresh Garimala sir, Shri Chetan Anand, and the 4 students leaders who have traveled from all over the country to deliver their lectures today, Saili Ghante, Suraj Sharma, Tulip Sharma, and Nandita Jamwal. Yugantar is a very significant theme of this particular session, and I'm personally looking forward to hearing all of them. Probably the perspective of the youth is changing about politics, and politics itself is changing. With these words, I extend my welcome once again, and looking forward to this exciting session, with all of you. Thank you so very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your words of welcome. And now, as per the tradition of this platform, I would like to request the founder of this platform, Shri Rahul V. Karat sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chairman of this session, Honorable Chairman of the Karnataka Legislative Council, Shri Basavaraj Horati ji.
Please put your hands together and welcome, with a big round of applause, my friends, all the dignitaries present here today. Shri Basavaraj Horati ji, Honorable Chairman of Karnataka Legislative Council. Next, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome renowned historian and columnist Dr. Vikram Sampath ji. My friends, it is indeed our honor and privilege to have such tall personalities with us for this session. Please put your hands together for Dr. Vikram Sampath ji. Thank you, sir. Thank you very much for your presence here today. I would now like to request sir to kindly felicitate and welcome spiritual leader, author, and Vedic scholar, Swami Mukundanand ji. Indeed, our honor and privilege, sir. I would now like to request sir to kindly felicitate the President of University of Vermont, Dr. Suresh Garimala ji. Dr. Suresh Garimala, President of University of Vermont, Founding Director of NSF Cooling Technology Research Center, Distinguished Professor Emeritus of Mechanical Engineering. Thank you very much. And my friends, before we proceed any further, in order to understand more and in detail about this session, I would like to request my technical team if they can please show us a curtain raiser video about this session. Today, we dive into the dynamic journey of Indian youth in the 21st century. Rewind to the 20th century. A canvas painted with political unrest, economic disparities, and limited education opportunities. A time of unemployment, skill mismatches, and social inequities. Welcome to Yugantar, Youth in Transition. Fast forward to the 21st century, where the narrative evolves beyond technology to encompass a spectrum of achievements. Our youth are excelling in art, culture, entrepreneurship, and social activism. Challenges persist. Jobless growth, skill gaps, and security concerns. But the heartbeat of our youth resonates with resilience and innovation. Let's navigate through key discussions. Number 1. Does our focus remain steadfast on social inclusion, skill development, and providing high-quality education for comprehensive youth development? 2. How crucial is adaptability for today's youth, not just in technology, but across various facets of life? 3. Do we require informed policies, targeted investments, and inclusive initiatives to support youth during this period of transition? Now let's step into the hearts and minds of today's youth. How do they perceive themselves as individuals, their relationships within families, and the evolving institution of marriage? How do they navigate societal expectations, contribute to social change, and connect the essence of patriotism and love for their country? Further, what about their global perspective, their reflections on the religion and spirituality, and their aspirations for a world at peace? Join us in Yugantar, where we unravel strategies, face challenges head-on, and explore the extraordinary potential within the holistic experience of the youth of India. Thank you very much for that video. And my friends, let me remind you, this session is for you, Yugantar, Youth in Transition. And my friends, on stage we have a historian, we have a president of a university, and we have a spiritual leader, a spiritual mentor. So this is going to be an exciting opportunity for all of you to ask as many questions as you like. And I hope you all remember that the podiums which are there on your left and right hand side are for you to ask questions. So I request all of you to reach out to those podiums, submit your questions, and I hope your question is good enough to be asked from this stage. Let us go ahead and begin with this session formally, for which I would like to invite the chairman of this session, Shri Basavaraj Horati ji,
But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Shri Basavaraj Horatti, a seasoned politician from Karnataka, currently holds the esteemed position of the chairman of the Karnataka Legislative Council. Remarkably, he has won 8 consecutive terms since 1980, making him the longest serving member of the council. Notably, Shri Basavaraj Horatti has served as the Minister for Rural Development, Panchayat Raj, Information Technology and Small Savings from 2004 to 2006. Additionally, he took on the responsibilities of the Minister for Primary and Secondary Education from 2006 to 2007. Shri Horatti, a progressive agriculturist with a keen interest in horticulture, has travelled extensively, gaining insights from countries like England, France and Switzerland. Committed to the development of education, he holds a Bachelor of Arts and a Master's of Physical Education degree. His journey began as a physical education teacher in Hubli before transitioning to a prominent political role. Let's extend a warm welcome to Shri Basavaraj Horatti. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the Honorable Chairman of Karnataka Legislative Council, Shri Basavaraj Horatti ji. Honorable dignitaries, my dear student friends, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure and proud to be part of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to express my heartfelt gratitude to Professor Vishwanath Karadji and Sri Rahul Karadji for inviting me and providing this platform from our future leaders to explore themselves and share their point of view and ideas about our parliamentary system. MIT World Peace University has taken up a great initiative to encourage our youngsters to stand up for themselves and choose the best stream for themselves. I am here today to address a topic of utmost important and relevant to our society, Yugantara, the page of transition that our youths are experiencing. Everybody well aware that student power is a nation power. Chhatra Shakti, Rashtra Shakti. The youths of our nation are not merely a demographic statistic, they are the future of our nation. As we witness the dynamic and ever-evolving nature of the world around us becomes imperative to understand and appreciate the challenges and opportunities that accompany this transition. Yugantara, or youth in transition, symbolize the transition our young generation undergoes as they cross the complexities of modern world. This page marked by rapid technological advancement, shifting culture patterns, and reluctant pursuit of knowledge. Our youths today are not confined by traditional boundaries. They are global citizens concerned to the world in many ways, which was unimaginable just a few decades ago. In this era of Yugantara, the youths are grabbed with dual challenges, providing their culture, roots, while embracing the winds change
bowling, bowling from every corner of the global. It is delicate balance that requires a nice understanding of our heritage and willingness to embrace the diversity that defines our world today. As a leaders and policymakers, it is our responsibility to provide a conducive environment that allows our youth to cross transit successfully. Education plays a key role in shaping the outlook of youth. We ensure that our educational institutions not only equip them with the necessary skills but also immeasurable values that protect empathy, tolerance, and sense of global citizenship. The ability to adapt the changes, think creatively, and tolerance across borders essential in the Yugantara. And our education system must be reflect these priorities. I am happy to share that in my 43 years of political career, I have been getting elected from the teachers' constituency. I am honored to share that since 1980, I am consecutively winning in the election from the same constituency, and this is my 8th constituency term as MLC, and it has created world record, and my achievement is celebrated in London World Book of Records and also Limca Book of World Records. See what I am telling you. I born in a small family in the village. Even after the 7th, I am not able to go to high school. The high school was 9 kilometers away from my village. So one zeal was there. So I should achieve something, not like Vishwanath Karade, but I should achieve something. So I started work for that to become a leader of the state. So I had an opportunity to serve my Karnataka state as a Minister for Education, Law and Parliament Affairs, Science and Technology, Rural Development, Panchayat Raj, and many more departments. As Education Minister, I contributed a lot to reform the education system in Karnataka. During my tenure, I have addressed almost all problems of the teachers community and the students community. During my period as an education minister, I was instrumental in appointing 24,768 primary school teachers, 12,994 high school teachers, 5,551 PU college lecturers. All put together, I have appointed more than 48,313 teachers in government and 7,200 aided. Why I am telling about this? When I was a student, when I passed the 7th, I am not able to go to the high school. My younger sister was there. She was studying 5th standard. After 7th, she could not go to the high school. That in the house, every father and mother, parent, those days, they want to marry the daughters immediately and settle it. So in this connection, she could not go to the high school. Then she married, and in the early age, she married. So throughout life, she was suffered. When I became a minister, I was remember that situation. So first I thought, in our state, no lady, no girls away from the education. They are not away from the education. So first priority, I appointed a committee of the education secretary and others. How many high schools need for the girl students? No girl should be away from the school education. So they have given the report, 1,500 high schools is needed for these girls. So I started 1,039 high schools, and I have given the cycles and midday meals
everything was given for the encouragement of the girls' education. So today, girls are equal to boys and women are equal to men. In all field, women are coming up. So it is a priority to, if you give the priority to the girls, they are the nation builders. I am appreciate so many girl students are made the IAS, IPS in our country, in our state and country. So I feel proud to share with you during my period of only new transfer policy for teachers was introduced, which was widely appreciated throughout India, and many states have adopted our transfer policy for teachers. In our country, there is no transfer system, particularly in education. Those appointed as a teachers, even ladies are more teachers, the officers, they can transfer anywhere. They are not mentally prepared. They are no good atmosphere. So it is a problem with the lady teachers and teachers also. So I made a bill and passed a bill in the Assembly and Council. Teachers transfer should be made according to B and medical seats allotted like that. Council system. I introduced the council system for the transfer of teachers. Throughout India, 9 states have adopted this policy. It was very important in the country. So the teachers should be always, whenever they are going to classroom, they should work peacefully. Though transfer system is also one of the trouble for the teachers. So I eradicate that trouble. In Karnataka, Science and Technology Academy was started for first time in India during my period. Separate law university was established and Human Rights Commission was started during my tenure as a law minister. I am happy to inform you that during my period, Circuit Bench of Karnataka High Court established in Dharwad and Kalaburgi. As a minister of my portfolio, I have rendered my service to the fulfillment of ability and strength. Furthermore, the transition into adulthood bring with economic challenges. We need to create an environment that encourages entrepreneurship, innovation, and skill development. By doing so, we empower our youths not only getting employment opportunity, but also in contributing the economic growth of our nation. Yugantara also characterized by the power of technology, our youths are more connected than ever before, and which is this connectivity comes the responsibility to use technology-wise. As lawmakers, we must enact policies that harness the potentiality of the technology for the betterment of society, which ensure the protection of privacy and protection of the misuse. In this era, technology a point equalize its impact on environment in democratizing key sectors, health, education, and social security have all experienced in living effort breaking traditional matters. Bangalore and Pune stand as sharing example, emphasizing as the startup capitals of India, the demonstrating how technology foster innovation and employment growth. The transition is not just a local phenomenon, but a global trend. The standardized information and opportunity, though technology empowers involvement and communication worldwide. As we cross this digital component, it is cultural to tackle the technology potential for individual progress and bridging the
gaps, creating more equality in society. As I conclude my address, I would say that the phase of the Yugantara is not challenge, but it is an opportunity. It is an opportunity for us to mold a generation that is resilient, comparison, and capable of knowing the examples of the modern world. Let us, as leaders, work together and create an environment that fosters the historic development of our youth, enabling them to embrace the transition and emerge as leaders of the brightness and more harmonious future. Thank you, one and all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, Sri Basavaraj Horati ji. Thank you very much for your opening address and setting the tone for this important session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. And my friends, it is now time in this session where we confer the Adarsha Yuva Vidhayak Samman, and this time in this session we are honoring the Honorable Member of Legislative Assembly of the State of Bihar, Shri Chetan Anandji. I request all the dignitaries to join hands. The Adarsha Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA honor for the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy. Shri Chetan Anandji, the Honorable Member of Legislative Assembly of the State of Bihar, Rashtriya Janata Dal, is being conferred this award. Let's give him a big round of applause, my friends. A bigger round of applause, my friends. The Adarsha Yuva Vidhayak Samman is being conferred. सबसे पहले तो मैं MIT का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, राहुल कराड़ जी का, इनके फादर का, सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने ये जो इनिशिएटिव है ये लिया है। और ये इनिशिएटिव से मुझे लगता है कि अनेकों युवा वर्ग के जो लोग हैं वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपसे सीखा है, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि थीसिस प्लस एंटी थीसिस क्रिएट सिंथेसिस, जो आप ये सिंथेसिस लाने का कोशिश कर रहे हैं उसके लिए MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी युवा लोग हैं सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी गार्जियन हैं उनसे हम लोग सीखें। हम लोग आगे के फ्यूचर हैं और फ्यूचर को आगे कैसे ले जाना है वो हमारे हाथ में है। तो अपने जितने भी युवा भाई हैं सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग डट करके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आप पे ये देश आश्रित है और इस देश को अगर आगे ले जाना है तो आप सभी को अपनी जिम्मेवारियां उठाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much. I request everyone to kindly be seated. My dear student friends, continuing the same spirit of the 13th Bharatiya Chhatra Sansad and today's session Yugantar, Youth in Transition, we now move forward with the student speakers. To begin with, I would like to invite Saili Sanjay Ghante from Maharashtra to the podium. We look forward to your views. सह्याद्री पर्वतरांगांनी वेढलेल्या शिक्षणाचं माहेरघर असलेल्या हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेल्या अशा या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुण्यनगरीत मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. A very fanatic morning to the dignitaries and the vibrant youth here in front of me. This is Saili Sanjay Ghante from Dharashiv, Maharashtra. I stand before you to shed light on a crucial subject of our society, that is Yugantar, the youth in transition in Bharat. So when I look at this topic, I can see three main aspects to talk about. The first is why the youth is important. Bharat aims at becoming $5 trillion economy in the next few years, as our working force population will be reaching 1.1 billion in 2050. It is important, it is crucial that our youth is onto the right path, because they are the drivers and engine of our societal development, economic growth, and building our nation as a whole.
Now, the second topic that follows is what will bring about this change? It is important that the youth has appropriate technical and social skills. As in a nation where tradition harmonizes with modernity, how can I not talk about Shahid Bhagat Singh, who died fiercely for the independence of our nation, whose ideas made transition in freedom struggle? How can I not talk about great leader Chhatrapati Shivaji Raje Bhosle, whose vision for good governance paved the foundation of Hindavi Swaraj? It is important to know that transition is not merely a shift in age, but a profound evolution in opportunities, in aspirations, and in mindset. Now, the third and the last topic that stands is what our duties are, how we can do this. We can do this by taking active participation in different activities, by understanding what our responsibilities are, what our duties are to our nation, to our people, to our country are. And the day we realize our responsibilities, the day we realize our duties, and the day we start working hard is the day when the face of this nation will change. And let's do this. Let's do this together. Let's hold our hands, hold even harder, and let's do what Bharat was born to do. To build love, to build respect, and to generate peace. And if this would happen, Bharat will be the Vishwa Guru, the global leader. I'd like to end my say with the quote, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, Saili, for your inspiring views. I request our founder, Shri Rahul V. Karat sir, to kindly felicitate her. With that, we also have Suraj Sharma from Himachal Pradesh with us. Yugantar Youth in Transition, and this is our youth, the students of MIT World Peace University sharing their views. We look forward to your address, Suraj. की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए. यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए. असफलता तो बस एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्यों कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो तुम, मत छोड़कर भागो तुम. In the hallowed halls of democracy, where the question of young leaders looms very large. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Suraj Sharma, who have come here from the place where the spirit of mountains embrace their soul, Himachal Pradesh. Today, I'll stand here to present my views on the topic, Yugantar, Youth in Transition. Recently, I came across the words of our very own Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. When he was addressing a convocation, he said, आज का भारत एक युवा भारत है, और यही युवा हमारे देश का भविष्य है. We also hear people talking about young leaders. They say the outlook of young minds can change the government and make the government more dynamic. It sounds fascinating, right? Like a promise for a better future. But here's the thing. Promises are just the words until it turns into reality. We as a youth are full of energy. But I ask you, ladies and gentlemen, are we ready to face the real challenges that are running in our nation? So now, let's see the reality. The world is like a big puzzle. And pieces of this puzzle is being often held by those who doesn't want to see things change. Experience is another big issue. People say the youth of India is not experienced to take decisions. Some of us, even I don't agree with this. Experience doesn't always mean years in politics. It's life experiences, thinking outside the box, and understanding the current situation. Representation is another big part of the puzzle. We want everyone's voices needed to be heard, but some voices are louder than the others. Social media. We all live in a digital age where everything happens online. Social media can act as a double-edged sword. It can amplify the voices, but at the same time, it can lead to spread of misinformation. So here's a big question. Does youth have the potential to bring the change? Yes, youth have the potential. The path is difficult, but youth have to come forward. In the end, I would just like to conclude by saying,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you so much, Suraj, for passing such an influential message. I request our founder, Shri Rahul B. Karad, sir, to kindly felicitate him. We also have with us Tulip Sharma from Chhattisgarh, and we now look forward to her address. Tulip Sharma from Chhattisgarh, we look forward to your address. Jai Johar. I'm Tulip Sharma from the holy land of Chhattisgarh, the birthplace of Mata Kaushalya and the maternal home of Prabhu Shri Ram. My greetings to the luminaries present and my fellow countrymen. It's my privilege to stand on this land of the great Peshwas and share my views on the topic Yugantar, Youth in Transition. In the words of the Nobel laureate Kailash Satyarthi ji, I quote, "The power of the youth is the commonwealth for the entire world. No segment of society can match with the power, idealism, enthusiasm, and courage of the young people." I unquote. Our country's greatest resource is undeniably the youth, and that is what gives us an edge over the rest of the world. As per the UNFPA projections, India will continue to have the youngest population in the world till 2030. This is the time for call of action to harness our young talents and abilities. We have transitioned from the 20th century to 21st century, but our core substance remains the same, and that is service towards our motherland. While the previous century witnessed the sacrifice of our young martyrs like Khudiram Bose and Baji Raut, the present sings the songs of praise of our young athletes who held the Tiranga high at the Asian Games. While we set the pace to make another transition to become a $5 trillion economy, it's imperative to talk about the inclusivity of youth in all spheres of the society. The preamble of the Constitution that talks about extending justice in all spheres, that is social, economic, and political, and equality of status and of opportunity must be realized in true sense. Currently, India ranks second to have the highest number of internet users across the world. Let's turn the tables in our favor to connect our youth with not just our domestic institutions, but also global organs like the UNGA to realize the Sustainable Development Goals. Dear friends, this decade is rightfully called the decade of action because whether it is advocating for climate action or addressing gender bias, the youth has been at the forefront, and it's time that we also join the bandwagon. It's time that we give our youth an interconnected platform for self-expression that stimulates their innovation and creativity. Behind every revolution, there is power, and what truly empowers is knowledge. While initiatives like Make in India and Digital India have opened new avenues of employment, there is still a large chunk of society that is deprived of quality education and skill development. It's high time that we adopt a collaborative approach between government, educational institutions, civil societies, and private enterprises to brainstorm policies for the upliftment of our youth. Last but not the least, I would like to conclude by saying, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Thank you so much, Tulip, for this call of action. I request our founder, Shri Rahul B. Karad, sir, to kindly felicitate her. We also have with us today Nandita Jambal from the beautiful land of Jammu. We look forward to your views on Yugantar, Youth in Transition. युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं?
परिवर्तन केवल संसार का नियम नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और मुझे और मेरे जैसे कई युवाओं को एक ऐसे ही परिवर्तन की उम्मीद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सामाजिक बदलाव की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजनीति में युवाओं के जुड़ाव की। और इसी उम्मीद के साथ मैं नंदिता जम्वाल, भारत देश के अति सुंदर राज्य जम्मू कश्मीर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि देश के युवा को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जब देश के बच्चे डॉक्टर बने तब हम चिकित्सा में आगे बढ़े, जब यंग इंजीनियर्स बने तब हमने आईटी पार्क्स बनाए, और जब नौजवान फौजी बने तब हमने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे पछाड़ा। अगर आंकड़ों पर जाएं तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय युवा है, पर दुर्भाग्यवश सांसद भवन में उनकी संख्या 12 से 15% से अधिक नहीं है। शायद इसीलिए कि सत्ता का खेल ही कुछ ऐसा है। कुर्सी एक बार पाके उसे बार बार पाने की लालसा कभी खत्म ही नहीं हो पाती। ये राजनीतिक दल एवं राजनेता बखूबी जानते हैं कि देश के युवाओं की शक्ति का उपयोग कब और कहां करना चाहिए। जन आक्रोश दिखाना हो, विरोध करवाना हो या चुनावी नारे लगा के चुनाव में माहौल बनाना हो, तब तो युवा वर्ग को सबसे आगे कर देते हैं। बट जब उसी चुनाव में टिकट दे के चुनाव लड़ने की बात आती है तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस का एक बड़ा सा टैग दे के उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा, मेरा मानना है कि जिस दिन हर पंचायत में एक युवा पंच, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर ढानी, हर शहर का बच्चा भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेगा। और आज से 10-15 साल बाद भारत के समाज का मंजर बेशक अलग और खूबसूरत होगा। वैसे मुझे फक्र होता है जब मैं 30 वर्षीय चंद्रानी मुर्मू को संसद में बैठे देखती हूँ। मुझे गर्व हुआ जब 26 साल के युवक रविंद्र सिंह बाटी ने राजस्थान के शियो से निर्दलीय चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत हासिल की। ऐसे उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप हैं, लेकिन हमें ये 2 या 1 नहीं, अनेक चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब जब युवा शक्ति ने किसी बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है, तब तब समाज में मजबूत परिवर्तन हुए हैं। एक समय था जब युवा सच्चा अनुरोध पिछड़ों के लिए विरोध करते थे, और आज एक समय है कि जब युवा राजनीति का विद्रोह कर रहा है। मैं मानती हूँ दोस्तों, हमें हमेशा से दर्शाया गया कि सियासत एक गंदा कीचड़ है और हम में से कोई इस कीचड़ में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि हाथ वे ज्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से अधिक सेवा के लिए उठते हैं। तो आइए मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपने अंदर के स्वार्थ को पीछे छोड़ मानुष एवं देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। आइए हम मिलकर संकल्प करते हैं, हम राजनीति नहीं, लोक नीति यानी लोक सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए खुद के लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए, जी सके तो जी भारत के लिए। पीछे बैठे सारे युवाओं को एक बार बोलूंगी, मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। What an energy, Nandita. Thank you so much. We are so glad to have you at MIT World Peace University, and this is our youth in transition. This is our Yugantar at the 13th Bharatiya Chhatra Sansad. We also have with us today Anurag Gupta from Chhattisgarh, and we look forward to his views. चक्र समय का घूमे जब, उत्तर से ज्यादा सवाल उठे। स्वप्न हजारों देखे जो, चंद बयां इतिहास करे। वेदों के ज्ञान से और युद्ध के पुराण से, लोकतंत्र के सार में, राजनीति के सुधार में। चंद्रगुप्त की जीत, अब्दुल कलाम की उड़ान, हर परिवर्तन देता है हमें युगांतर का ज्ञान। नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता आज आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं युगांतर युवा कल, आज और कल के विशेष मुद्दे पर। युगांतर परिवर्तन की परिभाषा हो या परिवर्तन से जुड़ी अपेक्षा, यह एक युवा को अतीत से जोड़कर भविष्य की ओर ले जाता है। जब बात करें हम गुजरे कल की, तो युवाओं की कुशलता हमें इतिहास स्वयं बताती है। विशेष रूप से भारत में जहां आर्यभट्ट ने काम किया, या फिर मैं बात करूं आदि गुरु शंकराचार्य एवं गौतम बुद्ध ने जिन्होंने समाज सुधार किया, या मैं बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने हमें यह स्वतंत्र, गणतंत्र एवं लोकतांत्रिक भारत उपहार दिया।
परंतु बदलते दौर के साथ समस्याओं ने भी रुख बदला। पूरे समाज को नई बाधाओं का सामना करना पड़ा। युवा शक्ति खंडित हो गई धर्म और जाति के नाम पर, और प्रश्न चिन्ह लग गया देश के विकास पर। देश का युवा आज भी वही पुरानी आस में है, आस एक अवसर की, आस एक सुधार की, और एक आस देश से असामाजिक तत्वों के नाश की। कहीं मिलते हैं वह युवा जो सरहदों पर देश के लिए मौत को गले लगाते हैं, तो कहीं मिलते हैं वह युवा जो घिनौनी राजनीति के चक्कर में पड़कर देश में दंगे फैलाते हैं। खैर, इतनी समस्याओं के बाद भी हमारी युवा पीढ़ी एक नए मकाम पर है। चंद्रमा की ऊंचाई हो या समंदर की गहराई, युवाओं की मशाल ने हर तरफ है क्रांति की लपट फैलाई। इस सदी में तो खास तौर पर युवा परिवर्तन के मुख्य वाहक हैं। जब बात करें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की या डिजिटल इंडिया के रूप में खुद को देश और दुनिया से जोड़ने की, तो ये युवा ही हैं जिन्होंने अपनी संरचनाओं से देश और दुनिया के सारे समस्याओं का समाधान किया है। ऐसे में मैं भारत की भविष्य को और उज्जवल देख सकता हूँ। इस भविष्य की नींव उन करोड़ों युवाओं की स्वप्न है जो इस देश की महानता को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जो बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशों से बनी हो। देश हित की बात है तो देश का हर एक युवा तैयार खड़ा है। शांति और क्रांति साथ चले, यह संकल्प बांध चला है। अंत में मैं अपने कुछ पंक्तियों से अपना वाणी को विराम दूंगा कि प्रबल भीड़ है अज्ञानों की, भरना है तो कुछ ज्ञान भरो, हम शक्ति है राष्ट्रहित की, दृढ़ संकल्प सम्मान करो। धन्यवाद। Thank you very much, Anurag. And indeed, motivating speech by Saili, Suraj, Tulip, Nandita and Anurag. All of you, heartiest congratulations for getting this opportunity to share your views from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, it is always a good feeling that when you get to share such views from the stage like Bharatiya Chhatra Sansad, but you all have equal opportunity to do so. As I said, let me once again remind you that the question and answer session is exclusively for all of you. So please submit your questions to the podiums which are there in the audience. Reach out to those podiums and submit your questions. And I would like to say that all of you play an equal role in strengthening the democratic fabric of our nation. And Youth to Youth Connect is one such important activity. So all of you are requested to participate in Youth to Youth Connect activity towards the end of this day. And now, it is indeed my honor and privilege to welcome the next eminent speaker, which comes all the way from United States to share his views. Before I invite the President of University of Vermont, Dr. Suresh Garimalaji, I would like to request my technical team if they can please share a small film made on life and work of Shri Suresh Garimalaji. Dr. Suresh Garimela, the 27th President of the University of Vermont, a distinguished academician and a trailblazer in the field of mechanical engineering. Dr. Garimela, a founding director of the NSF Cooling Technologies Research Center, brings a wealth of experience to his role. As a distinguished professor emeritus of mechanical engineering, his impact extends far beyond the academic realm. He is a strong advocate for the public higher education, leading the University of Vermont with a commitment to its role as the land-grant university for Vermont. A prolific scholar, Dr. Garimela's contributions to electronics thermal management at micro and nano scales, sustainable energy systems technology and policy have earned him widespread acclaim. With over 625 referred publications and 16 patents, he stands as a leading figure in his field. Recognized for his excellence, he is an elected fellow of the National Academy of Inventors.
Dr. Garimela's dedication to education and research is evident in his role as a mentor and educator. Prior to his current position, he served as the Good Son Distinguished Professor and Executive Vice President for Research and Partnerships at Purdue University. Let's extend a warm welcome to Dr. Suresh Garimela. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Dr. Suresh Garimela. Thank you very much. I'm so very honored to be here with all of you. Till yesterday, I had a problem with my throat. I had a cough and cold, but this morning it's miraculously gone. It's all the power of Rahul Karad and all the organizers here. So I apologize for my voice a little bit. But I do take issue with the organizers on one front, and that is I never want to be scheduled to speak after those few folks. No one can speak like these 5 individuals who spoke here. I'm so very impressed with them. If all of you are anything like these people, I think we're in very good shape in India. I don't think we need to worry about anything. So I will share a few thoughts with you based on my own experience. There are much wiser people on the stage that will share true wisdom with you. But I wanted to share simply a few things that have driven me in my journey from Bhopal, where I was born, to Visakhapatnam, where I finished my studies, to IIT Madras, and then on to the United States. So I thought of 6 messages for you. The first one is that the world is facing a lot of challenges today, as you know better than anyone else. Problems across the world today are very complex, whether it be climate change or water or food security or poverty or unequal access to education and opportunity. All of these problems are very complicated. And so it's critical that you, as the leaders of the country, focus on being a good citizen, that you look out for your community and for the planet and do your part. If you don't, no one else will. So my first message to you is to do your best to be a good citizen. The second thing, and I think some of my themes have been echoed by others, is to inform yourself. One of the speakers mentioned social media and how much confusion there can be. In today's world, you can spread fake news through a single WhatsApp message that spreads like wildfire. And so it's critically important for you to inform yourself. There's a lot of noise in the world today in the communications area, and a single tweet can sink financial markets or destroy a country's economies, even if they were incorrect. And so the flip side of consuming news wisely is how to learn to communicate. You heard from some amazing communicators this morning, but we also need to learn how to engage in civil discourse. How can we talk about topics on which we disagree? How can we be respectful to each other and convey our thoughts, but also be open to listening other people's thoughts as well? And so you have to be able to work with in controversial areas where maybe you don't agree with each other and maybe you agree to respectfully disagree. My third message is really one that I think you've all heard before, and that is no endeavor is accomplished by simply passionate feelings. And I think one of our speakers this morning mentioned this, that hard work is a must. There are many shlokas that speak to the importance of hard work. You've all heard, Alasyam hi manushyanam sharirastho maharipuh nastyudyam bandhu kritvayam navasidati. Laziness is the greatest enemy residing within us, and there's no friend like hard work. And I've lived that life, and I encourage you to not look for shortcuts, but to work hard to achieve your dreams. There are others. There's another shloka that I was taught when I was a kid. Udyame nahi siddhyanti karyani na manorathahi nahi suptasya simhasya pravishanti mukhe mrugaha. Same thing, right? That a lion must hunt to eat,
no deer would enter the lion's mouth without hard work. So don't let famous people's successes fool you. Rahul Karad didn't become Rahul Karad because he was given something. He worked really, really, really hard to get to where he is. And that's true of many successful people in this country and elsewhere. Every person that you see as a role model, please understand that they've worked really hard to get where they are. And indeed, the importance of teamwork is important. You will hear again and again that working as a team is critical, but you need to contribute something to the team yourself. You need to bring some special skills to each team. So that's my third message. My fourth message is something you hear about often, but I hope you internalize. It's about integrity and ethics. You're nothing if people cannot count on you for your words. If your word is not your bond, then you will never get very far. At so many forks in your life, you will be confronted with the sense that someone else is taking a shortcut, and you may be tempted to do the same. But please resist that temptation. In the long run, that is what will help you. And once you choose your path, don't let criticism and disparagement stop you from following it. My brother gave me a little shloka that has lighted shloka on my desk in my office. It's from the Gita, it's from the 12th adhyay, and it says, Tulya nindastu tirmauni santushto yena kenachit aniketah sthiramatir bhaktiman me priyo naraha. This is much easier said than done. Believe me, it's very difficult. But we seek approbation from everyone we know. We want people to praise us, to think well of us. But my point is that if you believe you're on the right path, then have the courage to do so, even in the face of discouragement. The fifth idea I have for you is say yes more than you say no. Aim high, never settle for less. Always be curious. This word jignasa in Sanskrit or Hindi is a beautiful word. If you lose your curiosity, then you have not much to live for. So be hungry for knowledge and experience. Interesting opportunities only come knocking once. So I recommend that when interesting opportunities come your way, you take it on. Even if it's more work, even if it's difficult, just say yes. You will be the better person for it. Learn new things. AI, for example, everybody talks about artificial intelligence. It's not mysterious. I will ask the question to the audience, how many of you have turned on ChatGPT and played with it a little bit? Can I see a show of hands? Who has opened ChatGPT and played with it? Well, it's good to see a number of hands. Those of you who have not, please go to a computer this afternoon, turn on ChatGPT, give it a few instructions. It'll give you some wrong answers. Correct it. It's a very easy thing to do, but you also see how quickly one can fake things. And so learn new things. Don't be afraid of AI. Don't be afraid of things like ChatGPT. You don't need to be a computer science student to do these things. In fact, I would much rather our arts and humanities students, our social science students, turn on ChatGPT and figure out the power of this medium. The challenge, the fact is that it's not just IT experts that will be faced with these tools, these new technologies. It is all of us. It's the entire society. And so learn what you can create with AI, but also the pitfalls, the downsides of AI. And my final message to you is the following. And this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है. मैं जब 5वीं छात्र में था, my school principal, his name was Sriram Bhatt. I have never had a guru, but my 5th grade school principal comes as close to having a guru as anyone I've had. So Principal Sriram Bhatt gave me a small piece of paper in my 5th grade, and it said 3 words. It said, do it now. Do it now. One of the young women earlier said something very similar.
I stuck that little piece of paper on my desk, and I still have that. It has unconsciously driven me throughout my life. And so it's very consistent with doing hard work, not being lazy, and doing it now. Don't put off till tomorrow what you can do today. And so I think my principal, Bhatt sir, knew what he was doing when he gave me that small message that has driven me in my life. And I am grateful for that message. I want to share that with you. If at least one of you takes that message of do it now and adopts it in your life, I'll feel that we've succeeded. So finally, I'll just say that I'm supremely confident that the new century is India's and that it belongs to India's youth. Please go forth and make yourselves and India proud. Jai Hind. Thank you very much, President Garimala. Thank you very much for your words of wisdom. And indeed, as he rightly said, I would like to reiterate his words. And it is really a fact, what he mentioned in his speech. I would like to add to it, and I would like to say that the jobs of the future would not be taken by AI. Please remember, the jobs of the future would not be taken by the AI, but it would be taken away by the people who know how to use AI. So make sure, follow his words of advice, that please start learning the new technology and do it now. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words. Thank you. My friends, it is now time when I invite and request the next eminent speaker of this session, the spiritual leader, author and Vedic scholar, Swami Mukundanandaji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Introducing Swami Mukundananda, a best-selling author, mind management authority, and a global teacher of yoga and holistic health. A senior disciple of Jagat Guru Sri Kripaluji Maharaj and an alumnus of IIT and IIM. Swamiji possesses a rare blend of profound wisdom and a charismatic personality. With over 4 decades dedicated to guiding millions on the path of happiness and fulfillment, Swamiji's teachings seamlessly integrate scientific theories, perfect logic, and expertise in Vedic scriptures. In response to the growing relevance of spiritual awakening in modern lives, Swamiji founded JK Yoga, a charitable organization committed to comprehensive societal development. As an internationally acclaimed expert in mind management and yogic sciences, Swamiji imparts powerful yet simple life transformation techniques. Swamiji's impact extends globally through daily lectures, seminars, workshops and retreats, reaching Fortune 500 corporations and Ivy League universities. Swami Mukundananda, a beacon of wisdom and compassion, inspires positive transformation worldwide. His lectures are much sought after and include various topics such as the art of mind management, good health through yoga, meditation, and spirituality, developing our relationship with God, Bhagavad Gita for everyday living, and Patanjali Yoga Sutras. Let's embrace the transformative teachings of Swami Mukundananda, an enlightened guide leading us on the path to holistic well-being and spiritual growth. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Swami Mukundanandaji. Namaste. One of the big advantages of elderly people like myself coming in the midst of youth like yourself is that we get the opportunity to be energized by your dynamism. I'd like to start off by receiving your energy. सब लोग जोर से बोले भारत माता की। मजा नहीं आया? क्या बात? ब्रेकफास्ट नहीं खाए थे? फिर से एक बार भारत माता की। That's the way. To all the students here at the Bharatiya Chhatra Sansad, heartiest congratulations.
because you went beyond self-interest to think of welfare of others and the development of this country. जब से हम पैदा होते हैं, मरने तक श्वास तो सभी लेते हैं, किंतु जीवन उसका सार्थक होता है जो दूसरों के लाभ के लिए प्रयत्नशील रहता है. That is why, for visualizing the Bharatiya Chhatra Sansad, my heartfelt salutations to Dr. Vishwanath Karad, to Shri Rahul Karad, and for giving it the practical form to their organizing team of MIT. भारतवर्ष में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है. ये एक जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि आज के युवा कल के नेता होंगे. वे भविष्य के निर्माता हैं, परिवर्तन के अग्रदूत हैं, एवं युगांतर में उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. आज आपका भारत देश एक ऐसे संगम पर खड़ा है जहां हजारों वर्षों की संस्कृति से समृद्ध वो भविष्य के विकास के मार्ग पर है. और आप सब युवा भी भूत और भविष्य के चौराहे पर अपने को पाते हैं. एक तरफ है प्राचीन परंपराएं, दूसरी तरफ है नवीन संभावनाएं. एक तरफ है प्राचीन विचारधारा, दूसरी तरफ है वैज्ञानिक ज्ञान. आप सबको इस युगांतर को मात्र नेविगेट ही नहीं करना है, वरन इसको सही दिशा एवं आकार भी देना है. कैसा विकास होना चाहिए हमारे देश का? ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों द्वारा लगाई गई नींव को ही उखाड़ कर फेंक दें, वरन ऐसा विकास जो हमारी संस्कृति के जड़ों पर आधारित हो, विश्व भर की अच्छाइयों को सम्मिलित करके हम सब लोग आगे बढ़ें. अतः, if we wish to actually learn the science of political leadership, we must try to understand India's ancient and medieval cultural roots. What is the reason that even today, the moment Ramayana comes on TV, it breaks the Guinness World Records for maximum viewership? Why is it that it holds such a strong key in the hearts of people? Try and understand. Access the sacred books, the sacred scriptures of our ancient heritage from which our ancestors drew wisdom. हमारे देश में अनेक संत हुए जिन्होंने सत ज्ञान से, विजडम से मनुष्यों के निर्माण में सबको प्रेरित किया. उनकी जीवनी को पढ़ें एवं आगे बढ़ें. आज भारत के विकास में अनेक आशाजनक बिंदु हैं. उनमें से एक ये है कि कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है. लोग इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि भारत विश्व की महाशक्ति कैसे बने. मेरी आप सब से ये प्रार्थना है कि इसको एक कदम और आगे ले जाएं. यदि भारत विश्व की महाशक्ति बना, 20 साल बाद जब आप लोग 40-50 वर्ष के होंगे, उस समय भारत विश्व को किस प्रकार से लीड करेगा? क्या ऐसा नेतृत्व प्रदान करेगा जो नैतिक मूल्यों से रहित हो,
एक है चाइना का नेतृत्व। क्या हमें उसको रेप्लिकेट करना है या अपनी संस्कृति की विशेषता को व्यक्त करना है? विश्व को आवश्यकता है भारत के सिद्धांतों से लाभ उठाने की। ये जो चीन और भारत की प्रतिस्पर्धा की बात होती है, मेरा विचार है कि 1500 साल पहले भारत ने चीन को परास्त कर दिया, जब बौद्ध धर्म के भिक्षु चीन में पधार कर बौद्ध विचारधारा वहां फैलाकर चीन को सदा सदा के लिए बदल दिए। अतः अगर if we wish to be the leaders that will transform the world, let us try and understand why is leadership important. Because it makes a difference. Good leaders transform organizations. They uplift communities. They develop countries. And they bring revolutions in the world. What does it mean to be a good leader? The first thing is you must have an inspiring vision. A vision that inspires others to follow you. The second, उस विजन को प्राप्त करने के लिए एक जुनून हो, वो जुनून इन्फेक्टिव हो और आपके अनुयायी उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात, आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। आज से 2300 साल पहले भारत में एक राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका राज्य संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा था। वो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा कि आपके वैदिक सिद्धांतों के अनुसार राजा की प्रजा के प्रति क्या धारणा होनी चाहिए? और चाणक्य ने कहा, राजा प्रजा का सेवक है और सेवक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये है सेवा भाव। Modern management science is understanding this and slowly coming to the point of servant leadership. Our Indian culture talks about Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is my family. The Maha Upanishad says, Ayam nijah paroveti ganana laghu chetasam. Those with small mind think about me and mine. Udar charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. Those who are large-hearted and of broad intellect see the whole world as their own. In the ecological system, all living beings take from the environment. They also give back. वो मधुमक्खी फूल से रस तो लेती है, किंतु वो उसे परागित भी करती है। यहाँ तक कि वो निकम्मा केंचुआ जो भूमि में रहता है, वो भी उसे और अधिक उपजाऊ करता है। एक मनुष्य की ही एक ऐसी प्रकृति है कि लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य करें उसे यज्ञ की भावना से करें, अर्थात ईश्वर प्रीत्यर्थ। हम जो कर रहे हैं वो विराट की खुशी के लिए जन की सेवा में कर रहे हैं। ये सेवा भाव। और चौथा गुण लीडर में होना चाहिए, उसका आदर्श व्यक्तित्व हो। अगर आपके अनुयायी देखेंगे कि आपके अंदर वो गुण हैं जो उनके लिए आदर्श है, वे सहज ही आपके नेतृत्व के प्रति समर्पित हो जाएंगे। किंतु जिस दिन आपके अनुयायियों को विश्वास हो गया कि आप लीडर रहने योग्य नहीं हैं, आप अपने नेतृत्व को तिलांजलि दे सकते हैं। अतः हमें बाहर से ऊपर उठने से पहले यह सोचना है
कि हम भीतर से कैसे ऊपर उठें। वो आंतरिक विकास नींव है बाहर की प्रगति का। इतने वर्ष लोग यही सोचते हैं हम बाहर से आगे कैसे बढ़ें। आप में से कितने लोग इस बात पर विचार करते हैं कि हम भीतर से उन्नति कैसे करें। जापान में एक कृषि कला है बॉन्साई। बॉन्साई का नाम सुने हैं? उसमें वट वृक्ष को एक छोटे से कंटेनर में उगाया जाता है और वो बौना रह जाता है क्योंकि उसकी जड़ों को बढ़ने की जगह नहीं मिलती। यानी अगर वृक्ष को ऊपर उठना है उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपके जीवन में सफलता की जड़ें रहेंगी, आपके भीतर का उत्थान, आप अपने मन को कितना ऊपर उठा सके। इसलिए स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी कल। स्वामी विवेकानंद जब अपने अमेरिका यात्रा पर निकलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने कहा, I shall lift my mind to such heights that I inspire people everywhere until the world realizes it is one with God. वे सिद्धांत को समझते थे कि यदि सत् कार्य करना है उसका प्रारंभ भीतर से करना होगा। एवं ये सिद्धांत हजारों वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया था। अपनी प्रश्नावली में उन्होंने प्रश्न रखा, जगत जितम केन, विश्व पर कौन विजय प्राप्त करेगा? और उत्तर उन्होंने दिया। क्या उत्तर था? मनोहीयेन, जो अपने मन पर विजय प्राप्त करेगा। देखिए हमारे देश में एक ज्वलंत उदाहरण है एक चाय बेचने वाले का, जो आज 1.4 बिलियन लोगों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वो उत्थान का आधार क्या रहा होगा? परिवर्तन हमेशा भीतर से ही प्रारंभ होता है। वे अपने विचारों में सुधार लाए होंगे। अतः आत्म उत्थान के लिए क्या साधन चाहिए? बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपके अपने विचार। और वो विचार आप एक दिन में 50,000 उत्पन्न करते हैं अपने मन में। समस्या ये है कि उनकी मात्रा अनियंत्रित है एवं उनकी क्वालिटी दयनीय है। ये विज्ञान को सीखें, द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। हाउ डू आई मेक माई थॉट्स नोबल, sublime and uplifting so that I can achieve happiness, fulfillment and lead an effective life to make a difference in this world. Once again, I'd like to express my heartfelt sadhuvad to Professor Vishwanath Karad, Shri Rahul Karad, all the dignitaries here, the wonderful speakers from whom I was learning how to speak, and all of you who have gathered here today to learn the art and science of political leadership. Thank you. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you very much, Swami Mukundanandji. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, as he rightly said, on Professor the... Bapat, I request all the students to give a standing ovation. Swamiji is traveling all over the world, 200 days or more than that he travels, and his commitment for the life transformation is amazing for the youth of our country. We respect you, sir. I wish to bow down. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. And as Swamiji rightly said, that in this 13th edition of Bharatiya Chhatra Sansad, I guess the message that we all should be taking, that Rashtraya Swaha Idam Namama. So we should learn to give and not to take. Thank you very much for those important messages, Swamiji.
And on this note, I think it is the right time that we abide ourselves by an important message, an oath that all of us would be taking. So I would like to request all of you, all the student leaders, please rise in your seats. Everyone in the front, please rise in your seats. All the student leaders, please rise in your seats. Please put your right hand forward. Please put your right hand forward. And please follow the oath which would be given to us by founder of Bharatiya Chhatra Sansad, Shri Rahul V. Karatji. भी स्टूडेंट्स लीडर्स को आपकी कमिटमेंट मांगता हूं। आप सब जानते हैं भारतीय छात्र संसद पिछले 13 साल से एक कमिटमेंट से कि पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल जीवन में हम सब लोग सतर्क रहे, एक्टिव सिटीजन बने, आगे बढ़े। तो उसके लिए भारतीय छात्र संसद, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, इसका निर्माण हुआ। मेरी इच्छा है कि आप मन से ये जो शपथ यहाँ पे ली जाएगी उसमें आप सब लोग शामिल हो। आप कल प्रोफेशनल बनेंगे, अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, बट मुझे लगता है एक परिपूर्ण ऐसा व्यक्तिमत्व हमारा सबका अगर तैयार होना है, पर्टिकुलरली आपका, यू एज अ फ्यूचर ऑफ द कंट्री, तो इन सब चीज़ों का जो महत्व हमारे फाउंडर रेवियर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर ने हमेशा, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही विश्व शांति ला सकता है। तो इसलिए आपके एजुकेशन के साथ ये जो सब चीज़ें ये संस्था बात करती है, और जितने भी बाहर के भी स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर किए, मैं सबको अपील करता हूं कि इस ओथ में आप एक तन्मयता से आपके माता पिता को, आपके भारत को आंखों के सामने रखते हुए मन से एक शपथ आप यहाँ पे लेंगे। थैंक यू सो मच। जस्ट फॉलो मी। मैं लोकतंत्र के मूल्यों के बनाए रखने, नेतृत्व के गुणों को प्रकट करने और शासन के गुणों का अभ्यास करने की गंभीरता से प्रतिज्ञा करता हूं। 13वीं भारतीय छात्र संसद के प्रतिनिधि के रूप में मैं सभी के लिए एक उज्जवल और सामूहिक भविष्य को आकार देने, मैं रचनात्मक संवाद, जिम्मेदार उपदेश और सक्रिय भागीदारी में संलग्न होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you very much, sir, for that oath, an important message that we all would be taking in our hearts from this stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, as we look forward, yes, as we look forward to the future, it is important that मैं आप सब लोगों को विनती करता हूं कि this is a, we are going to listen to Vikram Sampath ji in next 5 minutes, but he has written this very important book. 100,000 copies so far people have purchased. This is on Bharat, Brave Hearts of Bharat. So we have to really compliment Mr. Vikram Sampath at his young age. He has written so many books, my dear friends. Highest selling book to this, on Bharat. So thank you so much, Vikram ji. You are amazing. Thank you. Thank you so much, sir. And as rightly said by him, before we start thinking about the future, we should know our roots, we should know our history well. 15 brave men and women of Bharat who never succumbed to the challenges of invaders but were lost and forgotten in the annals of history. These are the stories of those brave hearts who fought to protect their rights, faith and freedom. This book talks about such tall personalities, such men and women. As you will see around this pandal, you will see such personalities and their posters along with the information which is written there for your information, which is inspired and motivated from this book. And it is time when I invite and request the renowned historian, columnist and author of Brave Hearts of Bharat, vignettes from Indian history, Vikram Sampath ji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Dr. Vikram Sampath is an acclaimed historian and a prolific author with 8 critically acclaimed books including Splendors of Royal Mysore and My Name is Gauhar Jan. His literary prowess has garnered national and international recognition.
Dr. Sampat's two-volume biography, Savarkar, Echoes from a Forgotten Past, and Savarkar, A Contested Legacy, earned acclaim and were recognized as national bestsellers, receiving praise from Prime Minister Shri Narendra Modi. Elected as a fellow to the prestigious Royal Historical Society of the UK in 2021, Dr. Sampat is a recipient of the Sahitya Academy's first Yuva Puraskar in English Literature and the ARSC International Award for Excellence in Historical Research. A versatile contributor, he has ventured into theatre with his book on Gauhar Jan adapted into a play titled Gauhar. With a doctorate in history and music, Dr. Vikram Sampath was a senior research fellow at the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi. In 2023, Dr. Sampath laid the foundation for Indian historical and cultural research. Let us welcome Dr. Vikram Sampath, a luminary whose contributions span history, literature, and cultural preservation. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, Dr. Vikram Sampath ji. To all the dignitaries on stage and off stage, and to the future of my country who is there right in front of me, a very, very good morning and a great pleasure, an honor to be addressing all of you. While I see all of you here, I'm cognizant of the fact that I'm standing in front of Bharat's future. In each of your success, this country will rise, it will shine, and it will enter that new era, that new yug, in the yugantar, one yug after another, that we are hoping this country goes to greatness. Of course, on this morning, I have a dual disadvantage. One is, in these times of T20 matches, limited overs matches, to come as the last speaker after such illustrious speakers who preceded me, including some brilliant student speakers, that itself is a great challenge. The second challenge that I face today is I'm going to talk a little about a subject which probably most of you hated in your school and in your growing up years, and that is history. As a show of hands, let me just ask all of you, and please be honest, how many of you really liked the history that you learned while you were in school? Wow, that's fairly decent. I think 10-15%. I think it would be even lesser, if it was asked outside. I, for one, was one who probably, to be very honest, hated history in school. Most of the punishment that I got was in the history class. Kneeling down outside was all that I was condemned to all the time. But then, as you grow up, you realize that this is not just a subject which we memorize by heart, which is how we are taught the subject, right? I mean, you need to mug up all the dates, who succeeded whom, which war was fought in which year, extraneous details which are of no importance to anybody. But as you grow up, you realize, and as Swamiji also alluded to in his inspiring speech, that unless you know about where you came from, you cannot chart a course for the future. While driving too, they say, have a look at the rear view mirror while you go front. Now, if you keep looking at the rear view mirror, you're going to have an accident very surely. But then one eye at the past is very much essential if you have to take a plunge into the future. And in that context, history becomes a very important mirror in which we can identify ourselves as a civilization, as a nation, and as a people. And so that is why a proper study of history, especially in a time when we are talking yugantar, ek yug ke baad dusra yug, to understand this march of history across various yug is very important. And I think our colonial masters understood, and as George Orwell, the English novelist, had said, he who controls the past controls the future. So those who have a clear understanding of the past and who control the narrative of that are able to control not only the present but also the future. So just if you reflect on the kind of history that you were taught to,
constantly we are told that India is not even a nation, isn't it? I mean, a lot of us who are educated also, somewhere subliminally, I think we believe that we were not even a nation, we were constantly fighting with each other, there were so many divisions amongst us. It is the British who came and gave us a sense of civilization, they gave us education, they gave us railways, they gave us hospitals, they gave us everything. And that was again a colonial project which had to tell us that right from your earliest ancestors, the so-called myth of the Aryan invasion theory that was floated, right from your earliest ancestors, everybody came from outside. You people are not destined to rule yourself. You're not capable of it. It is in your karma, your destiny, to have someone else come and rule you. And so we, the British, are just a version 2.0, a software update, so to say, where we are coming from outside and ruling you. Now, a nation and a nation state are two very different concepts. Nation states are defined by borders, by laws, by political territories. But a nation state is defined by a sense of common identity, a civilizational connect. And in that, all my young friends, over the millennia, I think there has been an astonishing convergence of views. Right from the Vishnu Puran, which says very, very clearly, Uttaram yat samudrasya himadraschaiva dakshinam varshatad bharatam nama bharati yatra santati. The whole landmass north of the oceans and south of the Himalayas, that landmass, it's not just landmass, Varsha or country is called Bharat, and its children are called Bharatiyas. Now, what clearer enunciation can be there of a nation, a sacred geography? It is not just a piece of land that we inhabit, but also something where Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. Mother and motherland are better than heaven is what our scriptures have told us. So this aspect of self-respect that was needed was stripped away from the way we looked at our past, in the way we are taught our past, because we had to be ruled, we had to be enslaved. Now that has to go if we have to move to the next yug from here. We may become a 3 trillion, 5 trillion economy, we may have the best of military might, but if the software is not robust, if we do not have a sense of pride about what our ancestors achieved, and a sense of genuine pride. I'm not talking of jingoism, Mera Bharat Mahan, everything about the past is great, we developed the atom bomb. No, not that. But a sense of genuine pride as to what we have done in the 5,000, 6,000 years of our documented history. I think that is very important if we have to find that sense of what it means to be a Bharatiya. Now also, if you just look back at your history textbooks that you learned, what were all the wars that you learnt about? The Arab invasion of Sindh, India and Indians lost. The battles of Panipat, India and Indians lost. You had the Battle of Tarain, Indians lost. The Anglo-Mysore War, Indians lost. Anglo-Maratha Wars, Indians lost. The Anglo-Sikh Wars, Indians lost. Battle of Plassey, Indians lost. So our history is taught to us like a long litany list of battles that we as Indians lost. Now today, ladies and gentlemen, if we are still alive and kicking as the only pre-Bronze Age era civilization, mind you, the only pre-Bronze Age era civilization that is still alive, kicking, and our traditions, our faiths, our religions, our languages, our customs are still alive, there must have been some wars that we won also. Some amount of bravery that our poor ancestors also demonstrated. So why is it that these stories are not told to us? And most of them were young men and women. And I must heartily, thank and commend the Bharatiya Chhatra Sansad that several of these heroes and more importantly heroines, I see a lot of young girls here, many of them from my book are actually listed there. Velu Nachiyar, Rani Naiki Devi of Gujarat, who in her 20s, she became the first queen who defeated Muhammad Ghori in the Battle of Kasarhada in 1178. And we would not even have heard Rani Naiki Devi, the Chalukyan ruler of Gujarat, even her name. Lalitaditya Muktapida, again in his 30s,
called the second Samudragupta of India, ensured that the Arabs did not conquer any amount of land beyond that narrow strip of Sindh. There is Rani Abbakka from the state I come from, Karnataka, small little town near Mangalore, coastal Karnataka, who defeated the Portuguese. Imagine a European power being defeated through local indigenous technology by this lady who used indigenous, gunpowder and all of that to actually vanquish the Portuguese. Similarly, you had Velu Nachiyar from Tamil Nadu. You had Kanhoji Angre from this very state of Maharashtra, who was the first Sarkhel, or the military naval commander of the Maratha Navy, who defeated the Siddhis, the Dutch, the English, the Portuguese, all of them, and kept the Konkan coast, independent for a long time. So all these stories, there are numerous such unsung heroes and heroines about whom you can read. Begum Hazrat Mahal from Awadh, who was a lady who came from very, very humble backgrounds, and she was in fact discarded by Nawab Wajid Ali Shah, but later on went on to lead the 1857 rebellion, and Lucknow was the last bastion that the British managed to conquer. So these are the heroes and heroines whose stories we need to read to give us that sense of genuine pride. What did our ancestors do? What were our achievements in the fields of science, in the fields of mathematics, in the fields of alchemy, yoga, medicine, Ayurveda, philosophy, our unique way of what being an Indian means. And I stand in a place which is not too far away from where one of the greatest freedom fighters of his times, Swatantravir Vinayak Damodar Savarkar, who studied in this very city of Pune, organized the first ever student bonfire of foreign clothes. First ever student bonfire. He was a student like some of you studying at Ferguson College. And when the partition of Bengal happened in 1905, at this Lakdi Pul that is there, I crossed it as we came, that was where he collected, under the guidance of Lokmanya Tilak, organized the first student bonfire, for which he got rusticated from college. He also had to pay a very hefty fine to the principal, who was an Anglophile. And he galvanized the revolutionary movement in India. And the revolutionary movement, to all my young friends here, they were all people of your age, 20s, early 30s, not more than that, who took up the gun to liberate their motherland. And great men and women who endured some of the worst tortures. Again, from Pune, you had the Chafekar Bandhus, who, again, very close to where we stand, the Chafekar brothers, Vasudev Balwant Phadke, who reignited the flame of the 1857 rebellion after it was, it was crushed by the British, and the Chafekar brothers who killed the plague commissioner of Pune city. Several of these people, the Gadar movement, the HSRA of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Netaji Subhash Chandra Bose was mentioned, and of course Rash Bihari Bose, who formed the Indian National Army. We need to draw these parallel narratives of what our freedom movement is all about. It was not just a simple, linear, monochromatic vision of a non-violent struggle. There was also a violent uprising which was led by young people like you, who were willing to face the biggest challenges. They went and suffered the worst of tortures in Kala Pani in Andamans, where even food was not available, the clothes to wear were not available. In the hot blazing summer of Port Blair, they had to go round and round the Kolhu ka Bail punishment and extract oil. Even going to the toilet was not a facility that they were given, so many of them had to defecate and urinate in their own cells, in the narrow little cells that they had. And these are the kind of tortures that these young people faced, so that you and I today can breathe and live in an independent India. So that sense of gratitude for all of them, that sense of respect for all our ancestors, I think through the Bharatiya Chhatra Sansad Manch, I would like to pay those tributes on behalf of all of you to these great heroes. And once again, before I end, I would like to heartily thank Professor Vishwanath Karad, Sri Rahul Karadji, and the entire team of the Sansad
for putting together the future of Bharat in this hall. As I mentioned right in my opening statement, in your success, the country will rise, the country will shine, and the country will prosper. So may God bless all of you young people, and may you lead this great nation to further greatness in the next Yuga Pravartan that is going to happen for all of us. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. Thank you very much, Vikram Sampatji. Thank you very much for such a beautiful address and words of wisdom. And my friends, in this session, I would like to remind you once again that these sessions from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad are going to rise in their delivery, in their messages. 3 p.m. today, we will have in that particular session, Shri Manoj Muntasir ji. I'm sure all of you are equally excited to listen to him the way we all are. And with this, I would like to request all the dignitaries on the dais to please hold the brochure of Bharatiya Chhatra Sansad and give us a memorable photograph. A very, very beautiful and memorable moment where all the dignitaries are joining hands. I would now like to take this moment to continue with the resolution of this session. I request my technical team to kindly display the resolution of this session, Session 2 Yugantar, and I request all the students and faculty members sitting in the front to please take out your mobile phones, scan this QR code and vote for the resolution. I repeat, please take out your mobile phones, scan this QR code and please vote. The 13th Bharatiya Chhatra Sansad appeals to the union and state government to empower youth by engaging Yuva Shakti in decision making and fostering a culture of participatory policy making with a commitment to creating opportunities and promoting diversity to build a Samarth Bharat where the Yuva Shakti will take upon its shoulders to navigate the transition with confidence, purpose and success. 13वीं भारतीय छात्र संसद केंद्र और राज्य सरकार से अपील करती है कि सर्व समावेशी निर्णय प्रक्रिया में युवा शक्ति को शामिल करने के युवाओं को सशक्त बनाया जाए, जहां एक समर्थ भारत के निर्माण के लिए अवसर पैदा हो। साथ ही विविधता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता एवं भागीदारी पूर्ण नीति निर्माण की संस्कृति, जहां युवा शक्ति प्रगतिशील परिवर्तन के लिए आत्मविश्वास, उद्देश्य और सफलता के साथ कार्य करे। This is an important resolution on which we are expecting your votes. Please vote. Please take out your mobile phone, scan the QR code, and the voting window will come in front of you. जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा। Please vote. Let the music be on, not a problem. Please vote, everyone. We are waiting for your votes. भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। Okay, your time will be over to vote in 5, 4, 3, 2, 1. Your time is up. I request my team to show us the results of this resolution. Oh, great. The resolution passes with 93% people voting for the resolution. A big round of applause, my friends. You have voted for the resolution. Big round of applause.
Thank you very much for passing this resolution with great majority. And now we all have geared up for the third session, Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. I request all the guests for the third session to please join hands for ringing the bell of democracy. In this third session of day 2 of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. Bharatiya Chhatra Sansad, Bharatiya Chhatra Sansad, Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. I request all the dignitaries to kindly grace the stage by their presence. Shri U.T. Khadir Faridji, Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, revered Professor Dr. Vishwanath Karad Sir, Shri Rahul Karad Ji, Advocate Somnath Bharati Ji, Honorable Member of Legislative Assembly of Delhi, Dr. Sheila Rashid Ji, Policy Consultant and Researcher, Ms. Apurva Singh Ji, Shri Bhavya Bishnoi Ji, Dr. Mangesh Bedekar, Dr. Ganesh Kakandikar, Dr. Shubhalakshmi Joshi, Dr. Ashwin Kuchekar, Dr. Ramkrishna Manatkar, Dr. Dhanashri Tharkude, and all the student leaders, Himanshu Jindal, Sejal Singh, Akshara, Rishi Vaibhav Mishra, and Aditya Raj. I invite all of you to please grace the stage by your presence. All the student speakers of this session are also invited to join us on stage. All the student speakers. Himanshu Jindal, Sejal Singh, Akshara, Rishi Vaibhav Mishra, Aditya Raj, kindly grace us by your presence. The stage is ready for the third session, Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. And to begin with this session, I would like to invite on stage the Dean of School of Computer Science and Engineering, Dr. Mangesh Bedekar Ji, to kindly propose the welcome address. Good morning. Thank you, Dr. Gautam. I welcome all dignitaries on the dais, off the dais, my student participant friends, and a wholehearted welcome for this session. Let me formally introduce the speakers for today and welcome them on the dais again. Shri U.T. Khadir Farid Ji, thank you, sir. Thank you for coming. Advocate Somnath Bharati Ji, thank you, sir. Thank you for coming. Sheila Rashid Ji, thank you, ma'am. Thank you for coming. Apurva Singh Ji, thank you, ma'am. Thank you for coming here. Shri Khadir Farid Ji, again, thank you for joining us. And I would like to introduce the session for today, which we all are aware of, is how AI and social media is here and changing the whole scenario. I hope all of us are very well aware that artificial intelligence, as the name goes, is something that is not very foreign to any one of us here today. It is going to be here for quite some time. So in case whether you are a computer engineer, are aware of computer science or not, doesn't really matter. Just as we heard the deliberations in the morning, AI is going to be here for all of us to consume. So it is better that we remove our fears and wholeheartedly accept it so that it essentially becomes a part of our culture and eventuality. It also has some riders that comes up with it, including social media, privacy issues, and we have a bunch of speakers who would enlighten us on these points. So I request my student colleagues and fellow leaders of tomorrow to probably take this up more from a learning perspective, try understand how things stand today, look at what are the goods and the bads and what you should be looking forward to. So without wasting much time, I think I'll call back Dr. Gautam on stage and start with the proceedings ahead. We have a beautiful panel lined up and we look forward to listening from them.
Thank you one and all, and look forward to some interesting readings and observations here. Thank you. Thank you very much, Dr. Bedekarji. Thank you very much for proposing the welcome address. I would now like to request revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the Honorable Speaker of Karnataka Legislative Assembly, Shri U.T. Khadir Farid ji. Please put your hands together, my friends, and welcome with a round of applause the chairman of this session, Shri U.T. Khadir Farid ji. A big round of applause, my friends, for Shri U.T. Khadir Farid ji. Thank you, sir. Thank you very much for chairing this session. Now I would like to request sir to kindly felicitate and welcome Advocate Somnath Bharati ji, Honorable Member of Legislative Assembly of Delhi. A big round of applause, my friends, for Advocate Somnath Bharati ji. Thank you, sir. Thank you very much for gracing this occasion. I would now like to request sir to kindly felicitate Dr. Sehla Rashid ji, the policy consultant and researcher, Dr. Sehla Rashid ji. A big round of applause for her, my friends. And now I would like to request sir to kindly felicitate Madam Apurva Singh, National BJYM 11th State in charge of social media and founder of Vibes of Bharat and social activist. A big round of applause, my friends, for Apurva Singh ji. The applause should not be less. A big round of applause, my friends. All these dignitaries are here for all of us. Thank you very much. Thank you, sir. The topic of this session is so close to the hearts of young generation. Democracy 2.0, how artificial intelligence and social media are changing the game. It would be an interesting to watch the curtain raiser video of this session. I request my technical team to kindly relay. Welcome to a mind-blowing conversation, Democracy 2.0. How AI and social media are changing the game. Today, we're diving deep into the world of tech, AI, and social media. In the wild world of politics, tech is our secret weapon. It's not just about winning elections. It's about using technology to inspire, connect, and shape the future. Think social media superheroes like Facebook, Twitter, Instagram. There are power tools. And let's not forget AI, the brain behind the scenes. Social media and AI are our game changers. They bring us together, give us info on the fly, and help us make our voices heard. But wait for it, there's a twist. The dark side. Fake news, trolls, and online chaos. It's like the internet's wild, wild west. As Elon Musk puts it, AI and social media, there are double-edged sword, our power to influence and to be influenced. So what's next? We need leaders who speak the digital language, tough digital rules, and AI ethics. We've got to set the rules straight to protect our data and ensure our political game stays fair. With great power comes great responsibility. Knowledge is our armor. Fact-checking and media literacy are our secret weapons against fake news. In our session, we'll break it down for you in 3 key ways. 1. How AI and social media shake up decision-making and social welfare. 2. Why AI and social media are our democracy's turbochargers. 3. Fact-checking and media literacy are tools against the online chaos. Buckle up for a journey into the future of democracy. We're rewriting the rules and you're holding the pen. The question is,
Are you ready for Democracy 2.0? Let's dive into this digital frontier together. Let's find out, my friends, are we all ready for Democracy 2.0 and face the challenges of AI and social media? In order to start with this session, we have with us the chairman of this session, Shri UT Khadir Faridji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri UT Khadir Faridji. Shri UT Khadir Farid, a seasoned Indian politician currently serving as the 23rd Speaker of the Karnataka Legislative Assembly since May 2023. With a remarkable political journey, he has held significant roles, including Cabinet Minister for Urban Development and Housing in the Government of Karnataka, as well as Deputy Leader of the Opposition during the BJP's tenure from 2019 to 2023. Shri Khadir is a 5-time MLA representing the Mangalore constituency, demonstrating unwavering support from the people. His political career began as a district functionary of the NSUI in the 1990s, and he has consistently showcased dedication and leadership. Notably, he served as the Minister for Health and Family Welfare of Karnataka from May 2013 to June 2016, contributing to the state's development. Holder of a bachelor's degree in law, Shri UT Khadir Farid has been a formidable force in Karnataka's political landscape. His commitment to public service and effective governance has earned him the respect and support of the people he represents. Let's extend a warm welcome to Shri UT Khadir Farid. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, Shri UT Khadir Faridji. The architect of MIT University, the inspiration behind all this program, Honorable Vishwanath Kararji, the guests on the dais, dignitaries of the dais, all the brothers and sisters who have joined over here. I appreciate and congratulate Vishwanath Kararji and Rahul Kararji for having this Bharatiya Chhatra Sansad program over here. And I'm very happy to be with you all. And I'm sure that sharing the knowledge and having the network will ultimately help the society and the country in the days to come. I like to say that whatever vision a person who is working, keeping in next election in next mind, is a politician. A person who is working, keeping the next generation mind, is a visionary. And that visionary is Vishwanath Kararji, I'd like to say. Today I have to congratulate and appreciate Rahul Kararji also. Whatever vision Vishwanath Kararji had got in his mind, Rahul Kararji is implementing it in the nowadays to all this, taking the help of each and every one. So in one word, I like to say, if you have got any question, youngsters or any students who are here, who is a true Deshbhakt, Vishwanath Kararji and Rahul Kararji are the true Deshbhakt, I'd like to say. They are example of Deshbhakt. Because taking a politics like taking a mic and shouting at someone doesn't make a Deshbhakt. If Desh has to be strong,
We, the MLAs, MPs, chief ministers, if we are sitting in assembly, if we are strong, India cannot be strong. Prime Minister sitting in the parliament, or Prime Minister, MP sitting in the parliament, or ministers sitting in the parliament, even they become strong, India doesn't become strong. The IS officer and businessman sitting in AC room, even they become strong also, India cannot be strong. If India has to be strong, the students and youngsters playing in the playground and studying in the classroom, when you become strong, then only India can become strong. And thus, such program is given for the students of this country by this Vishwant Kararji and Rahul Kararji. So on behalf of each and everyone and the students and youngsters of throughout India, I thank and once again appreciate all your effort to get to this. Regarding the artificial intelligence, the advantage and disadvantage, there are a lot of speakers who are going to talk. I like to say to all the younger generation, the students, you are the future of India. You are all very much interested in be a better citizen and to be a representative in the days to come. Take active participate in the politics and social work. I congratulate you for that. Because India and society need one of the best leadership to take India forward. And I'll request each and everyone to take active participate in every politics and social work wherever it is possible. Why? Because if you become a good doctor, only doctor field will improve. You become a good engineer, only engineer field will improve. You become an advocate, one law field be improved. But if you're a good politician, you have the capacity of improving all the field like advocate field, doctor field, engineer field. If a person has got a capacity to every field, that only a good politician has got and a representative has got a power to improve all the field. Such a representative is needed for our society, our state and this country. And that you should be one of them in the future days to come. Today I am the Speaker of Karnataka Assembly. I was the 5th time MLA. I was the health minister, I was the food minister, I was the urban minister, I was the housing minister, and opposition deputy leader. Why Rahulji had called me here? One, because of all this political experience. The second very important why he has called me here is 35, 40 years back or 25, 35 years back, even I was sitting in the place where you sit, and I was listening to other people's speeches, and we have developed our personality in the society. Today, we have brought here and we have kept before front of you. Rahulji and Kararji has brought me here and made you to stand in front of you. Not that only I am a speaker. To show that 35 years back, if UT Kadir was sitting there, can be a speaker of Karnataka, every students and individual who are here, you have got the capacity. That is not only UT Kadir, even you should go to that position. That is the ultimate aim of this program. And with the various seminar, one more seminar is like artificial intelligence is going on, which is very much needed for the generation which comes up, you all youngsters. And regarding politics, I like to say to all my brothers and sisters who are very actively interested, I like to say that politics is not mathematics. Politics doesn't give solution. Politics is not mathematics. Politics is chemistry. It has got reactions, not solutions. In politics, 2 plus 2, it won't be 4. 2 plus 2 will be 4 or 22 or 222 or 2222 or minus 2, minus 22 or minus 22. Politics is reaction. Whatever you do and whatever you talk, politics got reaction. So my humble request to you is whatever work you do and whatever you speak, that be a reaction there, but 2 plus 2, it should be 4, but don't it minus 2. That should be an ultimate aim of every individual who enter politics and who are doing the politics over in the future days. That will benefit to the India. And at best, what we can do give to this country is
The word you talk and the work you do, it should be interest of country and it should be interest of society. That is the best patriotism, and that work you can give to the society and this country, and that should be aim of each and every individual students who are joined over here. As far as the artificial intelligence and social media, as now they have told, it a double-edged sword. It has got good things also, it has got bad things also. So it is up to you how do you manage and go forward. So I'd like to say that the few of the points, it is a platform, the increased citizen engagement, people are more and more into the social media, and the decision making also comes through this social media more and more. The transparency and accountability also has been improved. The form of the political formation also, new forms of political participations taken place through the social media, like petition, let be crowdfunding, campaigning. The need for the global cooperation, the collaborate on developing solution with the different countries altogether also is needed. There, how many negative are there? So many positiveness. How many positive things are there? So many negative things are there. The public erosion of the public trust. The time has come now. No one believes anyone, and that means when it comes in social media, the trust is gone. They don't know which is true or false. The exclusion and inequality. If social media takes up correct way, we can exclude whatever you don't want, and we won't get that inequality will build. Those who don't participate, they don't get an opportunity only. The privacy of the loss of privacy and autonomy also is there, and the cyber security and threat, the vulnerabilities, the election and the erode of public and democratic institution also we can be seen. So all things are there in this artificial intelligence and social media, where we have to be very careful. I think my friends they'll explain to you. I like to say, artificial intelligence and social media is not important in your politics. Your intelligence is very important in your politics. How you manage the situation is very important. So I tell all these politicians, younger generation, be a Chanakya in politics, not a Shakuni in politics. Only Chanakya will take forward. A Shakuni type of politics will never take you forward. That should be one of the personality of every politician who go ahead in the society in days to come. And you should have a constructive mind, not a destructive mind. You're part of the solution, not of the part of the problem. Every politician should be a part of the solution, not part of the problem. Your thinking should be for a united India and not a divided society. That should be the main aim of a good politician in the days to come, which will make India more and more stronger. And I like to say to each and everyone that social media, artificial intelligence, whatever they create, don't get panic. Your patience only will reward you. Be calm, and anything comes against you in social media, don't panic and just go on forward and you don't react. You wait and watch. Automatically everything come to your benefit, on your side, on your benefit. Because people forget everything. What has come yesterday, we don't remember today. What has come 2 days before, we don't know. So whatever social media comes, not in the mind of the people. So you politicians and younger generation want to get politics, don't focus much on artificial intelligence or social media. Focus on the people, on the common people, the poorest of the poor people in society. You be in the hearts and minds of the local people. No artificial intelligence or no social media can eradicate you on any level. That type of work should be needed, and it should be done by each and every younger generation and politician, you. And I always say, the Rahul Karad and Vishwanath Karad, when I was starting, I was in politics and working, I thought 98% work and 2% of blessings. But later I come, the situation, how it comes, how it joins, it is 98% blessings and 2% work. The 98% blessing, you should have a spiritual blessing. That's why this campus has got all spiritual activities and program spiritual activities.
Every God's blessing is needed. Every senior member's blessing is needed. Every aged people's blessing is needed. Every religious guru's blessing is needed. So I tell younger generation, along with the education, along the facilities, along social media, keep it in one hand. And other hand, you see that your culture, your tradition, and your education will benefit the society. To get the blessings of God and you be a protection of God, you should be loved by every people around you, irrespective of caste, creed, and community and party. That is alam. When you do your service, do it with humanity and consideration. When you're loved by each and everyone, automatically you'll be loved by God. And when you're loved by God, no artificial intelligence, no social media can curb your politics or put you down. So I'm wishing each and everyone a bright and colorful future. After 10, 15 years, all you should remember that Bharatiya Chhatra Sansad had a program here that this wonderful venue or program has given built your personality more and more better to be one of the best younger youth and a good citizen of this society and this country. I welcome all the speakers on this subject who will give one of the best of their knowledge to you. You will take it and you will go back and you will spread it across the society in days to come. So once again, wishing a bright and colorful future. As a speaker of Karnataka, I request each and every individual, please come to Karnataka, watch our assembly proceedings, watch our system of our politics or the proceedings of the assembly. When you want to come, please inform my office. All the arrangement is needed in Karnataka. We will do it over for you. Thank you, one and all. Namaskar. A big round of applause, my friends, and let's give a huge round of applause to Shri UT Khadir Farid ji. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom, and thank you very much for the invitation to Karnataka. Indeed, it is our honor and privilege. My friends, it is now time when we confer the Adarsha Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA honor, the best outstanding performance in the development work and promotion of parliamentary democracy, and we would like to invite the Honorable Member of Legislative Assembly of Haryana, Shri Bhavya Bishnoi ji, on whom the award would be conferred. I request Shri UT Khadir Farid ji, revered Professor Dr. Vishwanath Karaj sir, Shri Siddharth Kag ji to join in bestowing this award. A big round of applause, my friends, for Shri Bhavya Bishnoi ji. A big round of applause, my friends. The Ideal Youth MLA honor being conferred from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Good afternoon, ladies and gentlemen, friends and family. Thank you so much for bestowing this great honor upon me. I have been committed completely to my work as an MLA over the last year or so, and therefore I'm deeply humbled and encouraged by this gesture. I would also like to congratulate Dr. Vishwanath ji, Rahul Karaj ji, and their entire team at MIT WPU for their great vision of strengthening democracy and democratic values in India. The fact that you have brought legislators like me from across the country, from across party lines, onto one platform to engage with each other in unencumbered, open, productive, non-partisan dialogue is truly remarkable. I would also like to congratulate Rahul ji for his deep commitment to build future political leadership. I strongly believe that just as with other professions of law, engineering, medicine, and so on, a high value should be accorded to education and politics as well. Because very often politicians affect change at scale. Very often politicians with a single stroke of their pen affect millions of lives at once. I honestly believe that all of you are extremely blessed and fortunate to have this opportunity to study and learn at this great institution. And I'm so excited to see what the future holds as many of you step up to the plate and solve the challenges that face India and the world around us. Now, when I was supposed to receive this award,
I was asked to say a few words of inspiration to all of you. But in all honesty, quite the reverse is true, because I've interacted with many of you, firstly at NLC Mumbai in June last year, and then with some of you over the last day and a half here at BCS. And I've been so inspired after hearing the things you've had to say. But if I may, I know in the interest of time, I'll keep this brief. As a young politician, if I had to share 3 words of wisdom or 3 words of advice, there are 3 things that have helped me, navigate my journey, to stay centered, to stay focused in my journey and my life in public service and politics. The first would be spiritual. In other words, have a set of values or principles to fall back on as you journey into a life of politics and public service. And equally, try to understand other world wisdom traditions, other cultures, other social norms. Because doing so will help you understand how civilizations have evolved over time. It'll help you understand how other people you hope to serve in the future, view the world around them. And this is one more reason why I've been so impressed with the approach taken here at MIT WPU, which rests on the idea of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one. Secondly, have a vision or a cause to champion. For me, environmental sustainability and poverty alleviation are very close to my heart, and they inform all the work that I do in my work. So find a cause, find a purpose. It will help you to lead with compassion, with integrity, with ethics, and with humility. And thirdly and finally, I would say, and of course it's quite obvious, work hard. Politics is a full-time job. There's no concept of weekdays, weekends. Your personal life takes a toll, your mental health, your emotional, your physical well-being takes a toll. I find encouragement in the fact that I have a unique ability to outdo and outwork my opponents and my competitors. I work extremely hard, and I truly believe I'm doing God's work. And I know that I have a big family to feed and help, and hopefully in times to come that family will only get bigger. I was born in a family of politicians, which I see as both a blessing and a curse, because it comes with it, a world of expectation and pressure. I've been very blessed to have been educated both in India and abroad, Harvard, Oxford, LSE. I had many opportunities to work and build a life abroad, but I always knew I wanted to come back home to give back to the people I love and hopefully be a small cog in the wheel as we all push the needle on change in India. With that, once again, I would like to thank the university, Dr. Vishwanath ji, Rahul ji, for this great honor. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Your presence is definitely invaluable at MIT World Peace University. I request the dignitaries to kindly be seated. My dear student friends, continuing the essence of the 13th edition of Bharatiya Chhatra Sansad, of this session, that is Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game, let us hear some views from our students and let us move forward with the student speakers. To begin with, I would like to invite on stage Himanshu Jindal from Delhi. शहीदों को श्रद्धांजलि अब वो स्टेटस से चढ़ाते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अब वो स्टेटस से चढ़ाते हैं, रिश्तेदारों की मैयत पर भी बेटे अब फूल ऑनलाइन ही भिजवाते हैं, और आग की लपटों में दहक रहा गांव या भूखमरी से पीड़ित मर रहे बच्चे, पर नेता तो ट्विटर पर वोट मांगते ही पाए जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल्ली की पावन धरती नरेला से इस अग्रवंशी हिमांशु जिंदल का आप सभी को आकाश भर प्रणाम। आज जी तो चाहता था एआई से फैल रही नई स्टार्टअप क्रांति से बदलते रोजगारों की बात करता, जी तो चाहता था एआई से जन्म ले रही नई शिक्षा प्रणाली से बदलते भविष्य की बात करता, जी तो चाहता था सामाजिक माध्यमों से बढ़ रहे राजनीतिक रुझानों से बदलते युवाओं की बात करता, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण जब देश में भूखमरी से पीड़ित बच्चे आज भी लटक रहे हों, आज जब भारत सरकार एआई के उत्थान के लिए 945 करोड़ का बजट पारित कर दे, परंतु फिर भी बेरोजगारी के दल में युवा, परंतु
फिर भी बेरोजगारी के दलदल में युवा मुफ्त राशन के लिए दर दर भटक रहे हों, जब कुछ प्रतिष्ठित राजनीतिक दल आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एआई से बनी मोदी मेलोनी जैसी विचित्र बातों से निंदनीय मजाक बनाते हो, जब देश को जोड़ने के बजाय धार्मिक कट्टरता की आड़ में व्हाट्सएप और फेसबुक पर 65% भड़काऊ भाषण दर्शाए जाते हो, वो युवा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस देश के भविष्य और राष्ट्र की जिम्मेदारी को जोड़ कर रखने की, वो युवा सामाजिक माध्यमों पर अपने नेताजी की चाटुकारिता करते पाए जाते हो। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले 10 लोगों के घर में भले ही एक फोन होता था, परंतु रात को 10 बाय 10 के उस बंद कमरे में पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। आज एक साथ बैठकर खाना खाना तो बहुत दूर गया, बगल वाले कमरे में पिता को चोट लग जाती है और बेटा गेट वेल सून डैडी #दिल वाला इमोजी व्हाट्सएप पर भेजता पाया जाता हो, तब मैं यहाँ बैठे समस्त महानुभावों से ये सवाल करता हूँ कि ऐसे सामाजिक संसाधन सामाजिकता को बढ़ावा देते हैं या सामाजिकता को? ये देश में संप्रदायों को मजबूत कर रहे हैं या सांप्रदायिक दंगों को? ये देश के लोकतंत्र के मंदिर को साफ कर रहे हैं या पड़ी धूल में जंग की एक और चादर चढ़ा रहे हैं? और आज अगर इसे कोई बदल सकता है तो वो है हम युवा। अगर इन युवाओं को सही मार्गदर्शन दिया जाए तो ये वही युवा है जो इन्हीं एआई और सोशल मीडिया को अगर हमारे किसानों का हथियार बना सकते हैं तो साथ ही चुनावों में पहली बार खड़े हुए एक निर्दलीय साथी का हथियार भी बना सकते हैं। ये हमें चांद की सैर करा सकते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के तिरंगे को सूरज की सरजमी पर लहरा सकते हैं। और अंत में जाते जाते 2 पंक्तियों को आपके साथ छोड़ना चाहूंगा कि न खतरा चीन से है न खतरा पाकिस्तान से है, न खतरा चीन से है न खतरा पाकिस्तान से है, न अमेरिका और न इजराइल से है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा केवल और केवल 4 इंची मोबाइल से है। धन्यवाद। जय दिल्ली, जय भारत। Thank you so much, Himanshu, for passing on this message such beautifully. I request our chairman of this session, Shri U.T. Khader Fareed sir, to kindly felicitate him. We also have today with us Sejal Singh from Maharashtra, who I would love to invite to stage to share her views on how AI and social media are changing the game in this era of democracy 2.0. In the words of Stephen Hawking, success of creating AI will be the biggest in human history. Unfortunately, it will also be the last if we don't learn how to avoid the risks. Good morning and namaskar to the dignitaries on the dais, off the dais, and to my dear friends. I, Sejal Singh from Pune, Maharashtra, will be giving my views on today's topic, Democracy 2.0, how social media and AI are changing the game. As citizens of the 21st century, we have information and technology readily available right at our fingertips. Don't we find ourselves scrolling through endless content on social media when we are bored? Or when we want quick information, we turn to ChatGPT without having to dig through hundreds of websites. Social media and artificial intelligence have engulfed every single aspect of our day-to-day lives, and democracy is no exception. I feel social media and AI has the power to enhance the democratic process, as it not only makes the average citizen much more politically aware, but it also gives them a platform to discuss and debate on current issues. Don't we get news much more faster on Instagram these days than through regular news outlets? In fact, during the dark times of the COVID-19 pandemic, we had to rely on such social media platforms to get major updates. Even political campaigns have taken to having a stronger presence on social media than through traditional means. Don't we find politicians who post regularly on their social media platforms much more relatable? In fact, social media can help politicians understand the public much more better and address their grievances. This in turn will not only result in better representation in all levels, local, state, national, and even international levels, but will also ensure better policy making. However, with recent evolutions in AI and social media comes in risks and challenges. False information and misinformation being spread through social media is pushed more by the algorithm on these social media platforms. Such information has the power to trigger tensions, conflicts, and even violence.
This is where we need to step in as vigilant youth of the country and fact check every information that we get on the internet. There is no running away from artificial intelligence. Concepts that seemed futuristic to us in just past few years are current realities. Hence, we should embrace the current democracy in which we go hand in hand with technological advancements. Let us embrace this new democracy called Democracy 2.0. Dhanyavad, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Sejal, for bringing out such critical points. I request our chairman, sir, to kindly felicitate her. We also have with us today Akshara H from Andhra Pradesh, who I invite to stage to share her views and address the gathering here. Democracy is not just about voting. It is about ensuring that people's voices are heard, said Dr. B.R. Ambedkar. Namaste to all the dignitaries and my dear brothers and sisters of Vasudhaiva Kutumbakam. I am H. Akshara from Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, here to speak on the topic, Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. Today, the landscape of Indian politics is undergoing a drastic change as we approach the much anticipated 2024 elections. At the heart of this revolution lies the integration of cutting-edge technology, particularly the AI, which is redefining the contours of the government of the world's largest democracy. As we all are aware, public opinion is the currency of a democracy. Widespread internet has brought social media to the doorstep of common man, which has become a tool for mobilization of public opinion, inviting greater participation in the election. Various political parties and supporters used this tool effectively for campaigning during the 2019 Indian general elections. But how is AI and social media a boon for the democracy? Well, in line with the following verse from the Samana Suktam, Rig Veda, which talks of unified decision-making, Samano mantram abhimantrayeva samanena wo havisha aj homi. The initiative of Government of India of integrating citizens with engagement platforms such as mygov.in and other social media sites has helped us co-define policies and has also created a feedback loop. Today, we are able to hold our elected representatives accountable for their actions. In the hands of a savvy government, this is a powerful tool. In 2020 US presidential elections, an AI-based fact-checking tool was used to debunk vast amounts of false data, potentially influencing millions. In contrast to this, the 2016 US presidential elections brought to forefront issues such as fake news, foreign meddling, and public polarization. The same tool that gives voice to many was used to spread hoax and abusive comments. Sure, social media helps us be better informed, but it also leaves us susceptible to manipulation. Recently, a Photoshop picture of Chief Justice of India urged the people of the country to break out into protest. It also enables populist politics where hate speech is allowed to thrive in the unregulated spaces of digital media. In conclusion, AI and social media are driving our democracy into a new era. Democracy 2.0, characterized by greater participation, transparency, and inclusivity. It gives voice to the voiceless. But we must be cautious while addressing the challenges that it brings along with it. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Akshara, for impactfully expressing the positive side of Democracy 2.0. I request Shri UT Khadir Fareed sir to kindly felicitate her. It is my utmost pleasure to now invite on stage Rishi Vaibhav Mishra from Uttar Pradesh to express his views and share his opinions on Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game.
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऐसे भारतीय छात्र संसद के युवा भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत की सहस्त्र युवा चेतना को मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। श्री काशी विश्वनाथ और महामना की दिव्य तपस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से मैं ऋषि वैभव मिश्र आपके समक्ष लोकतंत्र 2.0 एआई और सोशल मीडिया कैसे खेल बदल रहा है इस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। युग परिवर्तन की बेला में 21वीं सदी के इस आधुनिक काल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संचार माध्यम से लोकतंत्र को डिजिटल लोकतंत्र के रूप में परिज्ञात कर रहे हैं। अगर हम यह कहें कि इस लोकतंत्र का नव अवतार आधुनिक लोकतंत्र के रूप में हुआ है तो हम इस परिवर्तन की राह में प्रगाढ़ हो रहे हैं। आज एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण इतना सुलभ हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश में आम आदमी से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात अपनी स्वेच्छा से रख सकता है। एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियां जनता तक और जनता की चुनौतियां सरकार तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच रही हैं। यह है सोशल मीडिया का विकास। और महोदय, सामाजिक कल्याण और नीति निर्माण के क्षेत्र में आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल विचार, सोशल मीडिया संचार माध्यम से आज राष्ट्र के लोकतंत्र को अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है। चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या फिर किसी चुनाव संबंधी हो, सब में यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो रहा है। लेकिन हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ अशुद्धि होती ही रहती है। तो राष्ट्र के इस लोकतंत्र में घातक दुष्परिणाम वाले प्रचार भी इसी एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। परंतु हमें भयभीत नहीं होना है और राष्ट्र में एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण भारत को विश्व गुरु के अध्यक्षता और विश्व गुरु के रूप में ईश्वर बोध की और वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका में निर्भर करना है। और अंत में दोस्तों, इस भारतीय छात्र संसद के विशाल युवा मंच से राष्ट्र के भविष्य युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि सोच बदले, जीवन बदले, बदल जाएगा ये इंसान, बदलेगा ये देश का युवा, बदल जाएगा हिंदुस्तान। एक भारत, अखंड भारत, भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you so much, Rishi, for powerfully passing on the message of this session. I request the chairman of the session, Shri UT Khadir Farid sir, to kindly felicitate him. We also have with us today Aditya Raj from Bihar, who now I would like to invite to the podium to share his opinions on Democracy 2.0. जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। भारतीय युवा शक्ति के शब्दों की अग्निशिखाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सबसे बड़े छात्र संसदीय मंच से सभा में उपस्थित राष्ट्र शक्ति को लोकतंत्र की जननी बिहार के पुत्र पूनम नंदन आदित्य का प्रणाम। विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के रूप में वैशाली के गणराज्य से विश्व के सबसे बड़े और महानतम लोकतंत्र की इस यात्रा को जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक शब्द में यह यात्रा एआई टू एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आत्मनिर्भर इंडिया की ओर बढ़ती नजर आएगी। और यही कारण है कि आजादी के इन 76 वर्षों की यात्रा को डेमोक्रेसी 1.0 से डेमोक्रेसी 2.0 तक केवल इस बात से समझा जा सकता है कि पहले हमारा नारा था जय जवान जय किसान और अब हमारा नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और इसलिए यही कारण है कि 5G के इस दौर में 5C अर्थात कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कंस्ट्रक्शन के आधार पर 5E अर्थात एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर भारत
नए कीर्तिमानों को करते हुए नवनिर्माण की यात्रा पे बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए यह डिजिटल इंडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों का ही परिणाम है कि स्टार्टअप से स्टैंड अप की ओर बढ़ता भारत पोस्ट कोविड एरा में दुर्भाग्य की कठिनाइयों से लड़ता हुआ भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। और इसलिए विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति होने का ब्रह्मास्त्र आज हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस पंक्ति को याद दिलाता है कि जब कोई साथ ना हो तो एकला चलो रे। क्योंकि सोशल मीडिया और एआई के इस दौर में न राजनीति का अपराधीकरण बाधक है, न अपराधियों का राजनीतिकरण बाधक है और न ही वंशवाद, क्योंकि ये सारे तथ्य आज युवा शक्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी हो, 2014 में नरेंद्र मोदी का घर घर मोदी हर हर मोदी कार्यक्रम हो, या फिर 2023 में मोदी की गारंटी हो, यह सभी सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों का ही परिणाम है। परंतु सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच फंसे इस प्रश्न का निर्णय अब आपको करना है कि आप इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सद्बुद्धि के आधार पर करना चाहते हैं या कदबुद्धि के आधार पर। Whether you want to use it for the constructive cause or for the destructive cause, अंत में केवल यही कहूंगा, मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत भव्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय भवानी, जय भवानी, जय बिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Aditya, and let us all work together towards forming a constructive cause to Democracy 2.0. I request Shri UT Khadir Farid sir to kindly felicitate him. My dear student friends, a huge round of applause for all the student speakers who have put in very much of their hard work and dedication and their time to express their views and their opinions on Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game today in front of all of you. Now, moving forward, please join me in welcoming Dr. Sheila Rashid, who is an eminent policy maker and a consultant and a researcher. But before I invite her to the stage, I would request the technical team to kindly relay a video on her work and life. Sheila Rashid Shora, an emerging academic with a focus on science and technology studies, made history as the first Kashmiri woman vice president of the JNU Students' Union in 2015. Recognized for securing the highest votes that year, she stands as one of India's prominent youth voices. She champions women's mental health and reproductive health, initiating dialogues on issues like PMDD. Fearlessly addressing topics from Kashmir's human rights to acknowledging government efforts, Sheila is a courageous advocate. Currently researching Indian Muslim achievers, her upcoming book is slated for release between February and March 2024. Dedicated to human rights in Kashmir since 2010, she supported Pragash, an all-female band facing threats. Sheila continues to be a resilient force for justice and positive change. Let's welcome Sheila Rashid Shora. A huge round of applause as we welcome her to MIT World Peace University, Dr. Sheila Rashid, for you. Distinguished guests, esteemed panelists, fellow citizens, it gives me immense pleasure to stand before you here at the 13th Bharatiya Chhatra Sansad and discuss a topic that is reshaping the very fabric of our societies. Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. The world we inhabit is undergoing a seismic shift. The rise of artificial intelligence and social media platforms has fundamentally altered how we interact,
how we consume information, and how we participate in the democratic process. This is Democracy 2.0, an era where the traditional tools and modes of governance are being reimagined through the lens of these powerful technologies. AI represents the very first time in human history that complex decision-making is outsourced to a machine. No wonder then that Prime Minister Modi, at the recently held Global Partnership on AI Summit in New Delhi last month, said that AI can either break or make our civilization in the 21st century. PM Modi said that AI can either lead to the development or to the destruction of the 21st century. Why is that? Let's see. AI-powered algorithms are being used to target voters with laser precision, while social media platforms have become battlegrounds for political discourse and misinformation. The Cambridge Analytica scandal, the weaponization of deepfakes, and the echo chambers created by filter bubbles are stark reminders of the potential pitfalls of the digital landscape. AI algorithms can analyze voter data, predict preferences, and craft personalized campaigns. You may have noticed that if you like one cat or dog reel on Instagram, the algorithm will just keep showing you that. Not only that, if you show interest in golden retrievers, you will only be served content related to golden retrievers. If you show interest in toy cup poodles, then you'll only get content and reels related to toy cup poodles. Similarly, if you like one mental health or breakup related post on Instagram, you'll only get content related to that. This is called micro-targeting. It allows politicians to reach specific demographics with tailored messages. That is, each section of the population can be served a different election manifesto. This raises concerns about manipulation and the potential for echo chambers which reinforce existing beliefs and make sure that voters are not exposed to another point of view outside their perspective. Echo chambers are the opposite of a democratic dialogue process. The rise of social media has created fertile ground for the spread of misinformation, and AI has taken this to a brand new level. In the ongoing Israel-Hamas war in the Middle East, generative AI has been used to produce lifelike images showing attacks or events that never took place. Historian and philosopher Yuval Noah Harari correctly pointed out that generative AI such as ChatGPT can potentially rewrite history. Deepfake audios can generate realistic sounding audio clips of politicians, and these can be superimposed on existing video files to fool voters. What is worse? Worse is the possibility that such malicious use may originate abroad and undermine our election process and stir discord among our communities. That's the worst possibility. However, the picture is not entirely bleak. AI and social media can also be harnessed for good, facilitating civic engagement and participation. Platforms can be used to connect citizens with their representatives, provide real-time updates on policies, and even host virtual town hall meetings like this using virtual reality technologies in the future. You know, you may have already seen that politicians host Twitter Spaces. Every government conference is live streamed on YouTube, and people can write comments, they can ask questions virtually. This has the potential to bridge the gap between citizens and their elected officials, fostering a more responsible and accountable government. The Indian government's pioneering role in developing digital public infrastructure such as Aadhaar, UPI, DigiLocker, and so on, reflects a commitment to harnessing the power of technology for good governance. We need to make sure that this tech for good thinking is applied to AI as well. So, what will AI for good look like? AI-powered chatbots can address citizens' grievances in real time.
You may have seen automatic refund being issued on Blinkit or Swiggy, Zomato. You know, where if your order is not properly delivered, you can chat with a virtual assistant and the virtual assistant will automatically refund you. That's good, right? AI-powered tools can help bridge the digital divide and reach rural populations who often lack access to traditional media. Healthcare information can be delivered in a local language through AI-powered apps. Already, Government of India's Bhashini initiative aims to provide all Indians access to digital services in their own languages and to bridge the linguistic gap across various Indian languages. That could truly unite India and break all the barriers of region and language. Digital India can be truly secular and can foster inclusive development by removing bias, by removing human interfaces. 10 years ago, at the Google Big Tent event in New Delhi, Prime Minister Modi, who was then the Chief Minister of Gujarat, outlined his vision for a digital India when he said, IT plus IT is equal to IT, which means information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. 10 years later, in his government today, we see this vision in action. So here are some key areas where India can lead the way in Democracy 2.0 and fulfill PM Modi's vision of AI for all. Number one, building robust data governance frameworks. Protecting citizen privacy and ensuring ethical data collection and use is paramount. We need clear regulations and frameworks to prevent misuse and foster trust in the digital ecosystem. Number two, promoting digital literacy. Equipping citizens with the skills to differentiate between information and misinformation and fake news. Robust digital literacy initiatives can empower citizens to become active participants in Democracy 2.0. Number three, encouraging responsible AI development. We must prioritize ethical AI development that is transparent, accountable, and aligned with human values. India can play a key role in shaping global standards for responsible AI governance. At the Global Partnership on AI event last month that I mentioned earlier, PM Modi stressed the need for a global AI framework, and he said that it's very urgent that we do this now. Number four is leveraging AI for social good. From healthcare and education to disaster management and environmental protection, AI use cases can be a powerful tool for addressing critical societal challenges. India can leverage its expertise in AI and information technology to develop innovative solutions that benefit all citizens. AI itself can be trained to identify misinformation and hate speech on social media. I have in fact worked on such a project. With our goal of Viksit Bharat at 2047, we need to ensure that present and future generations do not fall prey to the menace of AI-driven rabbit holes and information silos, propaganda and conspiracy theories, or to eating disorders and self-harm tendencies promoted by some social media algorithms. The lowering of attention spans by social media in general. India, with its vibrant democracy and tech-savvy population like you, is well positioned to lead the way in shaping a future where Democracy 2.0 empowers citizens and strengthens the foundations of our societies. And you, the leaders of tomorrow, are best positioned to lead this change and become Viksit Bharat ambassadors. I wish you all the best. Thanks to MIT World University for having me. Thanks to everyone on the stage. Thanks to all of you audience. All the best, Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for your wonderful insights on Democracy 2.0 and how we can take this to a Viksit Bharat. My dear student friends, I am delighted to now invite Ms. Apurva Singh, a true social activist who is the state in charge of social media of the National Bharatiya Chhatra Yuva Morcha. But before we welcome her to the podium, I request my technical team to kindly relay a video on her work and life. Shrimati Apurva Singh,
former BJP co-convener of social media and IT in Delhi, Shrimati Singh has left an indelible mark on the political landscape. In 2023, she assumed the role of the national social media team member for BJP Yuva Morcha and took charge of 11 states. Her impactful leadership was evident in organizing the Mera UP, Mera Gaurav campaign across 75 districts of Uttar Pradesh for the 2022 Assembly elections. In 2021, Shrimati Apurva Singh played a crucial role in encouraging people for vaccination through social media, demonstrating her commitment to public health. Her commendable handling of COVID responsibilities showcased her resilience and dedication. In 2019, she served as the in-charge of BJP Delhi's Facebook and Twitter accounts for the 2020 Assembly elections. Shrimati Apurva Singh's political exposure dates back to 2017, where she actively engaged in volunteer work, providing Namo app training in Parliament and organizing social media training sessions at district, mandal and booth levels. Her achievements have not gone unnoticed, with accolades including the Prerna Vimarsh 2023 from RSS and Purvanchal Yuva Samman from Purvanchal Sangathan. Let's extend a warm welcome to Shrimati Apurva Singh. My friends, a huge round of applause as we welcome such a truly inspirational leader. भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है युवाओं की। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। 13वीं भारतीय छात्र संसद में मुझे यहाँ बुलाया गया है और यहाँ के जितने भी टीम हैं मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए इस पूरी टीम को और यहाँ के MIT स्टूडेंट्स को, MIT संगठन को, सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा विषय है AI एंड सोशल मीडिया। मैं आपको एक अपनी आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, यहाँ पे बोलने का अवसर मिला है। तो सोशल मीडिया को कमज़ोर न समझें, सोशल मीडिया के हम सभी वॉरियर हैं। सोशल मीडिया एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, पॉजिटिव भी देता है। तो हम सब मिलकर के अभी चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया और AI क्या है। सबसे पहले सोशल मीडिया जो हमारी मीडिया है, जब पहले हम लोग डिपेंड रहते थे मीडिया पे, हम लोग ऐसे रहते थे कि मीडिया ही जो हमारी पहले न्यूज़ आती थी, न्यूज़पेपर्स आते थे, तो हम लोग सोचते थे कि तब हमारे घर में न्यूज़ आएगी। हमें कुछ भी बोलना होता था तो एक मीडिया ही माध्यम होता था। लेकिन अब ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप घर में अपने रूम में बैठकर भी अपनी बात को सरकार में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रख सकते हैं। तो यही है सोशल मीडिया जो कि लोगों को जोड़ने का काम किया है, सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जब हम वोट करते हैं, युवा एक वोट करता है 5 साल के लिए, फिर हम लोग शांत नहीं हो जाते हैं, हम लोग अब प्रश्न करते हैं। हम लोग पूछते हैं कि सरकार के लिए हमने वोट किया है तो उसका हमें क्या फल मिला, मतलब आपने क्या कार्य किया। तो ये जो सोशल मीडिया की पावर है, ये युवाओं की पावर है, ये घर में चाहे महिलाएं बैठी हों, बुजुर्ग बैठे हों, ये सोशल मीडिया की पावर अगर हम लोग एक ट्रेंड कर दें तो उसमें पूरा देश में नैरेटिव फैल जाता है। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हर जगह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें होती हैं। तो सोशल मीडिया में सबसे पहले हम लोग सक्रिय कदम में आप बताएंगे। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहले 2003 में माई स्पेस आया और उसके बाद ऑर्कुट आया, फ्लिकर आया, फेसबुक आया, अभी इंस्टाग्राम का दौर है, यूट्यूब है, फेसबुक है। तो उससे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं।
लेकिन अभी इंस्टाग्राम का दौर है, तो इंस्टाग्राम के सारे यूज़र्स हैं यहाँ पे? इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम के यूज़र्स, मतलब लाइक यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट की अगर वीडियो बना दे आप, वो मिलियंस में बिलियंस में व्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपने कुछ पॉजिटिव एक वीडियो बना दी तो वो हर घर में पहुंच जाता है। ये आपकी ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। इसी तरीके से यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप में आपने अगर अपनी वीडियो बना करके शेयर कर दी तो वो कहीं भी जा सकता है। आपने एक ग्रुप में शेयर किया, उस ग्रुप में मान लीजिए 100 लोग भी हैं तो वो हर जगह चला जाता है। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। और पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे हम लोग ट्विटर अब जो एक्स हो चुका है, तो हम लोग ट्रेंड चलाते हैं। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें कैसे सरकार के सामने अपनी बातों को रखना है, कैसे अपनी बातों को मनवाना है, अब मतलब संज्ञान में कैसे आएगी हमारी बातों को। तो हम लोग एक ट्रेंड चलाते हैं और हैशटैग चूज़ करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, उसी पे सारे नैरेटिव सेट होते हैं। अब तो मीडिया भी उस नैरेटिव को देखते हुए आगे कार्य करती है। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। और आप जो यूथ हैं, युवा हैं, आपके दाएं हाथ से ये देश चल रहा है, क्योंकि 40% मुझे लगता है कि सारे युवा काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं, अपने क्रिएटिव दिखाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा क्रिएटर है, बहुत अच्छा पोएम लिखता है। अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से आए थे जिनको अवार्ड मिला, तो उन्होंने अपने तरीके से अपने विचार को रखा और यहाँ पे वीडियोस भी बनी है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से हर स्टेट में जाएगी। तो ये है सोशल मीडिया की पावर, जो कि नैरेटिव सेट करता है। अब मैं आप सबसे एक ये चीज़ कहूँगी कि आप लोगों को एआई जो एक ऐसा चीज़ है जिस पे आपको सभी को पता, चैट जीपीटी आप सब यूज़ करते होंगे। चैट जीपीटी यूज़ करते हैं? ओके। तो चैट जीपीटी में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जैसे हम लोग कोई बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सिखाते हैं उसको कैसे चलना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे बोलना है। ऐसे ही हम लोग एआई जो है माध्यम, अपनी बातों को आप जैसे रखेंगे वो वैसा एग्जीक्यूट करके देता है। तो इसी तरीके से चाहे आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से एआई पे अगर आप रखते हैं तो वो उसका आंसर वैसे ही देता है। चाहे कोई वीडियो हो गई या कोई इमेज हो गया, आपने जो कुछ सोचा कि मुझे इस स्थान के बारे में ये चीज़ अगर होता तो वो इमेज कैसी होती, तो वो एआई के थ्रू हम लोग उसको हैंडल करते हैं, एआई से जनरेट करते हैं। इसी तरीके से सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है। आपको पता होगा कि बहुत सारी वीडियोस भी मॉर्फ होती है। इसका एक नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है कि अगर कोई वीडियो है और हम लोग लाइक किसी की भी वॉइस उसमें एडिट कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो एआई के माध्यम से एडिट हुआ है या वो सच में कोई इंसान बोल रहा है। तो ये चीज़ एआई के माध्यम से हमने इसको किया है। और सबसे पहले डाटा कलेक्शन की बात कर लें। जैसे आप सभी को पता होगा कि पॉलिटिशियंस बहुत सारे अपनी एजेंसीज यूज़ करते हैं, तो उसमें डाटा कलेक्शन उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो डाटा कलेक्शंस हमें एआई के थ्रू पता चलता है कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं सही। हमें फैक्ट चेक करके हर चीज़ करनी चाहिए। लाइक कोई भी चीज़ अगर हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे दूसरे तक पहुंचाना है, तो हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। अभी भारत की सरकार ने एक फैक्ट चेक हैंडल भी दिया है जो कि एक्स पर है, आप सभी को जाके देखना चाहिए, फैक्ट चेक करके है वो। और आप सब भी किसी की भी बातों में आने से पहले वो फैक्ट चेक करनी चाहिए। और हमें कहीं पे भी, चाहे सोशल मीडिया पे हो या किसी भी ग्रुप में भी शेयर करना हो या घर में भी शेयर करना हो, तो हमें सबसे पहले फैक्ट चेक करना चाहिए कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। अभी मैं सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी, जो कि अभी एक्स की बात कर लूँ, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये अभी मालदीव्स की मैं बात कर रही हूँ। मालदीव्स में अभी आप लोगों को पता होगा कि उनकी मालदीव्स और लक्षद्वीप, अभी मोदी जी गए थे वहाँ पे लक्षद्वीप, उन्होंने फ़ोटो उनकी वायरल हुई और उन्होंने कहा कि ये अच्छी जगह है, आप लोग जाइए यहाँ पे। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जाना वहाँ शुरू कर दिए। और मालदीव्स के 3 एमपीज़
हटा दिए गए, क्योंकि बाइकॉट मालदीव्स होने लग गया, क्योंकि यहाँ मालदीव्स वाले बोलने लगे इंडिया बहुत गंदा है, भारत बहुत गंदा है, ऐसे कुछ नहीं, मतलब 3 मिनिस्टर्स ने बोला। तो ये बाइकॉट मालदीव जब हुआ तो वहाँ की सरकार ने उन तीनों मिनिस्टर्स को हटा दिया, एमपीज़ को। तो ये है सोशल मीडिया की पावर, जो कि भारत अपने मजबूती से रख रहा है। और सोशल मीडिया का नेगेटिव नैरेटिव भी है कि सोशल मीडिया से हम लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाता है, फेक वीडियो भी बना देता है और सोचता है कि कैसे हम इसको अपनी बातों को आगे फैलाएं, मतलब अपना नैरेटिव सेट करें। बहुत सारे देश विरोधी तत्व भी काम करते हैं इसमें, जो उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अपनी लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी बात करते हैं लोग कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हम इसको रखेंगे, लेकिन बहुत मिसयूज़ भी होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग एक सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे कार्य करेंगे और आगे अपनी बातों को रखेंगे तो इस देश का भविष्य कोई नहीं रोक सकता। इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलकर, हमारे युवाओं को मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आगे रखना चाहिए। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अपनी बातों को रखना चाहिए। चाहे ग्राउंड कैंपेन, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कैंपेन किया था, मेरा यूपी मेरा गौरव, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट में था। मैं वैसे यूपी से ही हूँ, लेकिन यूपी में मैं कभी मतलब जाना हुआ नहीं, मतलब 2-3 साल ही रही हूँ और वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं जब 75 डिस्ट्रिक्ट में गई ना, तो सोशल मीडिया में युवाओं ने 300 से 400 हर डिस्ट्रिक्ट में युवा खड़े हुए और उन्होंने बताया कि उनको यूपी क्यों गौरव महसूस कराता है। तो ये सब भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं कर पाई। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो युवाओं को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाता है कार्य करने के लिए। और अभी मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक सोशल मीडिया पे जो बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की बात कैसे ना हो, डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो। उन्होंने कहा कि वो एक आह्वान करते हैं सोशल मीडिया पे कि आप स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाइए, अपनी सेल्फी डालिए, अपनी वीडियोस डालिए। तो आपको ये पता होगा कि सारे लोग, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, सब लोग स्वच्छ भारत, क्योंकि पहले आप सोचिए कि 2014 के पहले स्वच्छ भारत कहीं नहीं दिखता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, वो युवाओं की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया अभी आपने देखा, G20 की बात कर रही हूँ मैं, G20 में अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग आए थे, भारत सरकार में ज्वाइन किया था। उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, डिजिटल ट्रांजैक्शन करके ये देखा कि ये चीज़ हो रही है नहीं, उनको पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सराहना की। तो ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाया है। और अभी आप सब देखते हैं कि डिजिटल इंडिया जो है, आप सब्जी वाला भी है, हम लोग स्कैन करते हैं तो उसको पैसे दे देते हैं। तो ये सब कार्य है, ये सब सोशल मीडिया AI के थ्रू ही हो सकता है। और AI एक ऐसा माध्यम है जो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए AI टूल का उपयोग होता है। तो ये सब भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि हमारी सरकार यूज़ कर रही है। और ओके ठीक है। और आप सभी युवाओं से मैं यही कहूँगी कि आप सब सोशल मीडिया पे काम तो करिए, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ काम करिए, अपने सकारात्मक विचारों के साथ रखिए और आगे बढ़ाइए। देश में युवाओं के साथ, युवाओं से मिलकर, युवाओं को जागरूक करते हुए कार्य करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you very much, Apurva Singh ji. Thank you very much for your thoughts, and indeed an important topic for today's generation, how to handle artificial intelligence and social media. My friends, now we have with us the next eminent speaker of this session, the Honorable Member of Legislative Assembly of Delhi, Advocate Somnath Bharati ji, who's a distinguished Indian lawyer turned politician associated with the Aam Aadmi Party. With the robust legal background, Bharati ji practiced law at both Supreme Court of India and the Delhi High Court before venturing into politics. He made his mark in the political arena by winning
the Malaviya Nagar constituency in 2013 Delhi State Assembly election, subsequently serving as the Minister of Law, Tourism, Administrative Reforms, Art and Culture in the Delhi government. Bharatiji's commitment to public service is evident through his tenure as an elected member of the Legislative Assembly from Malaviya Nagar from February 2015 to February 2020. His leadership role includes chairing the Committee on Privileges. It is indeed our honor and privilege to have Advocate Somnath Bharatiji as a distinguished speaker of this session. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Advocate Somnath Bharatiji. थैंक यू। भारत माता की, भाई दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन MIT के संस्थापक श्री विश्वनाथ जी, कर्नाटका के स्पीकर UT फरीद जी, को स्पीकर्स राशि जी, अपूर्वा जी, बिश्नोई जी, हमारे MLA हरियाणा से यंग, आज उनको अवार्ड मिला है, और कई सारे यंग साथी जिन्होंने आज अपनी वाणी के जरिए AI और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की बात की। जब मैं कल विश्वनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ का जो एक बहुत बड़ा गुंबद है MIT यूनिवर्सिटी का, जब वहाँ ले गए तो वहाँ दिखाया कि बाहर के पेरिफेरी में जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी मूर्तियां लगी हैं। अंदर के पेरिफेरी में जो भारत के संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, और हर धर्म के, जीसस की मूर्ति भी मुझे दिखी वहाँ, गुरु नानक की मूर्ति भी मुझे दिखी वहाँ, साईं बुल्ले शाह की भी दिखी, स्वामी विवेकानंद की भी दिखी, सबकी दिखी। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस AI और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं वो आपने वो कर दिखाया जिसका शब्दों में वर्णन करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। पक्षी के दो पर हैं, दो पंख हैं, अगर उसमें एक भी पंख कमजोर हुआ तो पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। इस विश्वनाथ जी के नेतृत्व में जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग यहां चल रहा है, एक तो मटीरियलिज्म, जो साइंटिस्ट हैं, जो बाहर की दुनिया के संशोधक हैं, और एक संत, मुनि, ऋषि, भगवान श्री राम, सबकी मूर्ति अंदर है, वो अंदर आध्यात्मिकता की जो जागृति कर रहे हैं। तो AI सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो इनेबलर है, ये किसको आगे बढ़ाएगा, किस चीज को आगे ले जाएगा? जो आपके अंदर है। तो विश्वनाथ जी के इस यूनिवर्सिटी में जो प्रयोग है कि पहले आदमी का अंतरतम को बदलो, जो अंतरतम, मैं आपको धन्यवाद करता हूं सर, चूंकि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जो अंतरतम में होगा, अगर हेट्रेट होगा तो AI और सोशल मीडिया उसी को उजागर करेगी। अगर अंदर अध्यात्म होगा तो AI और सोशल मीडिया उसी को उजागर करेगी। तो AI और सोशल मीडिया जो इनेबलर है, मेरे स्पीकर साथी, सीनियर साथी बैठे थे, वो कह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया बहुत बड़ा टेंशन भी है। तो क्यों है? क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ये टूल है वो किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? अध्यात्म आगे बढ़ाना चाहते हैं, अध्यात्म बढ़ेगा। लोगों के बीच में प्रेम आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रेम बढ़ेगा। लोगों की जो अंतरतम की यात्रा है उसको दिखाना चाहते हैं, वो बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद की बात बढ़ानी है, वो बढ़ेगा। चंगेज खां की बात बढ़ानी है, वो बढ़ेगा। जो भी दोगे वो ऐड नहीं करता कुछ, जो आप दोगे उसी को आगे बढ़ा देता है। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि AI सोशल मीडिया सिर्फ इनेबलर है। क्या बढ़ेगा, क्या वो दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है जिसके हाथ में वो टूल है। इसलिए
बाहर की दुनिया के साथ साथ जो पंख साइंटिस्ट और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के द्वारा आपको दिया जाता है, उसके साथ जो एआई सोशल मीडिया का जो पंख है, उसके साथ साथ अंतरतम का पंख जो भारत के ऋषि मुनियों ने दिया है आपको, उसको जरूर आपको मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति का पुणे के अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, आंख का ऑपरेशन हुआ। अब जब जिस दिन पट्टी खुलने वाली थी, उस दिन वो डॉक्टर साहब आए, बोले भैया तुम्हारा पट्टी आज खुल जाएगा। बोला डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब मेरे आंख की पट्टी खुल जाएगी तो क्या मैं पढ़ लिख सकूंगा? डॉक्टर साहब बोले क्यों नहीं पढ़ लिख सकोगे? बोले ये गजब हो गया, आपके हाथ में क्या हुनर है, क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, लेकिन आपके ऑपरेशन के बाद पढ़ लिख सकूंगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो एआई सोशल मीडिया आपको पढ़ना लिखना नहीं सिखा देगा। जो अंदर है, जो आपको आता है, उसी को बढ़ाने की, उसी को फैलाने की आपको ताकत दे देगा। इसलिए मेरा एम्फेसिस इसी पे है कि आंख की पट्टी तो खुल जाएगी, लेकिन जब तक अंतरतम में वो भारत का जो संत तुकाराम का ज्ञान है, संत ज्ञानेश्वर का ज्ञान है, जब तक वो अंदर नहीं पैदा करोगे, तब तक एआई सोशल मीडिया आपके बहुत काम ज्यादा नहीं आ पाएगी। साथियों, मैंने अपने नौजवान साथियों को देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि भाई एआई और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार ऐसी बातें फैल जाती हैं जो कि हेट्रेड रिलेटेड होती हैं, किसी को नुकसान करने के लिए रिलेटेड होती हैं। वो एक चैलेंजेस है। लेकिन शीला जी ने अपने स्पीच में कहा ये बात कि जो एआई रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस किस प्रकार से उसका समाधान होगा, वो भी एआई देगा। आप समझें, मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, मालवीय नगर से तीसरी बार का विधायक हूं, पहला मार्जिन 8,000 का रहा, दूसरा मार्जिन 16,000 का रहा, तीसरा मार्जिन 19,200 का रहा। क्यों रहा? मैंने क्या उपयोग किया, मैंने दिखाया तभी साथियों को स्टेज पे। ये मेरा फोन मेरे पास है। इस फोन के माध्यम से मैं इस वक्त बैठा, जब स्टेज पे बैठा था, तो अपने क्षेत्र के लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहा था। इसका क्या सदुपयोग किया मैंने, कैसे किया? मेरा बैकग्राउंड आईआईटी दिल्ली का है, मैं आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूं। तो हमने क्या किया, व्हाट्सएप का एक सदुपयोग किया। मेरे विधानसभा में जितने घर हैं, जितने, हर घर से एक आदमी को लेकर के, एक व्यक्ति को लेकर के अपने मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। मैं उसे कहता हूं मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप। There are 83 mohalla WhatsApp groups. I have divided my constituency into 35 mohallas. Every mohalla has got 1 or 2 or 3 mohalla WhatsApp groups. So there are 40,000 families connected to me 24/7 by this mobile phone. They do not know where I am this moment. So this is the positive utility of social media and AI. ये आप ये समझें, चूंकि जब हमने ये प्रयत्न किया तो मालूम पड़ा कि मेरे यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी है, इंदिरा कैंप, वाल्मीकि कैंप, या मेरे यहाँ जो पॉश कॉलोनियां हैं, नीति बाग, हौज खास, ग्रीन पार्क, इन सबके घर में कुछ हो ना हो, लेकिन गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन तो है। तो जो मेरे पॉलिटिक्स पे साथी हैं, अगर इससे क्लू ले सकें, क्योंकि जो बाकी नॉर्मल साधन होते हैं चुनाव जीतने के, पैसे खर्च करना और प्रकार के प्रयोग करना, मैं कर नहीं पाता हूं, चूंकि ना मेरे पास साध है ना मेरी मनसा है। तो आज क्षेत्र के अंदर इंदिरा कैंप का गरीब झुग्गीवासी हो, या नीति बाग का कोई जज साहब हो जो हाईकोर्ट में अभी जज हैं, इन सभी लोग
मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। नाम, एड्रेस, फोन नंबर, समस्या लिखते हैं और मैं यहां बैठे समाधान दे देता हूं। तो यह है एआई का सदुपयोग करने की ताकत। साथियों, अभी जब मैं पीछे आ रहा था तो वहां पे कई सारे लोगों ने, एक अभी छोटा सेमिनार चल रहा था, डिजिटल इंक्लूजन और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग हो सकता है। ये जो भी सरकार, जो भी पार्टी इस वक्त सरकार में है, उसका दायित्व है। लेकिन इसके जो फॉलआउट्स हैं, वो फॉलआउट्स बड़े डेंजरस भी हो सकते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हो, चूंकि चुनाव जब लड़ा जाता है तो जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, जिसके पास ढेरों सारे पैसा है, वो सिर्फ अपना प्रचार ही नहीं करता, वो दूसरों का दुष्प्रचार भी करता है। तो दूसरा व्यक्ति अगर बहुत पावरफुल नहीं हो, बहुत पैसा उसके पास नहीं हो, तो उसके लिए एआई और सोशल मीडिया एक मुसीबत भी बन सकती है। इसलिए चूंकि मैं भी मेरी पार्टी भी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो जिन जिन की पार्टियां जहां जहां सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो डेमोक्रेसी ट्रूली एक्सेसिबल टू ऑल हो, हर व्यक्ति चुनाव के अंदर एक सच्चे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि जो इसके फॉलआउट्स हैं उसके ऊपर भी कानून बने, उसके ऊपर भी विचार हो, जिससे कि इसके जो बैड फॉलआउट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। मैंने अभी मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात चल रही थी, हमारे अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा था। अब सोचें, पार्लियामेंट के अंदर एक व्यक्ति जो मलयालम बोल रहा है, क्योंकि अपना देश एक भाषा का नहीं है, आप कितना प्रयास कर लें कि भाई एक भाषी देश हो जाए, नहीं हो सकता। ये मलयालम जो बोल रहा है वो मलयालम में बोलेगा, उसकी प्राइड उसी में है। जो तमिल बोल रहा है उसकी प्राइड तमिल में ही है। तो एज ए गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी है कि एआई का उपयोग वहां करें कि एक व्यक्ति एक भाषा में बोल रहा है और वो हेडफोन के माध्यम से सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन मिल रही है। ये एआई का फॉलआउट है। दिस शुड बी वेलकम्ड। अब ये बहुत बातें चल रही हैं ईवीएम की, इलेक्शन रिगिंग की। मैं तो कहता हूं कि देखो, एआई का एक बड़ा प्रूफ है ईवीएम, अच्छा है, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से रिगिंग इलेक्शन की होती थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से इलेक्शन की रिगिंग ईवीएम के माध्यम से हो सकती है। कहीं कोई बैलेट बॉक्स नहीं ले जाना, कहीं चोरी करके ले जाकर के स्टैंप नहीं लगाना। यहां तो एक बार आप घुस गए और ईवीएम मशीन पर दबा दब बटन दबाना शुरू कर दिया और इलेक्शन का दिशा यहां से वहां चला गया। तो ये भी एक फॉल आउट है। इस पे भी सरकार को काम करना पड़े कि इलेक्शन रिग ना हो। देखिए, मैंने हमेशा देखा है कि टेक्नोलॉजी जो अंदर है उसको एम्पलीफाई करती है, और जो कुछ भी आप एक घंटा में पहुंचाना चाहते, पहले नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आज एक घंटे के अंदर आपकी विचारधारा, आपका वीडियो, आपका ऑडियो देश के कोने कोने पहुंच सकता है अगर इसका इस्तेमाल ढंग से हो। तो इसके दोनों आयाम हैं। मेरा सुझाव ये होगा कि जो पार्टियां सरकार में है वो एआई और सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार से विचार करे, ऐसे प्लानिंग करे कि ये दोनों टूल डेमोक्रेसी को इनेबल करें, डेमोक्रेसी को मजबूत करें, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी टू अ पर्सन, डेमोक्रेसी सबको समानता में उपलब्ध हो। यही बात मैं कहना चाह रहा था। और साथ में जो बात मैंने कही पक्षी के दो पंख की, इस पे जरूर गौर करिएगा, क्योंकि आप सारे नौजवान हैं, पता नहीं फ्यूचर में कौन आपके बीच से प्रधानमंत्री बने, कौन गृह मंत्री बने, देश को क्या क्या आपके यहाँ से उपलब्ध हो। इसलिए सभी को इस पे विचार करना है कि जो पक्षी के दो पंख हैं, हमारे विश्वनाथ जी के जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका जरूर उपयोग करना। चूंकि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, बाहर के साथ साथ अंतरतम को मजबूत करना जरूरी है, जिससे एआई और सोशल मीडिया आपके अंतरतम को घर घर तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Advocate Somnath Bharati ji. Thank you very much for your words of wisdom and sharing some important insights with our youth. My friends,
In this session, we have one more eminent speaker, whom I'm sure you would have seen many a times on television. A very prominent figure, Shri Siddharth Kakji, in the domain of Indian television, is widely recognized as the documentary maker, television producer, and presenter. His illustrious career reached new heights as the producer and presenter of the immensely popular show Surbhi from year 1990 to year 2001. His show celebrated his exploration of India's diverse culture tapestry. Following this, Shri Kak established the Surbhi Foundation with support from the Ford Foundation, embarking upon a project dedicated to the preservation of the cultural artifacts. Educated at the Lawrence School and graduate at St. Stephen's College, Delhi, Shri Kak brings a unique blend of education and passion to his work. Currently, he graces the screen as the host of travel show India Dhanush on NDTV Imagine alongside a popular Gujarati drama artist. Shri Siddharth Kakji ensures the contribution to Indian television, underscores his commitment of showcasing and preserving the rich cultural heritage of our country. Please put your hands together and welcome, with a big round of applause, my friends, Shri Siddharth Kakji. नमस्कार, नमस्कार सब दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अभी लंच से पहले एक मेरी छोटी सी आपके साथ एक संपर्क हो रहा है, तो फॉर फूड फॉर थॉट सिर्फ 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये मुझे मौका मिल रहा है थैंक्स टू अपने विश्वनाथ कराड़ साहब जी एंड राहुल कराड़ साहब जी, जिन्होंने एक्चुअली एक फिलॉसफी और सोच की एक स्ट्रेटजी बनाई है फॉर प्रैक्टिकल एक्शन। अब आप भी जो हैं हमारे देश के फ्यूचर तो हैं, और कई लोग आपको कहते हैं यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो आपके दिमाग में ये होगा वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बट हाउ, कैसे? तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 छोटे से सुझाव देना चाहूँगा। एक, इसमें एआई की मदद आप ले तो सकते हैं, जो मैं अतीत की मिसाल देता हूँ ज़रूर, लेकिन एक भविष्य की मिसाल भी है जिसमें आपको एआई की मदद करनी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं कर पाएगी। तो ये 2 मिसालें आपको मैं बताऊं। एक डेमोक्रेसी की मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में 1000 साल पहले एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिली है कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक जगह जिसका नाम है उत्तरा मेरूर। आप एआई से उसको गूगल कीजिए, देखिए उत्तरा मेरूर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स 1000 साल पहले जो लिखे गए हैं हमारे देश में, दैट इज डेमोक्रेसी की बिगिनिंग ऑफ वन वे। आप जानते हैं कि उसमें रूल्स सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, लेकिन कितने मजबूत हैं। एक है कि आपको अगर इलेक्शन के लिए स्टैंड करना है तो आपको मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 35 to 70, नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं। दूसरा रूल आपका है कि कुछ तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं संभालेंगे तो दूसरी की प्रॉपर्टी कैसे संभालेंगे आप? तीसरी, और ये बात गौर से सुनिए आप, कि आपके बहुत ही खतरनाक डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स उस सोसाइटी में हैं। जैसे कि अगर आपने ऑफ कोर्स समझ लीजिए मर्डर किया, लेकिन अगर आपने झूठ भी बोला, आपने कुछ इलीगल काम किया, बाकी जो भी होते हैं अपने जो हैं यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ इलीगल एंड अनलॉफुल, तो सिर्फ आप ही नहीं डिस्क्वालीफाई होते हैं, आपके साथ आपके जितने परिवार के लोग हैं 7 पुश्तों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आप देखिए कि आज की डेमोक्रेसी में आप किस तरह से ये रूल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। आप युवा पीढ़ी हैं एंड यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन डिसाइडिंग व्हाट आर डेमोक्रेसी इज गोइंग टू बी लाइक। सो रिफ्लेक्ट ऑन दिस ऑल्सो।
अब भविष्य की बात, जो मेरी दूसरी बात थी जिसमें मैं ख़त्म करता हूँ, ये आपके संकल्प के लिए है। और ये एक कविता है मशहूर पोएट जावेद अख्तर साहब की, शायद आपने सुनी हो, पढ़ी हो। उसका नाम है जिंदा हो तुम, जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुमको दरिया की तरह लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नमस्कार। Thank you very much, Siddharth Kakji. Thank you very much for those beautiful words of wisdom. And now it's time where the student leaders among you would be asking questions to all these stalwarts. I request them to kindly take the answering podium. All the guests, the person who's asking you the question would be seen on the screen. Madam, you will see the person here on the screen. Okay? And I would like to request all the students to please ask a small question, and I also request the dignitaries to give a small answer so that I'll be able to take many questions. Okay? So, chota sawal, chota jawab. First question is coming from my left-hand side podium, and the question is coming from Yugandhar Deshmukh. I request him to please go ahead. Hello. Please go straight to your question, Yugandhar. Yes. Hello. Go ahead, Hello. go ahead. I can hear you. Namaste. My question is, social media has posed problems like online trolling, negativity, and hatred in present times. So how can we tackle it and regulate it? Okay. Thank you very much, Yugandhar. Anyone who would like to answer the question? Can you repeat the question, please? The question is, social media has posed problems, new problems like online trolling, negativity, hatred, which is being spread. So how we can regulate it? See, I just said in the speech itself that problems imposed by artificial intelligence and social media have solutions there only. So there can be algorithms further written to check that what sort of content is coming. Depending upon the keywords, those contents can be filtered and stopped. So all social media platforms, whether it be Facebook or it be now X or it be Instagram, all these companies need to put in those technologies in place which can stop contents depending upon the kind of keyword which they sense. And so is the case with WhatsApp also. Thank you. Thank you very much. I think the next question is coming for Rashid, madam. Okay. I think it is coming from my right-hand side. Shivam is from... Shivam, are you there? Yes. Yes, please go ahead. Namaste. My question is, how can AI and social media support democracy and not harm it? What are some ethical and legal rules for AI and social media in politics? Okay. So the question is for me specifically, Yes. I believe. The key here is regulation and laws, because technology left to itself will not have all the solutions.
And earlier, the approach was to first have a technology and then have a law to regulate that technology. Now, in the new approach, in the digital public infrastructure approach that India is following, regulation is embedded in technology. So, for example, Aadhaar, DigiLocker, when you use Aadhaar to authenticate DigiYatra, or you make a DMAT account, it asks for your Aadhaar, so you can give access to your Aadhaar in a with a one-time password and one-time authentication. So this is called privacy by design, where regulation is built into the technology because the law has a very difficult time regulating technology. So privacy by design is the approach that India is following. That's an example of embedded regulation. Right. Thank you very much. I think the next question is coming for Apurva ji, and it is coming from my right-hand side, and Shruti is asking question, who's all the way from Hyderabad. Shruti, are you there? Yes, sir. Yes, please go ahead, Shruti. So my question is, how can technology be harnessed to ensure the transparency and accountability of elected representatives in the new phase of Democracy 2.0? Okay. Pardon? Should I repeat the question? Okay, so the question is, how can technology be harnessed, used to ensure the transparency and accountability of the elected representatives? Of the related? Of the elected representatives, of the MLAs, Okay, MLCs, and yeah. इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी, सोशल मीडिया और एआई, आपको तो सबसे पहले खुद अवेयर होना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और इसमें हमें कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले हमें देखना होगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। पहले उसको खुद फैक्ट चेक करके फिर उसके बाद हमें ये काम करना होता है। और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसमें ये एक चीज़ ये है कि आप हर चीज़ को इमोशनली कनेक्ट ना हो। आप ये चीज़ करें कि सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें आती हैं, हमें ये नहीं देखना है कि ये सही है, गलत है। मतलब कोई भी चीज़ हमें स्प्रेड करने से पहले इसको चेक करना चाहिए और बिना चेक किए नहीं हमें फैलाना चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, थैंक यू। Should I answer this? I want to add a line. Sure. See, what I said in the speech, my phone is the tool for my people to connect with me 24/7. So I have got 83 Mohalla WhatsApp groups. Let's say, for example, somebody in a slum area has a sewage problem. So where will that person go? In my constituency, the person has not to go to my assembly office or MLA office or MLA house. He or she has to go to my respective Mohalla WhatsApp group, and there the person can put the question and I'll be answering right from the dais. If this becomes a law that every elected person will have to have this way of giving access to the electorates, things will become easy, too transparent. Thank you very much, dignitaries. Thank you very much for participating in Q&A and answering the questions. And my friends, it's now time that you take out your mobile phones. So I would like to request everyone on the dais and off the dais, please take out your mobile phones as we are now going to vote on the resolution. I request my technical team to show you the resolution. The resolution of Session 3, Democracy 2.0, how AI and social media are changing the game. The 13th Bharatiya Chhatra Sansad appeals to the union and state government to acknowledge the transformative power of AI and social media on civic engagement, with a resolution to harness these technologies responsibly to foster transparency, inclusivity, and informed participation for shaping democracy 2.0 in the evolving digital landscape for empowered citizenry. My friends, I would like to request all of you to please take out your mobile phones, scan the QR code which you see on the screen, and please vote on the resolution. My friends, I'm sure you all are voting onto the resolution. Please, we need to know your opinion. My friends,
In the post-lunch session, we are going to witness the presence of many tall personalities, including Manoj Muntasirji, and I'm sure you all are equally excited to listen to Manoj Muntasirji, one of the top names of the country right now. You have last 5 seconds to vote. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up, my friends. I request my technical team to kindly relay and show us the result. Oh great, this resolution passes with 98% support. Let's give a big round of applause, my friends. A big round of applause for yourself. 98% for the resolution. And with this, I would like to request all the dignitaries to please hold the Bharatiya Chhatra Sansad brochure in your hands and rise in their seats for the photograph as we conclude this session. Next session will start on time and everyone is requested to join us back at 2:30 p.m. sharp. I request everyone in the audience to join us back at 2:30 p.m. sharp post-lunch. Your lunch would be served a level below this auditorium. Everybody is requested to go one level down to this auditorium for having your lunch, and please come back at 2:30 p.m. sharp for the next session. Thank you, dignitaries. Thank you very much for participating in this important session. See you all back at 2:30 p.m. sharp for the next session and exciting presence of Manoj Muntasirji. Thank you very much. अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारत
छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर नारा नारा। सनी पम गम पनि सानी सा ग म ग सनी पनि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सनी सा सा सनी सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ग रि ग रि सनी पनि सा रि सनी सा ग ग रि ग रि म म ग रि ग म प म ग म ग रि म ग म सा ग नि सा पनि म प ग सा ग म प ग म पनि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी प म ग म प नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा प म ग सा सा नि सा 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 नि सा ग ग रि ग म ग रि ग रि ग रि ग नि सा नि प नि सा रि ग नि सा ग ग रि ग रि म म ग रि ग म प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी है प्यारा। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। नर ना 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 ना। सनी पम ग म नि सा नि सा ग म ग सा नि प नि सा ग म ग नि सा पा म ग सा सा नि सा सा नि सा ग ग नि ग म ग नि ग रि सा रि सा नि सा नि प नि सा रि सा नि सा ग ग नि सा रि प म ग रि ग प प म ग म ग रि ग म ग म सा ग नि सा प नि म प ग सा ग म प ग म प नि सा ग म ग म। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जवा उमंगे जवा है धड़कन, युवा शक्ति से जागृत कण कण। जो भी कमी है हम भर देंगे, जो न हुआ है हम कर देंगे। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। ना ना चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान अब न थमेगा। ये निश्चय है ना के सपना, शान विश्व की भारत अपना। भारतीय छात्र संसद, 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 भारतीय छात्र संसद।
ni pa ma ga ma pa ni sa ga ma ga sa ni pa ni sa ga ma ga ni sa pa ma ga sa ni sa ga ni ga ma ga ni ga ni sa ni sa ni pa ni sa ni sa ni sa ga ni sa ni pa ma ga ni ga pa ma ga ma sa ga ni sa pa ni ma pa ga sa ga ma pa ga ma pa ni sa ga ma ga जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जवा उमंगे जवा है धड़कन युवा शक्ति से जागृत कण कण जो भी कमी है हम भर देंगे जो न हुआ है हम कर देंगे भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद भारतीय छात्र संसद Very good afternoon and welcome to the fourth session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Lok Shakti ki Shakti, the power of folklore in our culture. An important session in which we are going to touch upon the various aspects of the culture, the power of culture in driving the nation. A big round of applause, my friends, as the bell of democracy is ringing. A big round of applause. I can see many students in front of me. Thank you very much. I request the dignitaries to kindly grace the stage by their presence. I request the chairman of the session, Shri Kuwar Manvendra Singh Ji, revered Professor Dr. Vishwanath Karad Shri Sudhanshu Shekhar Ji, Shri Suresh Garia Ji, Dr. Mridula Kulkarni, Professor Dheeraj Singh, Dr. Dinesh Seth, Dr. Vijay Bilolikar, Dr. Rajeshri Kadam, Dr. T.J. Vidyasagar, Anshuman Patil, Diya Tomar, Gyaneshwari Virole, Shraddha Shirolkar and Arya Basre to kindly come up stage, please. We all have gathered here for yet another important session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Lok Sanskriti ki Shakti, the power of folklore in our culture, the cultural expression. It is indeed our honor and privilege to have such tall personalities among us. And to begin with this session, I would like to request the Dean of Student Affairs at MIT World Peace University, Dr. Mridula Kulkarni, to kindly propose the welcome address. Honorable Founder President Dr. Vishwanath Karad sir, Honorable Executive President Rahul Karad sir, इनको नम्र अभिवादन करते हुए I welcome you all with a big good afternoon. I am honored to stand before you alongside the esteemed guests such as Honorable Kuwar Manavendra Singh Ji, Chairman of Uttar Pradesh Legislative Council, Honorable Sudhanshu Shekhar Ji, Member of Legislative Assembly from Bihar, Honorable Suresh Garia Ji, Member of Legislative Assembly from Uttarakhand, Honorable Manoj Muntashir Ji, Speaker, and Honorable Malini Avasthi Ji. Welcome all of you at MIT World Peace University 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Today we gather to explore the theme Power of Folklore in Our Culture. Folklore made up of traditions, myths, legend, tales passed down through generations. It has profound impact on our society. We Indians know impact of Tenali Rama, Panchatantra, Birbal, Amar Chitrakatha during our childhood. Folklore is like a living storybook of who we are as a community. It holds wisdom and values that have stood the test of the time, guiding us through life's complexities.
Whether shared through the stories, writings, art, folklore connects our past to our present and shapes our future. The amazing thing about folklore is its ability to bring us together. These stories, rooted in shared experiences and universal themes, create a sense of belonging and a shared consciousness. Over time, folklore has played a vital role in uniting diverse groups, crossing boundaries to create a common narrative. As we navigate the 21st century, let us cherish the treasures in our ancestors' folklore. I extend a warm welcome to all the dignitaries and our young student leaders, Chhatra Sansad, to share their valuable thoughts and visions on this theme. Welcome, one and all. Thank you very much, Dr. Mridula Kulkarni ji. Thank you very much for proposing the welcome address. My friends, we have started with this session and I would like to request all of you to quickly settle down, please, and maintain the silence because the session has already set in motion. I request once again all the students to please settle down. I request the faculty members to kindly take the round and ensure that the students are seated and maintaining the silence because now we are going to experience the moment of meditation. Hence, I would like to request all of you to kindly observe silence and kindly put your mobile phones on silent mode or switch them off. I would like to request to kindly come on stage to give us the experience of Heartfulness Raja Yoga meditation. I would like to request Mrs. Anjali Bapat to kindly come up on stage. Thank you. Luminaries on the dais, respected guests present, and my young friends in the audience. My humble pranams also to respected Sri Vishwanath Karad and Sri Rahul Karad for enabling so many people to experience this divine heartfulness meditation. May I have the presentation, please? Our PPT. So I'm here to represent Heartfulness Institute, which is a global organization. We are present in 160 countries. Maybe some of you were here yesterday, but for those who weren't, I'd like to quickly go through it again. We are millions of meditators all over the world, and we bring this practice to everyone free of cost. No, 10 minutes I'll wait. Sorry, 10 minutes I will wait. Yeah. So, there is an initiative called Youth Unite, in which 1,25,000 youth from all over the world will be meditating together on 12th of January, that is tomorrow. Imagine the kind of positive energy it will create. I invite all of the youth present here to join us in this initiative. Swami Vivekananda has said to us that you have infinite potential. Believe in it. We are all moving towards excellence. So what is the connection between excellence and meditation? Let's see it very briefly. So can you do excellent work unless you're really happy, peaceful, and centered? Think of the times that you have done something outstanding. Could you have done it if you were feeling sad, anxious, or negative? No. Unless we are happy, you cannot move. You cannot do an excellent work. Now, can you be happy unless you're feeling harmonious from within? If there's an inner harmony, only then you will experience happiness. Now, can you feel inner harmony unless you are someone who is able to contemplate about what's happening within you and resolve them? So for that, you need a contemplative nature. So you cannot have inner harmony without a contemplative nature.
Now, how to develop a contemplative nature? It's only through focused thinking. If your thoughts are all over the place, how will you contemplate? So you need to know how to think in a focused way. How can we develop focused thinking? It is only when our mind is very regulated, we know which thoughts to let enter and to entertain. So to a regulated mind, we get focused thinking. And how to develop focused thinking? It's only through meditation. So, meditation leads to focused thinking, leads to a contemplative nature, leads to inner harmony, makes us a very happy person from within, which enables us to do excellent work. So are we all ready to experience this method, which is going to help us move towards excellence, both within and in the manifestation of what's inside us? Let us all experience it. So we'll do 2 short techniques. One will be a relaxation, and maybe we'll meditate very briefly after that. So I request everyone to please silence your phones. Please settle down. Thank you. I request you all to now sit very comfortably and close your eyes very softly and very gently. Everyone, please settle down. Close your eyes very softly and very gently. Let's begin with the toes. Wiggle your toes and now feel them relax. Feel a relaxing energy move up through the soles of your feet, your ankles, your calves, right up to your knees. Relax your thighs. Relax your hips, your stomach, your abdomen, and deeply relax your waist. Gently move your awareness to your back. From the top to the bottom, feel your back is completely relaxed. Relax your chest and shoulders. Feel all the stress from your shoulders simply melting away. Finishing 3 minute time. I have given 10 minute time, so 3 Don't minutes. disturb. Yeah. Yeah. Relax your upper arms, your forearms, your hands, right up to your fingertips. Relax all the muscles in your neck. Relax your jaw and your chin. Relax all the muscles in your mouth, your nose, your eyes, your eyebrows, your forehead, your cheeks, all your facial muscles, your earlobes,
all the muscles of your scalp, right up to the roots of your hair. Experience how your entire body is completely relaxed. Very gently bring your awareness to your heart and rest here for a few seconds. When you feel ready, you can gently open your eyes. I hope you experienced something very relaxing and very divine. I know it was a very short experience, but for those who enjoyed it, you're most welcome to visit us at heartfulness.org and experience it in a deeper way. For all our youth in the audience today who would like to remain connected with us for this 1,25,000 coming together of youth to meditate, you may register yourselves through this QR code. The time was indeed too short, but I'm still really grateful for this opportunity to help everyone experience and know about heartfulness meditation. Thank you so much for giving us this time, and I wish you a very nice day ahead, a very peaceful, serene, and heartful day ahead. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam Anjali Bapat. Thank you very much for that experience. And now, let us all gear up to start with the session 4, Lok Sanskriti Ki Shakti, the power of folklore in our culture. And to begin with this session, I would like to request Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate and welcome the Honorable Chairman of Uttar Pradesh Legislative Council, Shri Kuwar Manvendra Singh Ji, who is the chairman of this session. A big round of applause, my friends. A big round of applause as we felicitate and welcome the Honorable Chairman of Uttar Pradesh Legislative Council in 13th Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you, sir. Thank you very much for your gracious presence. Thank you. And now, in order to understand more in detail about this session, I request my technical team to kindly relay the curtain raiser video. Namaste. Welcome to Lok Sanskriti Ki Shakti, power of folklore in our culture. In the heart of India lies a treasure trove of stories, woven into the vibrant fabric of our history. Our folklore, rooted in our indigenous way of living, it's a testament to the creativity and wisdom of our people. Folklore isn't just stories. It's a living, breathing entity that carries the wisdom, struggles, and aspirations of countless generations. It's a repository of traditional knowledge guiding us on sustainable practices from understanding nature to ancient healing arts. But it's more than that. Folklore is the resonant voice of our marginalized communities. It's a platform for them to express their experiences, dreams, and grievances. Imagine the power of tales inspiring freedom fighters. The povadas of Chhatrapati Shivaji Maharaj fueled heroism and revolutions during our nation's fight for freedom. Yet, despite this rich heritage, we often find ourselves at a crossroad. It is high time now that we overcome the mindset of colonization. Issues like intellectual property,
underrepresentation, and the shift towards Western art poses challenges. The absence of laws and institutions add to the hurdles in preserving our folk culture. But fear not, for today we embark on a journey to explore the vibrant tapestry of our folklore. In this session, we delve into the heartbeat of our traditions. How folk culture intersects with questions of power and cultural hegemony. How we can harness folk culture to empower marginalized communities and promote social justice. How we address intellectual property issues, ensuring indigenous communities benefit from the commercialization of their folk culture. Our folk culture isn't just a part of our identity. It's a global stage where Indian culture shines bright, captivating hearts worldwide. So buckle up for a culturally vibrant ride. Indeed, we are a proud nation, we are a proud country with rich culture, and probably the only country in the world which has such a diversity in its folklore. It is an important session to discuss many issues, and to discuss and introduce this session to all of us in his opening address, I would like to invite Shri Kuvar Manvendra Singh ji, but before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. An eminent BJP leader whose political odyssey in Uttar Pradesh has been nothing short of exemplary. With 3 terms as a member of the Legislative Council and 1 as a member of Legislative Assembly, Singh has made enduring contributions to the governance of the state. His noteworthy roles including serving as the designated chairman of the Laghu Jal Vidyut Nigam during Shri Kalyan Singh Ji's chief ministership, and later as chairman of Bundelkhand Vikas Board under Shri Yogi Adityanath. Elected unopposed to the Uttar Pradesh Legislative Council in 2021, he previously held pivotal positions such as acting chairman and deputy chairman of the council. Hailing from Jhansi, Singh's deep-rooted connection to the grassroots politics is evident through his early association with Sangh and Vidyarthi Parishad. From being the district president of Jhansi in 1980 to a BJP MLA in 1985, his political journey is marked by consistent achievements. His influence extends beyond conventional roles, including State President of BJP Yuva Morcha, Acting Chairman of the Legislative Council, and Chairman of the Bundelkhand Development Board. An exceptional position granted under Yogi Adityanath's special power. Let's welcome Shri Kuvar Manvendra Singh. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the Honorable Chairman of Uttar Pradesh Legislative Council, Shri Kuvar Manvendra Singh ji. इस 13वीं भारतीय छात्र संसद सम्मेलन के अवसर पर पधारे विभिन्न राज्यों के चयनित छात्र प्रतिनिधि एवं सभागार में उपस्थित समस्त गणमान्य विद्वज्जन का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ कराड़ जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल वी कराड़ जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस विचार गोष्ठी का विषय लोक संस्कृति की शक्ति सार्वकालिक एवं समीचीन है। संस्कृति का सार बेहतर मनुष्य और सृष्टि को गढ़ना है। संस्कृति से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। मनुष्य धर्म विहीन हो सकता है, लेकिन संस्कृत विहीन नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतरी तहों तक जमने वाले संस्कारों से संस्कृति की निर्मिति होती है। मनुष्य की संस्कृति जीवन,
कला और वाचिक परंपरा में पुष्पित और पल्लवित होती है। संस्कृति तो संस्कारों की सम्यक कृति का नाम है। आज का समय तेजी से बदलती संस्कृति, कला, परंपरा, वाचिक परंपरा और लोक जीवन के परिष्कार, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्प्रतिष्ठा का समय है। यह समय है धीरे धीरे विलुप्त होती हुई कला और संस्कृति के यथोचित संरक्षण का। भौतिक यांत्रिक जड़ताओं में घिरते हुए मनुष्य को बचाने का समय है यह। आतंकवाद के चलते संस्कृति की रक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है। मनुष्य की अस्मिता ही खतरे में पड़ गई है। ऐसे वातावरण में यदि कोई हमें बचा सकता है तो संस्कृति, कला और साहित्य ही बचा सकता है। तेजी से बदलते जीवन मूल्यों के साथ पारंपरिक व्यवहारों को पकड़े रखना मुश्किल लगता है। इसका रास्ता लोक संस्कृति ही बता सकती है। आज के समय में जीवन और कलाएं अपने मूल की ओर लौट रही हैं। सारे विश्व में आज लोक संस्कृति की बात चल पड़ी है। अतः यह कहना उचित है कि यह समय लोक संस्कृति का है, उसे व्यापक लोक संस्कृति का, जिसमें मनुष्य सुख और शांति महसूस करता आया है। संस्कृति मनुष्य की वह रचना है जिसमें मानव का सृजनात्मक शक्ति और योग्यता का चरम निहित है। संस्कृति जीवन और उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का संचय है। संस्कृति में मनुष्य के बाह्य और आंतरिक मूल्यों की अभिव्यंजना होती है। संस्कृति वह जीवन शैली है जिसे मनुष्य पूर्वजों से ग्रहण करता आया है। संस्कृति मनुष्य को जीवन जीने की एक उच्च भावभूमि प्रदान करती है। संसार में अनेक प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान हैं। प्रत्येक जनगण की संस्कृति अलग होने का कारण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का अलग अलग ढंग, प्राकृतिक पर्यावरण और समाजगत मान्यताओं पर विकसित ढांचे पर निर्भर होना है। संस्कृति मनुष्य की सम्यक कृति है। सम्यक यानी सुविचारित। विचार भी जीवन का, चरित्र का, आचरण का, व्यवहार का, अभिव्यक्ति का, काव्य का, संगीत का, कला का, समाज का, देश का, विश्व का, जो कुछ भी चरम हो उसकी प्राप्ति इसी संस्कृति के अंदर आता है। संस्कृति अपने आप में बहुत व्यापक और गंभीर अर्थ का बोधक है। भारत में प्रायः दो तरह की संस्कृति की व्याख्या की जाती है। एक है प्राचीन सुविचारित वैदिक संस्कृति और दूसरी व्यापक लोक संस्कृति। वेदों के टीकाकारों ने एक स्वर में स्वीकारा है कि लोके च वेदे च, जो लोक में है वही वेद में है। अर्थात वेदों से पूर्व लोक में वे सब बातें मौजूद थीं जिन्हें वेदों में छंदबद्ध किया गया है। लोक संस्कृति वैदिक संस्कृति से बहुत पहले लोक में प्रतिष्ठित थी। भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। हमने बहुत पहले ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रतिपादन किया, इसे संस्कार के रूप में जिया और समय समय पर उद्दांत दृष्टांत भी प्रस्तुत किए। फलतः विविधता के बाद भी हम सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधे रहे। देश में सांस्कृतिक एकता के बंधन ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती दी। निसंदेह भारत विविधताओं से भरा देश है। यह विविधता भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई हर स्तर पर परिलक्षित होती है। भारत में जहाँ हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएँ हिमालय के रूप में मौजूद हैं, वहीं राजस्थान में मरुस्थलों का बोलबाला है। मैदान है तो पठार भी है, दोआब है तो समंदर के किनारे भी हैं। घने जंगल और बीहड़ भी कम नहीं है। यह भौगोलिक विविधता सामाजिक विविधता को भी जन्म देती है। राजस्थान का पहनावा, रहन सहन, खान पान व रीत रिवाज
वैसे नहीं हैं जैसे कि उत्तराखंड में रहने वालों के हैं। बंगाल के लोगों का जो पहनावा, रहन सहन, खान पान व रीति रिवाज है वह पंजाब के लोगों में नहीं है। कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों के बाशिंदों का रहन सहन उत्तर प्रदेश के लोगों से नितांत भिन्न है। यहाँ तक कि भौगोलिक विविधता ने शारीरिक संरचना तक को विविधता प्रदान की है। रंग रूप, वेशभाषा के स्तर पर जबरदस्त भिन्नता देखने को मिलती है। पंजाब का मूल निवासी अलग पहचान में आ जाता है तो बंगाल का अलग। कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। कहावत में भारत की विविधता के ही दर्शन होते हैं। बानी अर्थात भाषाएं अनेक हैं। हर भाषा का अपना अलग अलग रचना संसार है, साहित्य है। हम धार्मिक स्तर पर भी अत्यंत सहिष्णु व उदार हैं और हर धर्म को सम्मान देते हैं। यही कारण है कि भारत में तमाम धर्म के लोग आए, पुष्पित पल्लवित हुए और मिलजुल कर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते रहे। यही जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वह हमारी सांस्कृतिक एकता की सूत्रधार है। रंग रूप, वेशभाषा आदि स्तरों पर हम भले ही अलग हैं, पर इन तमाम विविधताओं को एकता के धागे में पिरो कर रखा है और विविधताओं के बावजूद हमारी सांस्कृतिक एकता सर्वोपरि है। आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता के भौतिक चमत्कारपूर्ण तार्किक संस्कारों, जीवन पद्धतियों की जटिलताओं, बौद्धिक तनावों, मानसिक कुंठाओं, सांस्कृतिक ज्ञानजन्य अहंकारों, अतिवादी पांडित्य की चेतनाओं तथा वर्ग संघर्ष की आशंकाओं से तपती दहकती एवं सुलगती मरुभूमि से सर्वथा दूर एक ऐसी भी सृष्टि विद्यमान रही है जो नित्य नूतन, शस्य श्यामल, परम पवित्र, अकृत्रिम सहज, परंपरानुमोदित संस्कारों की उर्वरता से संपन्न है। यह ऐसी स्वच्छंद सृष्टि है जिसकी सत्ता किन्हीं पोथियों के ज्ञान से निर्मित नहीं है, जहाँ व्याकरण के अनुशासन की श्रृंखला नहीं है, अहम चैतन्य की व्यक्तिवादी बोध सत्ता का शासन नहीं है, स्वभाव केंद्रित चिंतन नहीं है, बल्कि इनके विपरीत आकाश की तरह उन्मुक्तता, सागर की गंभीरता, वायु की स्वच्छंदता तथा बसंत सी मादकता है। यही सृष्टि लोक की संज्ञा से संबोधित की गई है। लोक शब्द अत्यंत प्राचीन है। लोक का रूढ़ अर्थ संसार है, लेकिन यह अर्थ लोक को बहुत संकुचित कर देता है। लोक का अर्थ बहुत व्यापक है। लोक समूचे जीव, प्रकृति, जीवन, स्वर्ग, नरक, कल्पना, यथार्थ का नाम है। लोक सब जगह है। लोक का अभिप्राय सामान्य जीवन है। सर्वसाधारण जनता के लिए भी लोक शब्द प्रचलित है। चराचर मात्र में लोक की उपस्थिति है। मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां लोक से बाहर नहीं होती। लोक देवी देवताओं के चमत्कारपूर्ण जीवन प्रसंगों से चमत्कृत होता है तथा अनुष्ठानों, टोने टोटकों, शकुन अपशकुनों, तीज त्योहारों के बीच अपनी जीवन यात्रा को हंसते रोते, हंसाते गाते, नाचते झूमते, रीझते खींचते, खिलते मिलते पूरी करता है। यह लोक सच्चे अर्थों में जनमानस है और इसका मूल बिंब भी है। लोक की शक्ति से सभी लोग परिचित हैं। लोक शक्ति अपार है। लोक की ताकत को समझकर राजा, महाराजा और सम्राटों ने लोक परंपराओं का तिरस्कार कभी नहीं किया। इसे सम्मान दिया और परंपराओं की रक्षा भी की। लोक की शक्ति साहित्य में वेदों से लेकर उपनिषद, आरण्यक, पुराण, संस्कृत और अपभ्रंश वाग्मय तक पूरी ताकत के साथ अभिव्यक्त हुई है।
गुप्त, राजपूत और भक्ति काल के भारतीय समाज की कला, साहित्य, संस्कृति में लोक शक्ति संपूर्ण ओजस्विता के साथ प्रकट हुई है। मुगल काल में लोक शक्ति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे नायकों के साथ थी। अंग्रेजी राज में वह शक्ति मंगल पांडे, झांसी की रानी, महात्मा गांधी के साथ थी। अपने समय के महानायकों के साथ लोक शक्ति सदैव रही है। लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम जीवन, साहित्य और कला परंपरा में सन्निहित होते हैं। जितनी अधिक जीवंत हमारी प्रथाएं, रीति रिवाज, संस्कार, वाचिक परंपरा और कला परंपरा होगी, उतनी ही अधिक उस समूह की संस्कृति सचेत, वैभवशाली और समय सापेक्ष होगी। जब जब समाज रूढ़ियों को ढोने वाले मात्र ढांचे में शेष रहे, उनकी संस्कृतियां ईंट पत्थरों में दफन होती चली गईं। संसार की सुसभ्य उन्नत संस्कृतियां रूढ़ होकर खाक में मिल गईं, परंतु लोक संस्कृति की धारा निरंतर उसी वेग के साथ बहती रही, क्योंकि लोक में संस्कृति के वे अमर तत्व समष्टिगत रूप से जीवन के केंद्र में समाहित होते हैं। लोक संस्कृति नगरीय संस्कृति से नितांत भिन्न है, जो लिखित न होकर मौखिक परंपराओं पर अधिक निर्भर है। इसीलिए यह चिरंतन तथा शाश्वत है तथा कालजयी है। यह एक प्रकार से मौखिक सांस्कृतिक परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होती रहती है। लोक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी देवी देवता, धार्मिक विधि विधान अथवा अनुष्ठान, विश्वास, ज्ञान, कला, साहित्य, कहावतें, मुहावरे, लोक गाथाएँ, नाटक आदि आते हैं, जिनका स्रोत प्रत्यक्ष रूप से कोई धर्म ग्रंथ या कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। लोक संस्कृति को मात्र स्थानीय अथवा सीमित क्षेत्र व्यापी ही नहीं माना जा सकता, बल्कि उसका क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। लोक संस्कृति से संबंधित कुछ देवी देवता तो राष्ट्रव्यापी हैं, जैसे नाग देवता और शीतला माता की पूजा संपूर्ण भारतवर्ष में जनता द्वारा की जाती है। इसके अलग अलग नाम और पूजा पद्धति प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो सकती है। लोक में कोई व्यक्ति, समाज और देश बिना संस्कृति के संभव नहीं है। घर, परिवार, समाज, गांव, जीवन उपयोगी वस्तुएं, धर्म, दर्शन, लोक परलोक तक की रचना लोक संस्कृति की परिधि से निकली है। यह सत्य है कि लोक संस्कृति का स्वरूप हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह अनंत है। यह घटघट वासी है, सौरभ की तरह प्रत्येक सुहृदय को सुवासित करती है। किसी भी राष्ट्र की अस्मिता, उसकी पहचान का कसौटी उसकी लोक सांस्कृतिक चेतना है। अतः मैं आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश के नवयुवक लोक संस्कृति के संवर्धन हेतु प्राणपण से जुट जाएंगे और काल के गाल में जाती हुई संस्कृति की रक्षा अवश्य करेंगे। लोक संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का अनिवार्य कर्तव्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धर्म भी है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you very much, Shri Kunwar Manvendra Singh ji. Thank you very much for your opening address in this important session. And now it's time when we confer the Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the ideal youth MLA honor in this fourth session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy. And the first awardee of this session is Shri Sudhanshu Shekharji, Honorable Member of Legislative Assembly of Bihar. I request the dignitaries to kindly felicitate Shri Sudhanshu Shekharji, the Honorable Member of Legislative Assembly of Bihar.
big round of applause, my friends. The Adarsh Yuva Vidhayak Samman, the Ideal Youth MLA Honor for Best Outstanding Performance in Development Work and Promotion of Parliamentary Democracy being conferred upon Shri Sudhanshu Shekhar ji. मैं यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ जितने भी युवा छात्र पहुँचे हैं मैं उन सबको अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और मैं अपने आप को एक बिहार से, जहाँ मधुबनी जिला से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेरा दूसरा टर्म मैं एमएलए बना हूँ। जनता दल यू हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे आज महाराष्ट्र इतने बड़े शहर में मुझे एक बिहार से यहाँ आकर मुझे सम्मान किया गया। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much. And the next awardee of Adarsh Yuva Vidhayak Samman in this session is Shri Suresh Garia ji, the Honorable Member of Legislative Assembly of Uttarakhand. Please put your hands together and give a big round of applause to Shri Suresh Garia ji, the Adarsh Yuva Vidhayak Samman awardee, Ideal Youth MLA Honor for Best Outstanding Performance in Development Work and Promotion of Parliamentary Democracy. A big round of applause, my friends, for Shri Suresh Garia ji. देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश से मैं आता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश के देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और अपनी विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आज के शुभ अवसर पर जहाँ राष्ट्रीय आदर्श युवा विधायक का सम्मान पुणे के इस ऐतिहासिक स्थल पर हमारे बहुत ही विद्वान मंच पर उपस्थित राहुल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों को विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि का प्रदेश है और वहां पर जिस तरीके की कठिनाई है उसके बावजूद भी लगातार संघर्षों के साथ अविरल धारा से जहां गंगा यमुना का उद्गम स्थल हो और कठिन परिस्थितियों के बाद भी हम सब लोगों ने संघर्षों के बाद उत्तराखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्षों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं यहाँ आए हुए सभी भाई बहन छात्र छात्राओं को इस 13वें अधिवेशन में बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि जहां भारत के अलग अलग कोनों पर अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग वेशभूषा है, उसके बाद भी हमारा भारत देश का संविधान इतना बड़ा है कि सबको एक धारा पर और एक मुट्ठी पर लाके संसद भवन के नीचे लाकर सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ाने की सोच रखता हो। तो इसलिए आज के इस अधिवेशन में हम सब लोगों को लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पहले से भी प्रयास होते आए हैं, पर लेकिन अब और भी ज़्यादा प्रयास हम सब लोगों को करना है। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 का भारत विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित किया है, तो सबसे बड़ी आशा युवाओं से है। और मैं राहुल जी को विशेष बधाई शुभकामनाएं इसलिए भी दे रहा हूं कि पिछले 12-13 सालों से
जिस तरह से उन्होंने छात्रों को मोटिवेशन देकर राजनीति के अंदर एक विशाल परिवर्तन करने का काम किया है, तो उसी के रूप में हम सब लोग आगे बढ़े हैं और आगे के दिनों में 2047 तक विकसित भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे अग्रणी भूमिका हमारे युवा निभाने वाले हैं। तो उन सब लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं और अपने करात साहब को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much. I request everyone to kindly accept the chairs. And now, to take the proceedings further, I would like to invite on stage the officer on special duty of MIT World Peace University, Shri Sankalp Singhai ji. बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी और आदरणीय मंच और इस भारत देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आए हुए मेरे सारे युवा साथियों, आप सबका एक बार फिर से भारतीय छात्र संसद और राष्ट्रीय विधायक दल में स्वागत है। जोरदार तालियों से हमारे उन हजारों युवाओं को जो वर्चुअल मोड से देख रहे हैं उनका भी आप स्वागत कीजिए। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राहुल सर का जो एक अद्भुत इनिशिएटिव था राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का, उसके हमारे देश के लगभग 125 गेस्ट 125 एमएलएज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी आपके माध्यम से मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूँ। और जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था, लोक संस्कृति की शक्ति, 2 साल पहले राहुल सर ने एक अभियान चलाया था, ब्रेकिंग कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक मानसिकता से उभरो, हमें बाहर आना है, हमें भारत की बात करनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इंडिया से कोई घृणा करते हैं या नाम में क्या रखा है, मगर भारत अपने करीब लगता है। तो उस भारत की बात करने के लिए आज आपके बीच में आ रहे हैं श्री मनोज मुंशिर शुक्ला, जो उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिन्होंने सिनेमा साहित्य में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान रचे हैं। आप लोग जानते हैं कि गलियां, फिर मैं तुझे चाहूं और कौन तुझे जैसे रूमानी गीतों ने जहां आप नौजवानों में उन्हें लोकप्रिय किया, तो तेरी मिट्टी में मिलजामा ने रातों रात उन्हें भारत के हर सैनिक और देश प्रेमी की अंतरात्मा तक पहुंचा दिया। देश के सबसे बड़ी हिट फिल्म बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के गीत और संवाद लिखने वाले मनोज मुंशिर इंडियन आइडल पर अपनी दमदार मौजूदगी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत और विश्व के अनेक मंचों पर वे भारतीयता और राष्ट्रीयता की छाप छोड़ चुके हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित मनोज मुंशिर शुक्ला को दुनिया शब्दों का राजकुमार कहती है, लेकिन वे अपने आप को शब्दों योगी कहते हैं। मैं बहुत हृदय से उनका इस मंच पर स्वागत करता हूं कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मैं विनती करता हूं हमारी एवी टीम से एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से उनका जीवन और उनका परिचय आप सब तक पहुंचे। शुक्रिया। एक कहानी सुनाएं सर। सर्वश्रेष्ठ बोल बेस्ट लिरिक्स के लिए हिंदी फिल्म साइना के गीतकार श्री मनोज मुंशिर को रजत कमल। फॉर बेस्ट लिरिक्स फॉर मोटिवेशनल लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग टू डिपिक्ट द इनर स्ट्रेंथ ऑफ द नेशनल चैंपियन। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। मुझे आसमां बनना है, मैं एक बंदा क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है, मैं परिंदा क्यों बनूं। प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको, प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी हुई इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ मर सको। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। कौन तुझे यूं प्यार करेगा, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। 9 महीने जिसने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में, उसे कमरे में नहीं पलकों पे रखना मेरे दोस्त हमेशा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाएं तिरंगे पर जो वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जोरदार तालियों से स्वागत करें भारतीय छात्र संसद के इस 13वें संस्करण में। भारतीय छात्र संसद के इस 13वें संस्करण में मनोज मुंसिर शुक्ला का जोरदार तालियों से हम सब सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत के उस बेटे को जो भारत की बात कहता है, भारत के अंदाज में कहता है। ये मंच उनके सम्मान के लिए यहाँ पर है। उनका स्वागत सारे लोगों के माध्यम से मंच आदरणीय व्यासपीठ। विनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश। और जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, मनोज जी हमारे बीच में आ चुके हैं और बगैर किसी विलंब के भारत की गाथा, भारत की बात, भारत के अंदाज में आदरणीय मनोज मुंसिर शुक्ला जी, आपका स्वागत है भारतीय छात्र संसद के इस 13वें संस्करण में। शुक्रिया। बहुत 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 आभार संकल्प जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार बोल दे, आनी चाहिए आवाज आपकी तरफ से भी। अच्छा देखिए, आमतौर पे तो खैर मैं बोलता ही रहता हूँ रोज कहीं ना कहीं, लेकिन एक घबराहट मुझे आज है और मैं स्वीकार करता हूँ कि जिस मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी विराजमान हों और जो विभूतियां इस समय मंच पर मेरे सामने मौजूद हैं, मैं एक एक के बारे में बात करूंगा तो पूरा शो इनके बारे में बोलने में ही खत्म हो जाएगा। इतने महान लोग आज यहाँ इस मंच पर हैं। इनके सामने मेरा बोलना, मेरा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे बड़ों के सामने कोई बच्चा तुतलाए, बस इतना ही है। लेकिन मैंने सुना है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो इसी विश्वास के साथ मैं कुछ बोलने का साहस करूंगा।
लेकिन सबसे पहले ये जो आपने तारीफों भरी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। एक डिस्क्लेमर डालना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। मैं आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ हूं, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं चाहता तो था कि मैं सामने से बोलूं, जहां आप मेरे सामने मौजूद हूं, पर आज यही आदेश हुआ है कि मैं वहां से बोलूंगा, आप मेरे पीछे होंगे, तो मैं ये मानता हूं कि इसके लिए मुझे क्षमा किया जा चुका है। मैंने कहा एक डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी है, और वो डिस्क्लेमर ये है कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने वाले का, रचने वाले का, बोलने वाले का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में खड़े होके और 13वीं जो भारतीय छात्र संसद है उसमें बोल रहा हूं। लोक संस्कृति की शक्ति, इस विषय पे मुझे बोलना है। आपके फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, बहुत जमाने से इनके बारे में पढ़ता, सुनता, जानता आ रहा हूं। दर्शन की बड़ी इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हो गई। और एक अजीब सा संबंध है मेरा प्रोफेसर कराड़ से, जो कि शायद ये भी नहीं जानते। बड़े गर्व से ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और मैं भी पूरा जीवन बड़े गर्व से कहता रहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। प्रोफेसर कराड़ भी मिट्टी को मां मानते हैं, मैं भी मिट्टी को मां मानता हूं। इनका भी वही अनुरोध है जो मेरा है कि मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। MIT के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राहुल विश्वनाथ कराड़ एक यंग, डायनेमिक, नई सोच के व्यक्ति। और जब मैं नई सोच की बात करता हूं तो ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर हमेशा यह आक्षेप लगता रहा कि भाई राजनीति काजल की कोठरी है, यहां जाओगे तो दाग लगेगा ही, उस राजनीति को एक नए सिरे से, एक नए दर्शन से, एक नए नजरिए से देखना शुरू किया राहुल जी ने। ये इन्होंने हमें बताया कि नेतृत्व और नेतागिरी दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। अगर पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ अगर राजनेता मैदान में उतारे जाएं, संसद में भेजे जाएं, तो भारत का भविष्य कुछ और हो सकता है। ये राहुल जी की सोच है। राहुल जी की सोच के लिए मैं चाहता हूं भरपूर तालियां बजाई जाएं। इन्होंने इस देश में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का पहला प्रोग्राम शुरू किया, और मैंने सुना जो अभी कुछ दिनों पहले विधायक सम्मेलन हुआ, उसमें 2000 से भी अधिक विधायक शामिल हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं कुर्सियां देख रहा हूं, तो इतना बड़ा डोम है, ये बहुत बड़ा। जितना बड़ा प्रोफेसर कराड़ का व्यक्तित्व उतना ही बड़ा ये सभागार। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, जहां तक संभव हुआ आपने ये कुर्सियां भर दी हैं। बहुत बहुत आपको आभार। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी डॉक्टर साहब जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। और हैप्पी न्यू ईयर कहना भी जरूरी है। 2024 का शुभारंभ हो चुका है। 2024 आप सबके लिए मंगलमय हो। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर मानते हैं तो, और अगर मेरी तरह विक्रम संवत में विश्वास रखते हैं तो दुगनी बधाई हो। 2021 में प्रवेश, 81 में प्रवेश करने वाले हैं आप, 2081 में, सिर्फ 2 महीने बाद। हम पूरी दुनिया से 56 वर्ष आगे चल रहे हैं, 1-2 नहीं 56 साल। तालियां बजाइए विक्रम संवत के लिए, भारतीय कैलेंडर के लिए। और एक चीज मैं कहूंगा कि समय और कल्पना से आगे जो मेरा और आपका देश है भारत, एक बार मेरे साथ उसका जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका ये जयकारा आज दिगंत में सुनाई दे रहा है। उन पश्चिमी देशों के कानों तक भी बात पहुंची होगी जो विश्व इतिहास में हमारे अद्वितीय योगदान को बार 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 झुठलाते रहे। और वो लोग, वो बुद्धिजीवी जो भारत में रहकर भी हमसे पूछते रहे कि अरे व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यू हैव गिवन नथिंग। India's contribution in the world history is just a round, big, fat zero. Yes, sir, we accept. We humbly accept. कि विश्व के इतिहास में जो भारत का योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, it is a big, fat zero. लेकिन साहब, बात तो शून्य से ही शुरू हुई थी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। सच कह रहा हूं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। चैत्र मास की 9वीं तिथि को आज से 7,500 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की जो दशा और दिशा थी, उसकी स्थिति एकदम बारीकी से, एकदम डिटेलिंग में जाके लिख दी थी। ना तो टेलीस्कोप था, ना कोई यंत्र था, फिर भी लिख दिया था। और हजारों वर्षों बाद हमारे साइंस के पितामह, जिनको मैं कहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने तारामंडल सॉफ्टवेयर पे सिद्ध कर दिया कि जितनी गणनाएं महर्षि वाल्मीकि की थी एकदम सही थी, एकदम सच थी। वो कहते थे रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। और वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिस पर पश्चिम बहुत नाज करता है, उसकी भी जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारी दी हुई है। जानना चाहिए आपको, सप्ताह में 7 दिन होंगे और साल में 12 महीने होंगे। अंग्रेजी कैलेंडर को भी ये हमने बताया है। कॉपी किया गया हमें। अच्छा, कैसे कैसे कॉपी किया गया? बड़े मजे की बात है। कॉपी किया गया, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हमें हमारा ड्यू नहीं दिया गया। ये बात मुझे कभी कभी पीड़ा देती है। हमने कहा रविवार, अपने दिन को नाम दिया रवि। रवि यानी सूर्य, सूर्य यानी सन, वहां क्या हो गया? संडे। सीधे डायरेक्ट ट्रांसलेशन, हमारे रविवार का संडे। हमने कहा सोमवार, सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मून, मून यानी मूनडे, मूनडे यानी मंडे। लीजिए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। हमने कहा मैम शनिवार, शनि यानी सैटर्न, क्या हो गया शनिवार का? सैटरडे। और आज तो ज्यादा ही गौरव हो रहा है मुझे खुलासा करते हुए, क्योंकि मैं उस भारतीय छात्र संसद में बोल रहा हूं जिसने कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने के लिए विक्रम संवत का कैलेंडर छाप दिया था। मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं आज। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ये जो नासा वाले अपने वीडियोस दिखाते हैं, हम सब ने देखे हैं। स्पेस सूट पहन के जीरो ग्रेविटी में फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, अपनी पीठ ठोकते हैं वीडियोस दिखा के। शाबाश, अच्छी बात है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर भारत के गणितज्ञों ने 1 दशमलव नहीं दिया होता तो चंद्रमा पे जाना तो दूर, धरती और चंद्रमा के बीच जो दूरी है उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे आप। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। और फिर भी पीड़ा किस बात की है कि वो हमारा भारत, वो हमारा महान देश जिसके पीछे संसार चला। कुछ बुद्धिजीवी हमारे कानों में आके फूंक के चले जाते हैं कि तुम तो कुछ थे ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ना तुम्हारे पास आर्ट, ना लिटरेचर, ना पोएट्री, कुछ नहीं था तुम्हारे पास। मुझे हंसी आती है। मैं सोचता हूं कि इस दुनिया का पहला काव्य, फर्स्ट लिटरेचर, फर्स्ट पोएट्री, आदि काव्य जिसे कहते हैं रामायण, वो हमने लिखा, हमारे यहां रचा गया। 5,000 साल पहले देखें आप, महाभारत हमारे यहां लिखी गई। 2000 साल पहले कालिदास ने मेघदूत हमारे यहां लिखा। नाद को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति, दुनिया की अकेली संस्कृति हम हैं।
संगीत का अकेला शास्त्र, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर ऑफ म्यूजिक, सामवेद, वो हमारे यहां रचा गया। और हमको संगीत नहीं आता भाई, हमको साहित्य नहीं आता, हम तो बड़े गए गुजरे हैं। फिर कहा जाता है कि अगर कुछ लुटेरे नहीं आ गए होते वो लाल वर्दी पहन के या घोड़े पे चढ़ के कहीं समरकंद और फरगाना से, तुम्हारे पास किले नहीं होते, महल नहीं होते, आर्किटेक्चर नहीं होता। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं भाई साहब, हमारे महाराज कृष्णदेव राय क्या चटाई बिछा के सोते थे? कहां रहते थे? महल नहीं था उनके पास। महाराज विक्रमादित्य कहां रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट कहते थे हम, चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहते थे? अहोम, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ये सब राजा महाराजा कहां रहते थे? आर्किटेक्चर नहीं था हमारे पास। कमाल है। लेकिन साथियों, ज्ञान के आगे ये जो मानसिक गुलामी है, ये मेरा दर्शन नहीं है, प्रोफेसर कराड़ का दर्शन है कि मानसिक गुलामी ज्ञान के आगे ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। आपको ज्ञान होना चाहिए अपनी जड़ों का, आपको पता होना चाहिए कि मैं और आप हैं कौन। आज मैं भारतीय छात्र संसद में खड़े होकर पूरी दुनिया को अपना और आपका परिचय देना चाहता हूं। आज्ञा है? अगर आज्ञा है तो मुझे तालियों से आज्ञा दें। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया अपनी वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। भारत वाले हैं हम। जिस दिन हम ये परिचय देना सीख गए कि हम भारत वाले हैं, सिर्फ ये एक परिचय, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं अपना परिचय ऐसे दिया जाता है कि भाई मैं आई एम ए नॉर्थ इंडियन, आई एम ए साउथ इंडियन। अपनी जड़ों पे गर्व होना चाहिए, लेकिन आप नॉर्थ इंडियन नहीं है, यू आर एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, फर्क है। यू आर एन इंडियन फ्रॉम साउथ, फर्क है। दिशा बाद में, देश पहले ही, हमेशा याद रखें। नेशन फर्स्ट। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम लें हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। ऐ भारत मां, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सहारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। गर्व से कहिए, मैं भारत से आता हूं, भारत से। और भारत, जितनी बार आप भारत कहते हैं, एक बात जान लें, भारत इंडिया नहीं है। ये ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन के चक्कर में मत पड़िए। इंडिया माउंट बेटन का था, भारत मोहनदास करमचंद गांधी का है। बड़ा फर्क है दोनों में, बड़ा अंतर है। और मैं और आप माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। जब आप कहें भारत, तो भारत का अर्थ है, एक बार आप जरूर जान लें भारत का अर्थ क्या है। एक से एक विद्वान यहां बैठे हुए हैं, मैंने फिर बोला, इनके सामने बोलना तुतलाने जैसा है, फिर भी मेरे छोटे भाई बहन भी यहां हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको कुछ बता के जाऊं। तो मैं इनको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जाने भारत का अर्थ क्या है। संस्कृत की भा धातु से भारत बनता है, और भा धातु संस्कृत में जहां भी प्रयुक्त होती है वो प्रकाश के अर्थों में प्रयुक्त होती है। मैं कुछ शब्द बताता हूं आपको। प्रभात, भा है, प्रभात यानी सवेरा। आभा, भा है, आभा यानी उजाला। भास्कर, भा है, सूर्य। भानु,
सूर्य, प्रभा, उजाला, भा है। तो जहां जहां भा आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। और रत यानी इंडल्ज्ड, लगा हुआ, जुटा हुआ, साधना रत, शिक्षा रत, तपस्या रत। तो जो प्रकाश की खोज में रत है वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की परंपरा से आते हैं हम। गर्व से कहिए, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। राष्ट्रगान याद आ गया होगा आपको। सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं इस राष्ट्रगान को गाने में। मैं फिल्मों में काम करता हूं साथियों, आपने देखा होगा कि कोई भी फिल्म किसी प्रेक्षागृह में, किसी थिएटर में रिलीज हो तो फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजता है। मैंने बदकिस्मती से ऐसी मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया है जहां कुछ लोग खड़े होकर इस पे एतराज करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, आप हमें जबरदस्ती राष्ट्रगान नहीं सुना सकते, आप हमें जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि 52 सेकंड के लिए खड़ा होना होगा। और ये वो लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे घंटे खड़े रहते हैं। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको हैं एतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। सियाचिन में -52 पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। बाड़मेर में +52 पे खड़े रहते हैं। जो -52 और +52 का तापमान हमारे लिए सह रहे हैं, हम उनके लिए 52 सेकेंड्स खड़े नहीं हो सकते। इतने गए गुजरे हैं हम, इस पे हमको ऑब्जेक्शन है, इस पे हमको एतराज है। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। वंदे मातरम मैंने ये भी देखा है। मैं राहुल जी से बहुत प्रभावित क्यों रहता हूं? क्योंकि राजनीति में संस्कार लाने की कोशिश की जा रही है। हमने ये बहुत मिस किया है। Somehow politics has been devoid of संस्कार फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, दूर रहा है। वंदे मातरम, बड़े बड़े नेता हमारी माइनॉरिटीज को बहकाते हैं, कहते हैं भैया वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि वंदे मातरम बोलना धर्म के खिलाफ है। किसको बहका रहे हैं आप? इस देश के उन देशभक्त मुसलमानों को जो दिन में 5 बार सजदा करते हैं तो इस मुल्क की मिट्टी चूमते हैं, उनको बहका रहे हैं आप, और वो बहकेंगे। और मेरे भाई, राष्ट्र धर्म से बड़ा कौन सा धर्म होता है? एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे, अशफाक उल्लाह खान मुसलमान नहीं थे, अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे, ये सब वंदे मातरम नहीं कहते थे। इस छल प्रपंच को हमारे मुसलमान भाई अच्छी तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि क्यों बहकाया जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति उनके लिए अब और नहीं चलेगी। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। आप सबको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के देवदूत स्वामी विवेकानंद याद आ गए होंगे। देखें आप, जब 1893 में भाषण दिया स्वामी जी ने, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी तो कह सकते थे। ऐसा ही बोला जाता है। स्वामी जी की प्रतिमा भी है यहां, मैं प्रणाम करता हूं स्वामी जी की प्रतिमा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी कह सकते थे 1893 में शिकागो में, लेकिन क्या कहा? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि स्त्री को आगे रखना, स्त्री को पुरुष से अधिक सम्मान देना, मान देना, इज्जत देना, ये हमारी परिपाटी है, ये हमारी परंपरा है। हम ही हैं जो कहते हैं देवी देवता, देवता देवी तो नहीं कहते। जो कहते हैं माता पिता, पिता माता तो नहीं कहते। हम कहते हैं राधा कृष्ण, हम कहते हैं सीताराम। हम स्त्री को हमेशा पुरुष से आगे रखते हैं। हमारे लिए शी का मतलब क्या होता है जानते हैं? शी का मतलब होता है सुपीरियर ही। ये हम मान चुके हैं कि वो एस का मतलब सुपीरियर है। शी इज सुपीरियर देन अस।
मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्य वाधिका रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महा अवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैया कन्हैया याद आ गए, और कितने प्यारे झूठ बोलते थे हमारे कन्हैया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ये तो जबरदस्ती मेरे मुख पे लपेट दिया, मां मैंने थोड़ी माखन खाया। कितने मीठे कितने सुंदर झूठ बोलते थे कन्हैया। और वो कन्हैया जिनके मुख में ब्रह्मांड देखता था, वो उसी मुखमंडल पर एक साधारण स्त्री के हाथों तमाचे खाते थे, क्योंकि वो स्त्री उनकी मां थी। ये है हमारे यहां मातृत्व का सम्मान। साथियों, मैं गौतम और महावीर के भारत से आता हूं, जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं, जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। हमारे श्री राम का वनवास पूरा होने वाला है। 22 जनवरी को राम लला विराजने वाले हैं, पधारने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तालियां बज रही हैं। मैं चाहता हूं एक बार जय श्री राम का आहंग भी हो जाए। बोलिए मेरे साथ, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि देखिए ठीक है, हम सब राम के आगे सर झुकाते हैं, राम तो सबके हैं, कण कण में हैं, हर किसी के हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई भाई। 7,500 वर्ष पुरानी कहानी हमें आज क्यों सुनाई जा रही है 2024 में, जब हम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं? मैं कहता हूं इसलिए तुम्हें यह कहानी सुननी जरूरी है कि 2024 में तुम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हो। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जीवन में मंगल ढूंढ लिया था। बहुत आगे निकल चुके हैं साथियों, मैं और आप बहुत आगे जा चुके हैं। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज सीखनी बाकी है कि हम इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं। और ये कौन सिखाएगा हमको? ये हमको भगवान श्री राम सिखाएंगे। अगर हमें अपने फुल पोटेंशियल को छूना है, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त होना है, तो हमारे पास श्री राम से बड़ा कोई मॉडल नहीं है और राम कथा से बढ़ के कोई फॉर्मूला नहीं है। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूं। आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसने रामायण नहीं पढ़ी। आप लोग घोल के पिया हुआ है अपने रामायण को, लेकिन मैं एक रिकैप देता हूं। जानिए कि राम कौन है और क्यों हम उनके आगे आस्था से सर झुकाए रहते हैं। हमारा धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हम बाइबल पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, राम में हम सब विश्वास रखते हैं। क्यों रखते हैं? कौन है राम? राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर इस संसार के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा अनुज आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें खोल के हमेशा के लिए यहीं बगल में सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है। महात्मा गांधी राम राज्य का स्वप्न देखते थे। हमारे संविधान में श्री राम का चित्र अंकित है। राम वो राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई लंका, जो दुनिया का सबसे स्वर्णिम सबसे वैभवशाली राज्य था, उसको ठोकर मार दी क्योंकि मातृभूमि बुला रही थी, अयोध्या बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण ये सोने की लंका मेरे मन को भाती नहीं, मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि मां और मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। सृष्टि के कण कण में राम है साथियों, सृष्टि के कण कण में, सिर्फ भारत में नहीं।
अगर आप ट्रैवलर हैं, मेरी तरह आपको भी शौक है दुनिया देखने का, तो आपने देखा होगा इस विश्व का सबसे बड़ा जो इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, वहां भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष मानते हैं। बाली में, जो बाली द्वीप है उनका आइलैंड, बाली में साल के 30 दिन 1 महीने ऐसी अद्भुत रामलीला होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। थाईलैंड बगल में है, थाईलैंड गए होंगे आप। थाईलैंड की जो राजधानी है उसे अयोध्या कहते हैं, दूसरा नाम अयोध्या भी है, और वहां के राजा को रामा कहते हैं। रामा द 4th, रामा द 5th, रामा द 6th, इस वक्त रामा द 10th का राज चल रहा है वहां। कभी आप थाई एयरवेज पे फ्लाई करें, मैंने फ्लाई किया है, मैंने देखा है, तो प्लेन की जो सीट्स हैं उन पे रामकथा की छवियां, रामकथा के चित्र अंकित हैं। मलेशिया एक और इस्लामिक देश, मलेशिया में जो नेवी चीफ होता है वहां का, नेवी का प्रमुख, उसको लक्ष्मण कहा जाता है। साथियों, राजनैतिक आजादी, राजनैतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता शामिल नहीं हो जाती। कुछ कम रह जाता है। 15 अगस्त 1947 हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, सम्मान से सर झुक जाता है, मेरी जबान भारी हो जाती है जब मैं इस तारीख के बारे में सोचता हूं, मेरी आत्मा भर आती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को शुभारंभ हुआ था स्वतंत्रता का। मैं समझता हूं 22 जनवरी 2024 को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और आज जब मुझे यहां बुलाया गया, मैं प्रोफेसर कराड़ से बात कर रहा था, मुझे सानिध्य मिला, इनका 10 मिनट इनके साथ बैठने को मिला। इतनी भारत भक्ति मैंने देखी और एक पीड़ा भी देखी। एक पीड़ा जो मैंने महसूस की, पता नहीं 10 मिनट में मैं क्या महसूस कर सकता हूं, पर मैंने ये देखा कि इस बात की वेदना जरूर रहती है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ कम रह जाता है और हम पे इल्जाम लगते रहते हैं, हम पे आरोप लगते रहते हैं। ये कॉलोनियल पावर्स, इन्होंने हमेशा हम पे आरोप लगाया, हमको छोटा दिखाने के लिए कि अरे भाई तुम में तो बहुत कमियां हैं, तुम हिंदुस्तानी, द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यू नो नथिंग, बहुत पिछड़े हो, बैकवर्ड हो, तुमने तो स्त्रियों पर कितने अत्याचार किए, सती प्रथा के दोषी हो तुम। अच्छा, सती प्रथा के दोषी हैं हम? अभी मैं रामायण की बात कर रहा हूं। महाराज दशरथ का जब देहांत हुआ तो 3 रानियां थी उनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों में से कौन था जो जलती हुई चिता में कूद गया? क्या आपने कभी कोई कहानी पढ़ी कि तीनों में से कोई रानी सती हुई? सुना कि नहीं सुना आपने? नहीं था ऐसा ना कुछ। महाभारत में तो लाखों चिताएं जल गई थी। एक किस्सा आपको नहीं मिलता जब किसी स्त्री ने अपने आप को जिंदा दहन कर लिया हो चिता में। सती प्रथा साथियों हमारा चुनाव नहीं, हमारी व्यवस्था थी, हमारी मजबूरी थी। जब उज्बेकिस्तान और समरकंद से आए हुए लुटेरे हमारी माओं को खींचकर अपने हरम की ओर ले जाने लगे तो क्या करती हमारी वो माएं, हमारी वो वीरांगनाएं जिनके शरीर को कभी सूर्य ने भी निर्वस्त्र नहीं देखा था। असूर्य पश्या, आप सब जानते हैं ये शब्द वेदों में इस्तेमाल किया गया है, पुराणों में लिखा गया है। असूर्य पश्या यानी जिनके शरीर को कभी सूर्य ने भी न देखा हो। क्या करती वो? महारानी पद्मिनी ने अपने आप को जलती हुई चिताओं के हवाले कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया। महारानी रूपमती, विष पी लिया महारानी रूपमती ने, लेकिन अधम खान की अपवित्र छाया अपने बदन पर नहीं पड़ने दी। और हमें बार बार बताया जाता है कि तुम में तो 100 कमियां हैं। व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए हैं हम। अगर कभी हम मानस खोल लेते, कभी हम पुराण खोल लेते, तो शायद ये जो गलत नॉलेज, गलत ज्ञान ने हमारी रीढ़ की हड्डी झुका दी है, ये ना हो पाता, ये खत्म हो जाता। हम समझ पाते कि हम बटे हुए नहीं हैं, हम कटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं। ये कांटे से नहीं कटते, ये बांटे से नहीं बटते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या? हमें क्या बांटोगे, हमें क्या काटोगे? हम समावेशी संस्कृति में विश्वास करते हैं। वी आर इंक्लूसिव बाय डिजाइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं। सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के आंगन में खड़ा हूं। आज पूरी दुनिया को हिंदुत्व की परिभाषा देके जा रहा हूं। याद कर लीजिए, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम।
हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई गैर नहीं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। साथियों, महर्षि अरविंद, हम सब ने महर्षि अरविंद को पढ़ा होगा। कुछ दिनों पहले मैं उनकी एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था, मैंने एक बड़ा अलार्मिंग स्टेटमेंट देखा। मैं डर गया, झकझोर दिया मुझे उस बात ने। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि जो देश, जो राष्ट्र 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उसकी संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। सिर्फ 3 पीढ़ियां। और अलार्मिंग क्यों है जानते हैं? क्योंकि मैं और आप तीसरी पीढ़ी है। अगर हम अब नहीं जागे तो भारतीयता की लाश उठाने के लिए 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे। साथियों, हम अपने पूर्वजों के पराक्रम से दूर हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम बप्पा रावल के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई, ये आपकी तालियां छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हैं, बाजीराव बल्लाळ के लिए हैं, अशफाक उल्लाह खान के लिए हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन, कहां कोई लेकिन हमारी तरह है। कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक, हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साथियों, हमने अपनी महानता को कभी क्लेम ही नहीं किया। जो हमारा था उस पर कभी हक ही नहीं जताया। जो जीता वही सिकंदर, ये जयकारे, ये नारे लगाते रहे हम। मैसेडोनिया का वो लुटेरा जिसको हमारे भारत के वीरों ने हरा के पराजित करके वापस भेजा था। इतिहास दोबारा पढ़ेंगे, नए जाविये से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। बताइए आप, हमने ये तो बहुत बार सुना कि सिकंदर ने वसीयत की थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर दफना देना ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर खाली हाथ गया। लेकिन हमें किसी ने यह नहीं बताया कि उन हाथों को खाली किसने किया था। उन हाथों को खाली हमने किया था, मां भारती के बेटे बेटियों ने किया था। लेकिन एक बात के लिए मैं सिकंदर की तारीफ करूंगा कि अपने जिस ज्ञान का मोल कभी हमने नहीं लगाया वो सिकंदर ने लगा लिया था। जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो उसकी सेना में एक बुजुर्ग था। उसने कहा, सिकंदर तुम भारत से वापस लौट रहे हो, खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, बड़ी अद्भुत जगह है, यहां से कुछ लेके जाओ। सिकंदर ने कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो हाथी घोड़े पे हीरे जवाहरात लदे हुए हैं, और क्या लेके जाऊं, यहां से सब तो लूट लिया।
उस बुजुर्ग ने कहा, अगर भारतवर्ष से ये कंकड़ पत्थर लेके गए तो क्या लेके गए? ये तो ज्ञान की भूमि है, दर्शन की भूमि है, यहां से ज्ञान लेके जाओ, दर्शन लेके जाओ। सिकंदर ने कहा, अच्छा, पता करवाया। उस वक्त का एक बहुत बड़ा तपस्वी, एक योगी था, दंडनीस, जिसको ग्रीक हिस्टोरियन डायोजनीस लिखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो डायोजनीस लिखते हैं। दंडनीस के पास सिकंदर जा पहुंचा। दंडनीस एक नदी के किनारे निर्वस्त्र लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। सिकंदर ने कहा, उठो, मैं विश्व का सबसे बड़ा सम्राट सिकंदर तुम्हें आदेश देता हूं कि उठो और मेरे साथ चलो और बदले में जो चाहिए मांग लो, जो भी चाहिए। देयर इज नथिंग अंडर द सन व्हिच आई कैन नॉट ग्रांट यू। दंडनीस जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके मार के। सिकंदर ने देखा ये हंस क्यों रहा है। बोला, अच्छा, मैं समझ सकता हूं, अगर किसी के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट आ जाए और बोले जो चाहिए मांग लो, तो वो हमारे खुशी के पागल हो जाएगा। तुम भी खुशी से पागल हो गए हो। दंडनीस ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि तू अपने आप को सम्राट कह रहा है और मैंने तुझसे बड़ा भिखारी अपने जीवन में नहीं देखा। सिकंदर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। दंडनीस ने कहा, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, मेरी बात समझो। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमको बहुत कुछ और चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बता, भिखारी कौन और सम्राट कौन? और फिर भी सिकंदर, अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो बड़ी देर से तूने मेरी धूप रोक रखी है, जरा किनारे हट जा, मेरी धूप मुझ तक आने दे, मुझे मेरी धूप लौटा दे, बस इतना दे दे। और इसके बावजूद आप देखें, एक निहत्थे निशस्त्र तपस्वी ने भारतवर्ष के सिकंदर को हरा दिया। इसके बावजूद हम क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। मुहावरे बदलने होंगे मुझे और आपको। हमारा मुहावरा क्या होना चाहिए? जो जीता वही बाजीराव बलाड़, जो जीता वही तानाजी मालसुरे, जो जीता वही महाराणा प्रताप, जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज। जो जीता वही रानी लक्ष्मीबाई। मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद जब आप इस सभागार से उठेंगे तो आज के बाद कभी जो जीता वही सिकंदर नहीं बोलेंगे। मैं सच कह रहा हूं, क्या मैं सच समझ रहा हूं? अगर सच है तो हाथ उठा के बताएं मुझे। लगभग सभी हाथ उठ गए, जो हाथ उठे नहीं शायद उन तक मेरी बात नहीं पहुंची। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आखिरी के 3-4 मिनट और है मेरे पास, और मैं सोच रहा हूं कि ये 3-4 मिनट मैं अपने नौजवान साथियों से बात कर लूं। मैंने आपसे ये बोला कि हमने अपने पराक्रम को क्लेम नहीं किया, हमने अपनी हिस्ट्री को क्लेम नहीं किया, हमने अपने इन्वेंशंस को भी क्लेम नहीं किया। ये पश्चिम वाले हमें आविष्कार दिखा दिखा के अपने नए नए मुंह चढ़ाते रहे और हम देखते रहे। लेकिन अब हम अपने मुंह चढ़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, फैक्ट चेक करेंगे। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहां। बिजली की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फैराडे, आवाज आ रही है, माइकल फैराडे। गैस बलून, गैस का गुब्बारा किसने खोजा था? जोसेफ मिशेल और जैक्स। बैटरी किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर वोल्टा। हम सब ने पढ़ा है। सारे जवाब गलत हैं साथियों। इन तीनों के आविष्कारक थे अगस्त ऋषि, महर्षि अगस्त। जंगलों में तपस्या करते थे। शास्त्र पढ़िएगा, एक एक बात, एक एक डिटेल आपको मिल जाएगा। और कोई भी मेरी बात ये सोच के मत मान लीजिएगा कि भाई मनोज मुंतशिर ने कहा है तो मान लो सही कहता होगा। बिल्कुल नहीं। घर लौट के जाइएगा, अपना शोध, अपना रिसर्च खुद कीजिएगा और फिर मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी टैग करके बताइएगा कि सर आपने सही कहा था। ये तीनों चीजें महर्षि अगस्त्य ने खोजी थी। अच्छा, एरोप्लेन की बात बहुत होती है। एरोप्लेन किसने खोजा? राइट ब्रदर्स। कब खोजा? 1903 में। 6500 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें आज के एरोप्लेन का डिजाइन लिख दिया था, कॉकपिट की फंक्शनैलिटी लिख दी थी, पैसेंजर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, स्पेस शटल्स का डिजाइन बाकायदा डिटेल के साथ बता दिया था, एक एक ब्यौरा लिख दिया था। न्यूटन से 500 साल पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक किताब में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उसका लॉ लिख दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स 500 साल पहले हमने खोज ली थी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं इस बात से कि देर से ही सही हमारी राष्ट्रीय चेतना जगी है। और इसी जागी हुई राष्ट्रीय चेतना के बल पर, आप जैसे नौजवान साथियों के बल पर, हम
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम भारतवासियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पर घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। और हमारी रफ्तार तो देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। अरे भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्नि पुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम किसानों की संतानें, झोपड़ों के चिराग, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गया तो क्या हुआ? अभी यहां 140 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आकाश तक चमचमाएंगे। 280 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। और हमें क्या रोक के दिखाओगे? हमारी माएं अग्निपुत्र पैदा करती हैं। हमारी माएं हमें दूध से पहले देशभक्ति पिलाती हैं। हमारी माएं हमें वीरों की कथाएं सुना के बड़ी करती हैं। और इसीलिए इस देश में कैप्टन मनोज पांडे, अनुज नायर, विक्रम बत्रा जैसे बेटे हर दिन पैदा होते रहते हैं। मुझे मेरा और आपका वो शेरशाह याद आता है, दिल मांगे मोर। हम 23 साल की उम्र में रंग दे बसंती गा के फांसी पे झूल जाते हैं, और 25 साल में दिल मांगे मोर याद रहता है और जान प्यारी है ये भूल जाते हैं। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मैं कारगिल युद्ध में बलिदान हुए कई बलिदानियों के परिवारों से जुड़ा रहा हूं। मुझे बेटे जैसा स्नेह देती हैं वो माएं, और मैंने कहानियां सुनी हैं उनकी कि जब ये बेटे कारगिल की चोटियों पर जा रहे होते हैं तो इनके पास एक किट होती है, जिस किट को लेकर इन्हें ऊपर चढ़ना होता है। उस किट में अक्सर सारा सामान रखने के बाद 6x6 की एक जगह खाली रह जाती है। 6x6 इंच कितना होगा? इतना, लगभग इतना। ये 6x6 इंच की जगह के लिए इनको मशवरा दिया जाता है कि सुनो, इसमें पानी की एक बोतल रख लो। ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पी के कितने दिन जियोगे? मर जाओगे। एक बोतल पानी रख लो, जगह तो खाली है। और हमारे ये बेटे, हमारे ये रणबांकुरे, ये एक नजर पानी की बोतल की तरफ देखते हैं, दूसरी नजर एक 20 गोलियों की मैगजीन बगल में रखी होती है उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं हाँ बात तो सही है, हो सकता है कि पानी न मिलने से मैं मर जाऊं, लेकिन यह भी तो सही है कि अगर ये 20 गोलियां रख ली तो 20 दुश्मनों को मार भी तो गिराऊंगा। उनके कैलकुलेशन में पानी की बोतल फिट नहीं होती, 20 गोलियों की मैगजीन फिट हो जाती है। साथियों, यह है जांबाजी। और फिर मैंने टेलीविजन पे बहस होते हुए देखा है। कारगिल युद्ध के बाद मैं कुछ शोज देखता था,
मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना, देयर इज नथिंग वेरी नोबल अबाउट दिस। ठीक है, अगर कोई सिपाही सीने पे गोली खा रहा है तो ही इज गेटिंग पेड फॉर इट। रियली ही इज गेटिंग पेड फॉर इट? 25,000 की सैलरी के लिए कोई अपने सीने पे गोली खाता है? आप खाएंगे साहब? दुनिया में 2 काम हैं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद यहां बैठे हुए हैं मेरे सामने। दुनिया में 2 काम है साथियों जो कोई पैसों के लिए नहीं करता। पैसे के लिए कोई सिपाही नहीं बनता और पैसे के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता। ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए किए जाते हैं, पैसों के लिए नहीं। और हमारे देश के सिपाही को अगर कोई लालच होता है तो सिर्फ इतना सा लालच होता है कि भाई जब कभी कोई लिस्ट बने उन लोगों की जिन्होंने मां भारती से टूट के प्यार किया, टूट के स्नेह किया, तो उस लिस्ट में एक नाम मेरा भी आ जाए। इतना ही लालच है कि जब कभी मैं तिरंगा ओढ़ के आऊं तो मेरे तिरंगे पे भारत देश की मिट्टी छिड़क दी जाए। इतना सा लालच है। अगर ये लालच है तो ये लालच है। मुझे एक रोज हवाओं में तेरी खोना है, चांद सूरज नहीं बस धूल तेरी होना है। सांस जब तक है जीऊं तेरे लिए जाने वतन, फिर तेरी गोद में सर रख के मुझे सोना है। आखिरी मेरी निगाहों का नजारा है तू, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है। यही वो जज्बा था साथियों जिसने मेरी साधारण सी लेखनी से वो गीत लिखवा लिया जिसे इस देश का सिपाही आज जनगण मन और वंदे मातरम के बाद अपने होठों पर सजाए हुए फिरता है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि वो पंक्तियां मैं लिख पाया कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों आज बहुत सारी बातें मैंने आपकी, लेकिन मैं समझता हूं कि ह्यूमन माइंड की बैंडविड्थ बहुत ज़रा सी होती है, बहुत कुछ आप भूल जाएंगे। आज आप मेरा बोला हुआ सब कुछ भूल जाएं, लेकिन बस इतना याद रखें कि उस जीवन का कोई मोल नहीं है जो हमसे शुरू होकर हम पर ही समाप्त हो जाए। हम जीवन की गणना दिनों, महीनों और वर्षों में नहीं, शताब्दियों में करते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों में जीना है, उनके पैरों से चलना है, उनकी वाणी से बोलना है, और ये तभी होगा जब हम उनकी सोच में जीवित रहें, एक ऐसा अतीत छोड़ जाएं जिस पर भविष्य गर्व करे। हम शमशान की कलश भर भस्म बनकर हवा में खो जाएंगे या महाकाव्य बनकर चिरंजीव हो जाएंगे, ये हमें आज और इसी पल निश्चित करना होगा। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत 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 आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। राहुल जी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं चाहता हूं हम सब शांति से राहुल जी को सुने। Thank you. My dear friends, I think it was such a wonderful dialogue, the heart-to-heart connection, and all the students, I must say that the most respected MLAs are sitting here. There are 120 lawmakers. They are sitting, an honorable chairman of Uttar Pradesh Assembly. He's also here. And all the respected MLAs and everybody. I just want to make a mention, my dear friends, because मनोज जी का मैं पिछले 2-4 साल से बहुत मन से सब आपका देखता हूँ और you are the wonderful gift for this country. I must say that this is, let us give a big round of applause once again to Manoj Muntashir ji. The message which we have been promoting in this MIT World Peace University, our beloved founder, myself and all our teachers, vice chancellors, last almost 4 years we are one campaign that let us change the name of India to Bharat. Yes. And ऐसे काफी सारे, even सभी MLAs को मेरी इसके ऊपर मेरी जो सोच है, तो इवन इंडिपेंडेंस डे, द कॉलोनियल माइंडसेट की बात, बहुत दिनों से कॉलोनियल माइंडसेट ब्रेकिंग के बारे में भी हमने एक कैलेंडर बनाया था बीच में, जिसका जिक्र आपने किया अभी। पूरे भारत में उसके बहुत सारे कॉपीज हमने भेजे। उसमें ये भी हमने लिखा था कि इंडिपेंडेंस वर्ड में भी मुझे कहीं ना कहीं गुलामी की बू आती है। 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस दिया, मुंतशिर जी को मैंने इंडिपेंडेंस दिया, तो मैं समझता हूँ ब्रिटिशर्स कौन थे हमें इंडिपेंडेंस देने वाले? वी आर सेल्फ लिबरेटेड नेशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, माय डियर फ्रेंड्स। बड़ी छोटी छोटी बातों में सिकंदर की बात उन्होंने बोली, तो हमारे वो पता नहीं इतने सालों से वो हमारे मन में और ये सब बातें भरी हुई है। मेरा नाम राहुल मेरे पिताजी ने दिया, आपका नाम आपके पिताजी ने आपको दिया होगा, आपके माताजी ने दिया होगा। मुझे लगता है अपना देश का नाम भारत, इसका गाँव में प्रचार प्रसार होता, भारत बोलते हैं, बट मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड इसके बारे में एक छवि और भारत का जो, तो कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि इससे ऐसा क्या होने वाला है भारत करके, तो मुझे लगता है इससे एक ऊर्जा तैयार होती। आई एम प्राउड टू बी व्हाट यू नो माय विलेज, माय फादर, माय फैमिली, एंड इट क्रिएट्स एनर्जी इन ऑल ऑफ अस, माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज द सेम व्हाट फीलिंग्स एंड द इमोशंस व्हाट मनोज जी हैज जस्ट शेयर्ड हिज माइंड सो ब्यूटिफुली। सो यू ऑल नीड टू थिंक। सो भारतीय छात्र संसद का ये मकसद है कि आप सब लोग राजनीति में जाए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए। राजनेता चोर है, पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट है, ये मानना गलत है। ये पिछले 15 साल से 20 साल से हम बोल रहे हैं कि अच्छे लोगों ने राजनीति से डरो नहीं, अच्छे लोगों ने। तो इसलिए ये सभी ये क्वालिफाइड, आपने भारत के उच्च शिक्षित विधायक यहाँ पे लिखने का ये फोटो क्यों लगाए, ये भी सवाल आपके मन में आना चाहिए मनोज जी। तो ये भावना से भारतीय छात्र संसद, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला संस्थान, और अभी सभी विधानसभाओं में विधानसभा स्पीकर्स के साथ बहुत सारी चर्चा सभी MLAs की हमारी विस्तृत हुई कि हर विधानसभा में ऐसे लीडरशिप के स्कूल कैसे हो सकते हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे तरीके से राजनीति में लाने का उनका प्रयास हो सके। ऐसे बहुत सारे उपक्रम है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू दिस कंट्री एंड वी ऑल लव यू, यू आर फैंटास्टिक एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। यू आर अमेजिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। लेट अस गिव वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर आपका। आज एक मणिकांचन योग था, आज एक मणिकांचन योग था, और वो वक्त आ गया है जब हम आज के मुख्य वक्ता का सम्मान करें। आदरणीय विश्वनाथ कराड़ सर, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा काउंसिल के चेयरमैन आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह भी हैं, और हम सब के भारतीय छात्र संसद के प्रमुख श्री राहुल कराड़ जी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जो बात आज यहाँ पे कही गई इस सत्र के माध्यम से कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो भारत वही है जिसका जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, और इस सत्र का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था कि हम उस भारत को जाने जिससे हम थोड़े परिचित नहीं हैं। यही उद्देश्य था भारतीय छात्र संसद के इस उद्देश्य का। कार्यक्रम जारी रहेगा मित्रों। इस संवाद के बाद भी हमारे जो युवा स्पीकर हैं, जो छात्र विद्यार्थी हैं, छात्र नेता हैं हमारे, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं श्री गौतम बापट जी को। Thank you very much.
And now it's time when I invite and request the student speakers of this session to address the gathering. First and foremost, I would like to invite Anshuman Patil from Maharashtra to address this gathering. हॅलो. ज्ञानदेव रचला पाया तुकोबा झाला सकळस. Ladies and gentlemen, if we want to know about the power of the Bharatiya Lok Sanskriti, we need not look beyond the teachings of Jagat Guru Sant Tukaram Maharaj and Sant Jnaneshwar Maharaj. परोपकार हेच पुण्य आणि परपीडा हे पाप. असाध्य ते साध्य करिता सायास, कारण तुका म्हणे अभ्यास. Ladies and gentlemen, this is exactly the type of ancient wisdom which made Bharat Vishwaguru at one time and can make us Sone ki chidiya once again. Mark Twain once said, India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Scientists such as Albert Einstein, Werner Heisenberg, J. Robert Oppenheimer have all credited Indian philosophical texts with helping them to understand quantum physics and mathematics. But what is this Bharatiya Lok Sanskriti? Ladies and gentlemen, my grandmother often told me, जब हम खुद बनाई हुई रोटी खुद खाते हैं, उसे कहते हैं प्रकृति. जब हम दूसरों की रोटी छीन के खाते हैं, उसे कहते हैं विकृति. पर जब हम खुद बनाई हुई रोटी खुद की भूख भूलकर गरीबों में बांटते हैं, उसे कहते हैं संस्कृति. और ये जो संस्कृति है दोस्तों, ये भारतीय लोक संस्कृति है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. But if there was one man who understood the value and the power of the Bharatiya Lok Sanskriti, it was the Yashavanta, Kirtivanta, Samarthyavanta, Varadvanta, Punyavanta, Nitivanta, Zanta Raja, Chhatrapati Shivaji Maharaj, who established a Swarajya or a Rayatesa Rajya of the people, by the people, for the people, at a time when our Lok Sanskriti was being severely persecuted. His son, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, fought till his last breath to defend his Lok Sanskriti, and that is why we say today, देश धर्म पे मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था. The real power of the Bharatiya Lok Sanskriti, ladies and gentlemen, is its power to unite. And before I leave, I will give you an example of this. जे कविता मी आता बोलणार आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, तर माझ्याबरोबर जोराने बोला. इंद्रजिमी जंब पर बाडब सुवंब पर रावण स दंब पर रघुकुल राज है, पौन बारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सरस बाहु पर राम दुजराज है, दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कंडजिनी कंस पर त्योमलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है. जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी. जाता जाता मी एवढंच सांगेल, नमस्कार, मी अंशुमन सारंग पाटील आणि हे आहे लोक संस्कृतीची शक्ती. मी मराठ्यांच्या राजधानी म्हणजे सातारचा आहे आणि ते विद्येच्या माहेरघरी म्हणजे पुण्यात माझ्या तुकोबरायांबद्दल, माझ्या शिवछत्रपतींबद्दल, माझ्या संस्कृतीबद्दल मला बोलायची संधी मिळाली, याबद्दल मी तुमचा लाख लाख आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. Thank you very much, Anshuman. I request Shri Rahul V. Karat sir to kindly felicitate and congratulate Anshuman Patil. And at the same time, I would like to request Diya Tomar from Madhya Pradesh to get ready to address the gathering. A big round of applause for Anshuman Patil. Heartiest congratulations, Anshuman. And I now request Diya Tomar to kindly address the gathering.
भारतीय संस्कृति की उज्जवलता आज भी जिंदा है। वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के तंत्र में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, कर्ण के कवच के दान में, लक्ष्मीबाई पन्नाबाई पद्मिनी के सम्मान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर, स्वामी और गौतम बुद्ध में, मध्य प्रदेश की जनजातियों में, उड़ीसा के आदिवासियों में, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य में और महाराष्ट्र की नरवारी के रौब में। भारतीय संस्कृति की अखंडता, विशालता, विज्ञानता, सूक्ष्मता, सरलता और उज्जवलता को देखते हुए इलामा इकबाल ने लिखा कि यूनाने मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं दिया तोमर किसी राज्य नहीं अपितु संपूर्ण भारत का नेतृत्व करते हुए लोक संस्कृति का महत्व इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। एक लोकोक्ति में कहा गया है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां हर कोस में व्यक्ति की मति, समुदाय की संस्कृति और भौगोलिक प्रवृत्ति बदल जाती है। जहां भाषाई विविधता से साहित्य का चिंतन बदल जाता है तो व्यवहारिक विविधता से व्यक्ति का स्वभाव। ये किसी और देश की कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमारी विविधता हमारी ताकत है, क्योंकि भारत न केवल मंगल में जीवन अपितु जीवन में भी मंगल ढूंढने की कवायद रखता है। संस्कृत भाषा के चारों वेद, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, पाली भाषा के जाटक, त्रिपिटक, बौद्ध वांग में, तमिल भाषा का संगम वांग में, तुलसी रामायण, कबीर के दोहे, बिहू और कुट्टेम जैसे लोक नाट्य और साहित्य हमारी संस्कृति को प्रज्वलित करते हैं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सभी दर्शन जनमानस को प्रतिबिंबित करते हैं। मित्रों, ये तो सर्वविदित है कि किस प्रकार एक कुशल नेतृत्व तथा हम सभी देशवासियों की चेतना ने योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व भारत की तरफ देख रहा है। 2010 से 2021 के बीच योगा की लोकप्रियता 64.5% तक बढ़ी। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं कि हम हमारी संस्कृति को सजोए रखें। तो चलिए मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकरी की। चलिए मिलकर बांटते हैं गुजरात के तांगलिया शॉल और गोवा के खाजे को। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं गुजरात की तांगलिया शॉल और गोवा का खाजा। आज इस सदन की चेतना को देखते हुए मुझे मेरे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। और अंत में पश्चिम संस्कृति के अंधानुकरण में भी हम हमारी भारतीय संस्कृति का दीपक जलाए रखेंगे। आह्वान करती हूं कि ये पवन परम अनुकूल देख, ये पवन परम अनुकूल देख, ये देख बुझा का बल अथा, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं रोकेगा आकर कौन रहा। डगमग धरणी सा दमित तेज सागर, पारे सा उठे ढोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दुल बोल, भारत माँ के शार्दुल बोल। जय हिंद, जय मां भारती। Heartiest congratulations, Diya. That was a magnificent energy. A big round of applause for Diya Tomar from Madhya Pradesh for a beautiful address. Next, I would like to request Jnaneshwari Virole from Maharashtra to be ready to address the gathering. वारकरी संप्रदायाचा वसा लाभलेल्या या पुण्यनगरीमध्ये मी जिजाऊंची लेक ज्ञानेश्वरी वर्षा निलेशराव विरोळे पाटील आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आज हम जिस भूमि में खड़े हैं, हमारा भारत देश, जिसकी लोक संस्कृति विश्व के सभी संस्कृतियों की जननी मानी जाती है, जहाँ नालंदा से लेकर आज तक के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों तक, छोटे छोटे पाठशालाओं से लेकर बड़े बड़े गुरुकुलों तक, यही सभ्यता, यही संस्कृति ने आदिकाल से अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। कहीं किसी गांव में अगर छोटा सा भी उत्सव हो तो सारी रीति रिवाजों के साथ लोग जुड़ते हैं, बनते हैं और एक हो जाते हैं, अपने सारे गम भुलाकर आनंद प्राप्त करते हैं। हम भी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई पोवाड़ा या महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य सुन ले तो उसमें हम हमारी पहचान पाते हैं।
हम चाहे कितना भी आगे बढ़ ले, कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी पूर्वजों की धरोहर है, उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इस भारतीय छात्र संसद के मंच से मैं कहना चाहती हूँ कि लेट्स ब्रेक द कॉलोनियल माइंडसेट। पाश्चात्यों की बातें भले ही हमें कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी लुभानी लगे, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें यही लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरी धरोहर है। हमारी संस्कृति सदियों से हमारी पहचान है। हमने चाहे दुनिया भर के ड्रामे थिएटर देख लिए हो, लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य को हम भूले नहीं है। चाहे कितना भी रॉक और पॉप सुन लिया हो, लेकिन सुकून की नींद तो शास्त्रीय संगीत से ही आती है। चाहे कितना भी सालसा और हिप हॉप कर लिया हो, लेकिन भांगड़ा, लावनी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जैसी उसमें बात कहा। इस साल G20 में भी सारे विश्व को बुलाकर हमने हमारे विश्वगुरु होने का उनको एहसास दिलाया है, लेकिन बात समझाई तो वसुदैव कुटुंबकम से ही, जो हमारी धरोहर है। बस इतना ही याद रखना है कि चाहे तेरी पतंग जितनी भी ऊंची उड़ी हो, चाहे तेरी पतंग जितनी भी ऊंची उड़ी हो, बस इतना ध्यान रहे उसकी डोर इस मिट्टी से ही जुड़ी हो, उसकी डोर इस मिट्टी से ही जुड़ी हो। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारे अस्थियों का अगर कोई कान लगाकर सुने तो उसे एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। तो आइए इस पारंपरिक विरासत के साथ एक नए आधुनिक सशक्त भारत के निर्माण की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद, जय माँ भारती, सर्वे जन सुखिनम भवन्तु। Thank you very much, Jnaneshwari. Thank you very much for your wonderful words and motivating the youth. Next, I would like to request to kindly come up stage Shraddha Shirodkar, all the way from Goa. भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। नमस्कार, मैं श्रद्धा शिरोडकर गोवा से आज आपके समक्ष अपने कुछ विचार साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। अनेकता में एकता को समेटे हुए इंद्रधनुष के विविध रंगों से सजा यह देश भारत, जहाँ कदम कदम पर रूप, रंग, वेश, भाषा, बोली, पहनावा, संस्कृति बदलती जाती है। और यही तो खासियत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जिसकी आत्मा उसकी संस्कृति में बसी है। इसीलिए तो लोग और संस्कृति ही इसकी वास्तविक शक्ति मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्व चली आ रही इन परंपराओं का अपना एक विशेष स्थान है। महाराष्ट्र की इस भूमि में ओवी, पोवाड़ा, भारुड जैसे लोक संगीत हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा सुनाते हैं। राजस्थान जैसे मरुस्थल में भी रंग भरते कलबेलिया के लोक कलाकार, जो सपनों को भी अपने जीवन का एक अभिन्न भाग बनाकर लोगों को प्रकृति के साथ जोड़े रखने का कार्य करते हैं। भारत पर अंग्रेजों ने 100 वर्ष तक शासन किया था, परंतु 450 साल की पुर्तगाली गुलामी सहने वाले गोवा राज्य में घोड़े मोरनी लोक नृत्य इस बात का प्रतीक है कि कैसे 70 गांव के राणे परिवार ने एक समय पुर्तगालियों को भी धूल चटाई थी। माता भूमि पुत्रो हम पृथव्याः, बिहार की मधुबनी और आंध्र की कलमकारी चित्रकारियों में वर्णित महाभारत रामायण के पात्रों के साथ ही निसर्ग के वृक्ष, पुष्प आदि की चित्रकारियां हमें मानव और प्रकृति का गहरा संबंध दर्शाती है। और जब बात प्रकृति की आती है तो विष्णु शर्मा की दुनिया को कोई कैसे भूल सकता है, न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंचतंत्र की, जो हर भारतीय बच्चे के जीवन का एक अभिन्न अंग रह चुका है। और आज के इस औद्योगिकरण जगत में जहां मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निसर्ग का नाश किए जा रहा है, वही यह लोक संस्कृति हर मनुष्य को इस बात का एहसास दिलाती है कि उसका भी इस प्रकृति
और पर्यावरण के प्रति कोई कर्तव्य है। यही लोक संस्कृति हमारे सुनहरे इतिहास का वो आईना है जो हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाती है जिनके कारण हमारा भारत देश आजादी का नया सूरज देख पाया। विकास का अर्थ अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को भूल जाना नहीं होता, अपितु अपनी जड़ों को सींचकर एक नए भविष्य का निर्माण करना ही विकास कहलाता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि गीता का सार है भारत, गीता का सार है भारत, रामायण का भार है भारत, धर्म कर्म का मंत्र है भारत, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है भारत, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है भारत। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Shraddha. Heartiest congratulations to you, and I request Rahul Karat sir to kindly felicitate. My friends, let me remind you that tomorrow we are going to celebrate the 161st birth anniversary of Swami Vivekananda ji, and on this occasion, like every year, right from 9 a.m. in the morning till 5 p.m. on the occasion of National Youth Day, we are going to organize, rather we have organized, the blood donation camp in the Ganga building. So I would like to request all of you to participate in huge numbers in this blood donation camp on the occasion of National Youth Day, that is 161st birth anniversary of Swami Vivekananda ji, tomorrow from 9 a.m. to 4 p.m. And now I would like to request Arya Basri from Maharashtra to address the gathering. महाराष्ट्र कहते ही याद आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, और कहते थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार चलती है ना, तब औरतों के घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। ऐसे गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करके मैं आर्या सचिन बासरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर, आधी हाताला चटके तवा मिळते भाकर। यह प्रस्तुत रचना महाराष्ट्र की प्रख्यात कवयित्री बहिणाबाई जी की है। इस काव्य प्रकार को ओवी कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ओवी से दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है। हमारी भारतीय लोक कलाएं ऐसे ही सकारात्मकता से भरपूर है। भारतीय लोक संस्कृति बहुत ही विशाल और अनोखी है। हर राज्य, हर क्षेत्र में इसकी अलग अलग पहचान होती है। यहाँ के भोजन, संगीत, नृत्य, कला, शिल्पकला की विविधता अनगिनत लोगों के संगठनात्मक सामाजिक जीवन को दर्शाती है। ये भारतीय लोक संस्कृति किसी एक धर्म, जाति या समुदाय की न होकर सर्वसमावेशक है। दोस्तों, ये वही भारत है जहां संत कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और एक तरफ साने गुरुजी है जो कहते हैं, खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। और यही हमारे भारत के सौंदर्यता को दर्शाती है। दोस्तों, ये वही भारत है जहां लोक का अभिप्राय सर्वसामान्य जनता से होता है और उसकी कोई व्यक्तिगत पहचान न होकर एक सामूहिक पहचान होती है। और यही हमारी मिलीजुली संस्कृति लोक संस्कृति कहलाती है। इस संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम उस भारत में भी रहते हैं जहां विदेशी कलाकारों को सुनना कूल और भारतीय कलाकारों को सुनना ओल्ड स्कूल माना जा रहा है। भारतीय लोक संस्कृति भारत का अभिन्न अंग है और हम उससे ऐसे मुंह मोड़ नहीं सकते। संस्कृति हमें हमारे जड़ों से जोड़ते हैं और वही जड़ें आज तोड़ी जा रही है। यह हमारे स्वर्णिम इतिहास की देन है और हम उसे ऐसे जाया नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे कठिन समय में दोस्तों, इस लोक संस्कृति नामक रथ का सारथी बनके उसको संभालने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। इसलिए उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हमारा लक्ष्य यह है कि राजनीतिक कार्यों में लोक संस्कृति के संवाद, समृद्धि, संगठन के लिए विविध योजनाएं लाई जाए। दोस्तों, हम सब भारतवासी इस भारत की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम इस मिट्टी के पूजक हैं और ये लोक संस्कृति इस मिट्टी की परंपरा है। और इस परंपरा को बरकरार रखना ये न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारा कर्तव्य है। मैं शब्दों को विराम देने से पहले मैं आपको भरत व्यास जी की कुछ पंक्तियां जरूर सुनाना चाहूंगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी है तब से न जब तुम थे आए, ये माटी रहेगी न जब तुम रहोगे। इस माटी के नीचे दबी है कथाएं। ये खुद ही कहेगी रे तुम क्या कहोगे, ये खुद ही कहेगी रे तुम क्या कहोगे। जमीन आसमान
रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Heartiest congratulations, Arya. That was really motivating and amazing speech. Heartiest congratulations to Anshuman, Diya, Jnaneshwari, Shraddha and Arya, all of you. My friends, let me remind you that tomorrow at 8:30 a.m. in the morning, we are going to assemble at this very hall for the 5th session of day 3, that is Data, Diversity and Democracy, Caste Census Dilemma. Shri Girish Gautamji, Dr. Sanjay Kumarji, Dr. Ajoy Kumarji and Professor Manoj Kumar Jhaji is going to participate in this important session, followed by session 6, as we land on moon, are women safe on land? Is going to be the session which we are going to experience tomorrow. Tessie Thomasji, Advocate Abha Singhji, Fauzia Khanji and Rupa Ganguliji are the important eminent personalities who are going to participate in this important session, which would be followed by the valedictory session of 13th Bharatiya Chhatra Sansad, in which Dr. Jaiprakash Narayanji, Swami Dr. Gyanvatsalji and many more personalities are going to participate. And now, on this stage, we are going to experience an important cultural presentation. My friends, I would like to wholeheartedly invite you tomorrow also, because it is going to be a very, very important day, and Shivraj Singh Chauhan ji is also going to be there with us tomorrow. But my friends, it is important that we all wholeheartedly participate, because all these tall personalities are coming here to deliberate and give direction to our future. With this, I would like to thank all the personalities present here on this stage. Thank you very much. We will now get ready for a cultural performance on this stage. My friends, I would like to remind you that after this, my friends, let me remind you that after this session and this cultural event, we are going to participate in the Youth to Youth Connect activity, which is going to happen like yesterday in the same hall where you were. Yes, I would like to request my technical team. My friends, let me quickly remind you that in the valedictory session, as the chief guest of the valedictory session, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, the former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh and Honorable Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, is going to be there with us. I'm sure that you all are equally excited to listen to the views of Shivraj Singh Chauhan ji, the chief guest of tomorrow's valedictory session. Next slide, please. My friends, after this cultural performance, you all are invited to join us for the Youth to Youth Connect activity in the Maitrey building, which is right behind the stage. I'm sure all of you have participated yesterday. We would like to request you to continue your participation today as well. I request the stage team to kindly clear the stage and make it ready for the cultural program. My friends, in tomorrow's valedictory ceremony, there are many tall personalities like the former IAS and President of Lok Satta Movement, Dr. Jaiprakash Narayanji, motivational speaker and social reformer, His Holiness Swami Dr. Gyanvatsal Das ji, and the former Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, Honorable Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, the chief guest of tomorrow's valedictory session, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. I request all of you to be seated as we are getting ready for the cultural program.
देवा श्री गणेश 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यत् सकल परस्मै नारायणाति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे चलत् प्रवाह पावितस्थले गले बलं बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डं निनादवर्णमर्वय चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव 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 चलाटवीगलज्जलत् प्रवाह पावितस्थले गले बलं बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डं निनादवर्णमर्वय चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव 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 नदीच्या पल्ल्याड आईचा डोंगर डोंगर माथाला देवीचं मंदिर घालू जागर जागर डोंगर माथाला घालू जागर जागर डोंगर माथाला घेर लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रंगून डोंगर येऊन फड देवी दार घेर लाटी भंडार दूर लोटून दे अंधार आलो दुरून रंगून डोंगर येऊन फड देवी दार नदीच्या पाण्यावर अभिन फुलत झनझराच्या तालावर काळी झुलत नाद आला ग जीवाच्या घुंगराला आला ग जीवाच्या
भक्तीचा सागर